Club, Moin Khan Academy, where we have action-packed day lined up for you all. We have not one, not two, but three matches live here on Geo Super from the one and only UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. The first match we have lined up for you all is going to be an exciting one to be played between DHA Dabanggs and Johar Jawans. We are all set for the toss. We have both the captains here with us. Leading DHA Dabanggs is the captain Yasir Mushtaq. He's a happy man nowadays. He has all his team with him, along with Johar Jawans and their captain Syed, Nasir, and the match referee for today's match, Naeem Ahmed. I believe Yasir Mushtaq is flipping the coin. Yasir, Bismillah kare. Here it goes. KTPL. KTPL is the call. KTPL. It's KTPL. KTPL it is. यासिर मुश्ताक, अब बहुत दूर फेंक दिया आपने. सही है, आजकल आपके हर शॉट दूर जा रहे हैं. सही नासिर, क्या करने का फैसला किया? बैटिंग ही करेंगे. बैटिंग करेंगे. अब टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, पेस सेविंग के लिए आपने खेलना है, बट होता है कभी कभार ऐसा भी. बिल्कुल, ये क्रिकेट है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ गेम, और इंशाल्लाह आज भी मेहनत करेंगे, बाकी अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है. कोई तब्दीलियाँ की हैं आज के मैच के लिए? तब्दीली, एक बैट्समैन इन किया है और बॉलर जो है 4 से खेलने हैं, ऑलराउंडर बाहर कर दिया. ठीक, सही है नासिर. बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. यासिर मुश्ताक से पिछले मैच में भी हमने बात की थी, बड़े हैप्पी हैं आजकल बिकॉज इनकी सारी टीम स्ट्रेंथ अब वापस आ गई. यासिर, अब आई एम श्योर आप टूर्नामेंट जीतने की तरफ देख रहे हैं. शुरू में अगर थोड़ा सा डाउट था भी, तो अब बिल्कुल डाउट नहीं रहा है आपकी टीम को लेके. नहीं दानिश भाई, पहले भी हैप्पी था मैं और अब भी ज़्यादा हैप्पी हूँ थोड़ा सा, मगर कोशिश यही थी पहले भी अगर लड़के जो थे उनसे टूर्नामेंट विन करें, और अब इंशाल्लाह ज़्यादा एफर्ट करेंगे कि टूर्नामेंट विन करें, अच्छा क्रिकेट को खेल के यहाँ पे टूर्नामेंट को विन करें. सेम टीम खिला रहे हैं, कोई तब्दीलियाँ हैं? जी, लास्ट वाली सेम टीम थी. Right. Yasir Mushtaq, best of luck for the match. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Johar Jawans have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
DHS Sports Club, Moin Khan Academy, where we have action-packed day lined up for you all. We have not one, not two, but three matches live here on Jio Super from the one and only UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. The first match we have lined up for you all is going to be an exciting one to be played between DHS Dabanggs and Johar Jawans. We are all set for the toss. We have both the captains here with us. Leading DHS Dabanggs is the captain Yasir Mushtaq. He's a happy man nowadays. He has all his team with him, along with Johar Jawans and their captain Syed, Nasir, and the match referee for today's match, Naeem Ahmed. I believe Yasir Mushtaq is flipping the coin. Yasir, Bismillah kare. Here it goes. KTPL. KTPL is the call. It's KTPL. KTPL it is. Yasir Mushtaq, अब बहुत दूर फेंक दिया आपने. सही है. आजकल आपके हर शॉट दूर जा रहे हैं. सही नासिर, क्या करने का फैसला किया? बैटिंग ही करेंगे. बैटिंग करेंगे. अब टूर्नामेंट में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है. फेस सेविंग के लिए आपने खेलना है, बट होता है कभी कभार ऐसा भी. बिल्कुल, ये क्रिकेट है. इट्स अ पार्ट्स ऑफ गेम और इंशाल्लाह आज भी मेहनत करेंगे. बाकी अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है. कोई तब्दीलियां की हैं आज के मैच के लिए? तब्दीली, एक बैट्समैन इन किया है और बॉलर जो है 4 से खेलने हैं, ऑलराउंडर बाहर कर दिया. ठीक, सही है नासिर. बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. यासिर मुश्ताक से पिछले मैच में भी हमने बात की थी. बड़े हैप्पी हैं आजकल बिकॉज इनकी सारी टीम स्ट्रेंथ अब वापस आ गई. यासिर, अब आई एम श्योर आप टूर्नामेंट जीतने की तरफ देख रहे हैं. शुरू में अगर थोड़ा सा डाउट था भी, तो अब बिल्कुल डाउट नहीं रहा है आपकी टीम को लेके. नहीं दानिश भाई, पहले भी हैप्पी था मैं और अब भी ज़्यादा हैप्पी हूँ थोड़ा सा. मगर कोशिश यही थी पहले भी अगर लड़के जो थे उनसे टूर्नामेंट विन करें, और अब इंशाल्लाह ज़्यादा एफर्ट करेंगे कि टूर्नामेंट विन करें, अच्छा क्रिकेट को खेल के यहाँ पे टूर्नामेंट को विन करें. सेम टीम खिला रहे हैं, कोई तब्दीलियां हैं? जी, लास्ट वाली सेम टीम थी. Right. Yasir Mushtaq, best of luck for the match. Thank you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Johar Jawans have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you across the globe. Johar Jawans are taking on DHA Dabanggs for match 26. We are here from DHA Sports Club Moin Khan Cricket Academy live on Jio Super. Wherever you are across the globe, you can watch the live action for today's important match. Two umpires making their way to the center. White new cherries in their hands. Rao Wasim and Siptan Raza are going to be the umpires for today's first match, and surprisingly it's going to be 3 matches for today's date. The other 13 nights that we have had double headers, but it's the only scheduled day which is going to have 3 matches to be played. And for the first time, we are going to play under the sunshine. It will be amazing to see how things go.
DHA Dabanggs players are making their way to the middle, and the news from the center is that Johar Jawans captain has won the toss and elected to bat first. With me is Kainat Imtiaz. Good afternoon, Kainat. Good afternoon for a change, and we are all set for yet another interesting game of cricket between DHA Dabanggs, one of the best side of the tournament, and Johar Jawans, yet to register another win. So let's see what happens. There you see the two sides. Johar Jawans with their captain Syed Nasir, Basit lefty, Farman, Saddam Shah, Umar, Sherry, Moise, Shah Raza, Arif Shah, Akil Shah, Arif Balki, and DHA Dabanggs will be consisted of Yasir Mushtaq, the captain obviously, Zair Ahmed, Abdul Qadir Abbasi, Mustafa Hanif, Quram Shehzad, Muhammad Umar, Arslan Jamshid, Umar Shehzad, Muhammad Waqas Shir, Salman Khan, and Muhammad Haznain. So it's going to be very interesting to see how boys go under the sunshine. For the first time in this competition, we are going to see them playing under the sunshine. Syed Nasir, the captain in the center for Johar Jawans, opening the innings. He's been in very good form of late. And with him is his left-handed partner, Basit, lefty. So what do you make of this winning the toss? Abdul Qadir Abbasi will be the bowler to start the proceedings. What do you make of this decision, winning the toss and opting to bat first under the sunshine? It will be interesting to see them bat. I think they might be thinking of giving them a good target, as the pitch is all flat and there's not going to be any sort of dew. Will be much easier to play it and bat on today's pitch. Let's play with the wide down the leg side. Hurrying in line, loosener to start the proceedings for Qadir. Will be interesting to see Qadir as well, as in the last game he was quite impressive with the ball. The new player for DHA Dabanggs. Tell you what, he's only new here in this competition, but he's got plenty of experience. Nicely bowled and well played in the end for a single down to long on. Well, I see a little bit of distraction because of the shade on the pitch, and this might be helpful for few and not helpful for someone maybe. Maybe the batters are a little bit, will be, it can be a distraction when you're batting and you see your own shade on the crease. I wonder if our viewers will enjoy it or not. Nicely bowled in the block hole. Wide off stump, Yorker. That theory in the death overs, when you are to escape from the onslaught of the batters. There you see, Danish Abbasi, one of our colleagues, he's been doing it phenomenal. Danish Anish, our presenter, enjoying. Full toss, gets the punishment, and that will be the first one of the day from the left-hander's bat. Of course, the batters are being very aggressive, and that's what we expect from Johar Jawans. A juicy full toss for Johar Jawans, and it's almost a 6, I think. What do you reckon? It's a 6 or a 4? I don't think it's landed on the full. It's been given as a boundary. But first boundary, nevertheless, for the left-hander. Again, a good delivery outside the off-stump. A wide Yorker. Outside edge will earn him a single to the left-handed Basit and will bring captain on strike. Good, intelligent bowling. There you see them practicing outside the boundary. Well, we have started off a little slow. Johar Jawans, 4 deliveries already bowled and only 8 runs on the scoreboard.
Full toss this time. Played away down to mid-wicket. There is a protection. So it's only going to be one. Taking his time is Nasir, the captain, before he expands and tries his big lusty blows of him, which we all know. It's been a good start by the bowling side, I would say. Another good delivery to finish the over. Only should be one. It is one. So very good over by Abdul Qadir comes to an end. After first, Johar Jawans are 10 without loss of wicket. These are the standings at the moment. Malir Malangs leading the table with 10 points. Clifton Populars with 8 points, number 2. DHA Dabanggs, of course, in the middle, are playing at number 3 with 8 points. Gulshan Gors and North Nawabs have the same amount of points as well. Lyari Legends have 6. Karachi Knights just gained 2 points overnight, defeating Johar Jawans, which are yet to open their account in this table. Well, everybody seems to be fighting for the semi-final place, as we have so many teams. Those have only 8 points. Zahir Ahmed with the ball in his hands needs no introduction, vastly experienced, playing cricket for over 2 decades, tape ball cricket. Still fit enough and still pacey enough to test any batter in this tape ball fraternity. Swing and a miss outside the off stump. Going across the line was the left-hander. No connection whatsoever. Well, as you said, he has been bowling for almost 2 decades. It's more about the experience now that he can play with the batter's mind, and he knows where to pitch that ball. Takes all the time before he delivers his ball. Nicely bowled. Another wide yorker, low full toss. Toe end of the bat will give the batters a single. Always helpful when you have such an experienced bowler in your side. For all of the young players like Umar and Hasnain. And Qadir Kashmiri is also an experienced campaigner. So that's why it's always helpful, Kainat, when you have a luxury of such great players in your side. Of course it is. Is it allowed to take this much time in tape ball cricket? I mean, is there a specific time you need to bowl the over in? It has to be, actually, especially at this level. But the umpires are there to check it out. It takes a lot of time normally. This is his habit. Usually takes a lot of time before he bowls his next delivery. There must be something, because of course they need to finish the overs in a limited amount of time, and we don't have all day, because he actually takes a lot of time before he bowls the next delivery. This is his own way of doing it. Outside edge, regulation catch, another wicket to this great fast bowler, Zair Kalia. Yet again, draws the first blood. How many times we are going to witness this? This is what pressure does to you, and this is the pressure of the name that Zahir has in tape ball cricket. And again, yet another good catch by Yasir Mushtaq, as we have seen previously as well. Passed lefty went for 7 of 7 deliveries. 12 for 1, Johar Jawans. There you see Naseem Rajput, the gentleman on your screen. He's been very busy all day long throughout the course of this competition. This UBL Amin presents KTPL Season 3.
So left-hander replaces another left-hander. It's going to be Umar to take the strike against Zahir. Another good delivery, pacey delivery, firing it outside the off stump and slanting across the left-hander. Asking some questions, Zahir. See, if you look at the run-up, it's not too big, and he just gets the rhythm with 2 or 3 steps and just deliver. He has a very easy action, but when you see the pace, it's completely opposite. Very good point you made. He used to have a longer run-up with the start of his career, but in the last 4 or 5 years, he has shortened it, but still the pace hasn't dropped. Have a look at that. He has the pace, he has the experience, and it will be very tough to play against this fellow. 2 overs done, a wicket in that over, 12 for 1, Johar Jawans. Not a good looking scorecard for Johar Jawans after winning the toss and opting to bat first. Play and a miss. Good bowling. Qadr Kashmiri. Abdul Qadir continuing. Went for only 10 runs in his first over. This is the experience of DHA Dabanggs bowlers that they have. It will be very tough to cope with these boys later on as the tournament progresses, and we are just almost heading towards the semi-finals. Another good delivery. So it's going to be a threatening pace attack for the rest of the teams, Kainat. Well, definitely it is. I'm quite impressed by the bowling of Abdul Qadir and Zahir Kalia, I would say. Yeah, I mean, it's quite impressive to see some good pacers in tape ball cricket. And of course, tape ball cricket can offer a lot of good pace. Drilled hard this time, but it will be cut it off at long on. So a single added to the total. But this is not what tape ball is. Tape ball is not made of singles, I would tell you. People want to see those big sixes and boundaries. But when you have bowlers of this caliber, it's not that easy. And these boys are lacking a bit of confidence under pressure a touch, Johar Jawans. But they have nothing to lose, I would say, in this match. So they have to play out of their skills. Well, of course, they also have to perform individually because as we see individual scores, they are lacking that as well. And very good point you made, Kainat. Actually, in this sort of game, when you have not a lot to offer and when you have nothing left in the tournament for your side, then you have to think for your individual performances just to gain some confidence. Just get some rhythm back for yourself. End the tournament on a high note. This is what they should be thinking. And there won't be any extra pressure on them. But it's just the quality. We don't have to take anything away from the bowling credit. The bowling has been just amazing, impeccable. We don't have to take anything away from the bowlers. They've been bowling exceptionally well. Have a look at that. You can't do much of that length and line. Brilliant bowling. Especially if the ball is coming from a heighted bowler, it's always difficult to, adjust to that line and length of a heighted bowler. And yes, they will need to improvise. The straight shots might not work. They might have to have some scoop shots or reverse sweeps or, just time the ball somewhere down the ground. Swing and a miss. Another very good over completed by Abdul Qadir. It's 3 gone, 15 for 1. Johar Jawans winning the toss and opting to bat first.
There you see the overview scenes of Karachi. Always nice to be here in Karachi. Great work by our cameraman. That was just before the start of the play. Fantastic scenes, Kainat. Well, yes, beautiful DHA city and beautiful city of Karachi, lights, city of lights. Yes, indeed, it's quite beautiful, and we can see it's a beautiful day today. It's time to run Ashraf to join you in the comb box. Thanks a lot, FS Malik. 15 for 1 in 3 overs. It looks like the test match is still going on at Perth, although we already have had a day over there. Bowled him. He got baffled, although that was a full toss, but batsman looked in all sorts of trouble. It looked as if we didn't have any clue about that one. A lot of pressure on Johar Jawans players that they're missing the full tosses. Completely missed the line of the ball and was in no position to play that delivery. Syed Nasir went for 4, 15 for 2, Johar Jawans. Yeah, they have been looked very pedestrian, looked out of sorts throughout the event. The Johar Jawans. Doesn't matter, they already been eliminated, but one can finish the tournament on a high note. They should play out of their skin. They should play to entertain the crowd at least. But at the moment, they are in mire. They are struggling and their performance going bad to worse. Shah is the newcomer. He's a good, promising young tape ball cricketer. But let's see if he can perform well. Zahir Kalia has been bowling well ever since he joined the team. He was in Dubai earlier, played for Pakistan against India, did pretty well over there as well. They are getting a quick single. Had it been hit the stumps, that would have been bye-bye birdie for the batsman. Leg by is called. Good throw and a good backup by DHA Dabanggs. See, this is so important to have 2 backups because the ball can miss the first one, but still the second one can get it, and it's important. Good fielding by DHA Dabanggs. Yes, absolutely. They had 2 fielders. They were backing up. They were ready to back that throw up, and they did pretty well. You should have the good game awareness. It is very important for the fielders. Another full toss, but again batsman didn't middle that one at all. It looks as they struggling prodigiously here. They are not struggling at all. They are enjoying. Good to see them. Young supporters posing on the screen. Lot of spectators coming every day and every night here at DHA Sports Club, Moin Khan Academy. It's a beautiful evening here at DHA Sports Club, Moin Khan Academy, and I can even watch the ocean from our comm box because it's not a night game. It is almost a day game, leg by cold. And there you see Kainat getting up for the match. Will be played on 16th of this month before the final, the women game. I'm so excited about the game and tape ball being played amongst the girls. It's going to be an interesting contest. I would like everyone to come and support and see the game before the final. Another good delivery, no doubt about that. It will be great attraction for the ladies or the young girls. And I think it is a great step by the KTPL organization
And you working really hard for that, Kainath, of course. Well, everybody here is working hard to make that happen, and of course the league as well. The next in that we are expecting in next 6 months. So it's a great initiative, and we need more these kind of initiative. And I'm just right now so proud of the fact that I am a part of this event and organizing it. Down the leg side she goes. Wide called. Shadows have started to get lengthening here at DHA Sports Club Moin Khan Academy, as I was mentioning. Beautiful evening. And a lot of young kids having a good time out there. Someone are doing their exercise or practice. Full toss, but again batsman wasn't looked really ready for that one. He picked up a single though. Zahir Kalia has finished his second over, 22 for 2. 4 overs have been bowled. Fantastic view of DHA Sports Club Moin Khan Academy. Geo Supers team working really hard. We are going across the globe. More than 84 channels are telecasting our production throughout the world. KTPL Season 3 is going on with all its colors, and we are at the fag end of KTPL Season 3 now, because tomorrow will be the night where the semi-finals will be played, and then on 16th of this month final will be played. But right before the final we will have a match of women as well. Muhammad Umar has been brought on to the bowling attack, and umpire signaled the second power play where fielding captain can have 4 fielders outside the 30-yard string. Certain rules for the certain power plays. They're bowling a lot of full tosses, but batsmen are not ready to play any kind of strokes. It looked so far. That's why it is very important. A batsman should be concentrating on the ball rather than the name of the bowler. But it does happen at times if you know that Wasim Akram is bowling at you or bowling to you, you can take some pressure. But a good batsman always those who takes their eyes on the ball rather than the bowlers. Umar has also been bowling great in the past games. This is in the air, and this is over the top as well. One bounce into the deep extra covers boundary for 4. A rare one, but a much needed one. Well, a shot out of nowhere. And yes, it's much needed. They will have to attack these 2 last overs. A short pitch outside off stump and put it in the right area. And I would say they will need more and more of these kind of shots in these last 9 balls, because all they have is this in the first innings. Absolutely. They have to be picking up their sports, the batsmen, and playing their strokes. Edge that away, but it will give him a boundary, and he will take it gleefully. Well edged it, a thick edge. And third man was very close, actually. It's a leg slip standing there, a slip standing there. So it's easier for the ball to go towards the boundary from the backhands. Umar has
started to throw his bats, and he's getting results in his favor as well. 2 boundaries in a row. The second one wasn't the convincing one, but still got a boundary for that. Oh, good comeback. A very good pace. Good bounce, good carry through to the Yasir Mushtaq. It's getting difficult and difficult by the ball, and it's a very good pace, even though it was completely outside off stump and could have been a boundary again towards the cover region, but completely missed. The hand-eye coordination was a little bit slow, shown by Umar. Yeah, better reflexes were needed on that time around from the part of the batsman. He has pulled it. There is a man back at the mid-wicket boundary who came in, but ball dropped just in front of him, and couple of runs. This over at least giving them some runs. 5 overs have been completed now. 2 down for 33, the Johar Jawans. You can see the big light towers, the floodlights. They are switched off at the moment, and there you see the background of this ground. Lot of buildings, and then ocean is flowing, not too far away from the ground. Mustafa is going to bowl the final over of first innings, and he's going to bowl to Shah. Shah has taken 6 deliveries for just a couple of runs. He's absolutely on the slower side. Mustafa Hanif is warming up a little bit. He jumped like a jack in the box. This one is driven up towards the long off. They take one turn back for the second run out chance, and it is run out. He is run out by miles, I would say. A very slow running between the wickets. The players need to improve their fitness, and especially running between the wickets, so that they can, improve that, change those singles into doubles very easily. And it was 2 runs because the ball went towards the boundary. But unfortunately, because of the fitness, I think he got run out. Yes, and other thing, they ran the first run bit lazily. .34 for 3, with just 5 deliveries to be bowled. Farman is going out to bat. Wearing the shirt number 99 though. And this one is going and gone. This is one of his strengths. He struck that one well over mid-wicket, the Shah. A good shot by Shah. And again, the use of the wrist on this delivery. Coming onto the ball and just hitting it towards the cow corner region. He needs to hit 2 more boundaries. And he goes again. And goes well. He stood and delivered. What a magnificent shot. Where he was earlier. Well, it was only because of the pace that Kalia and Abdul Qadir and Umar had to offer. He was not able to have that all those powerful shots. This is a little bit of slow pace shown by the bowler, Mustafa. So yes, he's been affected so far. Yeah, Mustafa is coming in for a bit of stick here. Oh, he changed his pace. Bowled a slower one, and another run out is happened here. Another run out has happened, and Moise got to get back without playing any ball. Again, from the minute the ball was dead, he should have went for that run, because it was a run. It could be
because last deliveries and they're always run singles or doubles. That's very unfortunate for Moise because he didn't face any ball and went for a duck. Yes, they're not looking proactive. One got to be proactive, and when they go about the business, they got to be very active, energetic. Some agility or nimbleness should be shown, but they are looking as lethargic as anyone can, to me. Johar Jawan seems to be very low on confidence because I think they have taken all the pressure of the previous games and came on this one. Ari Balki, the new batter on strike. He has smashed that straight down the ground. Fielder jumped and blocked that one. Last ball is coming up of the innings. It will be interesting to see DH Dabanggs bat and see how much lead they can get in the next innings. This one is sprayed into the leg side. Man comes up from the mid-wicket boundary. Throw is very high one, but well backed up by the fielder. And couple of runs for the batting side. And it has taken them up to 49 for 4. And 6 overs are bowled now. Shah remained not out at 17. Arif at 1. Jawans couldn't quite bat well. And Zahir Kalia and Qadir bowled extremely well. They really made them work hard for the runs. Runs look hard to come by almost throughout their innings, and these are the highlights. Yasir Mushtaq taking a very good catch, and then Nasir getting bowled on a full toss. Zahir Kalia bowled beautifully well. That was an easy run out. Then we saw another run out. Shah 17, Omar 12, and nothing much to talk about. 49 for 4 they've got. Zahir picking up 2 wickets, other were wicketless. Second innings going to be started in a little while, and now I'm handing over the mic to Falak Sher and Farrukh Riaz. Thank you so much, Rana. Not a lot to talk about the batting there you see. Just a reminder, Geo Super production in collaboration with NetSat. Good afternoon, Farooq. Not a happy looking score in the first innings for Johar Jawans. They were under the pump. Good afternoon, Falak, and good afternoon, everyone, wherever you are. They are in a hurdle, and they must be talking about how to restrict DH Dabanggs side. Obviously, the fans must be very disappointed once again. The batting performance was below par, and they had to step up. Not much things are left for them. So they wanted to play freely. They wanted to score something substantial. But here comes the devastating pair from DH Dabanggs, Chora Vicky and Khurram Shahzad. So the 49 they got on the first 6 overs in the first innings. The chances to come back in a game are quite slim.
You're right, because if you see that pair coming to the middle in Chota Wiki and Khurram Shehzad, Khurram Chakwal as he's known for, it's going to be very, very tough ask for Johar Jawans to stop the run of the flow of the run at the start of the innings. Because these two guys, if they get going, they're going to be very dangerous. And we have seen him in the last quite a few games too. A couple of 50s to both of their names. Lovely bird view of the DH Academy, DH Sports Club Moin Khan Academy here in Karachi. The first ever day game of the entire competition. And today we have a triple header, so plenty of action set for today, Thursday, and we are inching towards the conclusion of the tournament, KTPL Season 3, and Wakashir Chora Vicky is opening the batting along with his another devastating partner, Khurram Shehzad, who is known as Khurram Chakwal. Everyone knows about it, and also he's known as King of Asia, very prominent figure in the table cricket. Farman, the left arm fast bowler, tall man, will start the proceedings. Yeah, it will be a huge responsibility. Farman, the bowler. Interestingly, the sunshine is exactly on the surface, right on the batting strip. The rest of the ground is quite covered. First ball. And there you go. First up, hit me and hit me. Does he do? Does Chota Wiki starts off with the big six. Loosna from Farman, first ball. Half tracker, and Chota Wiki loved it. The first ball, if you're facing as a batsman, what else do you want? An absolute half tracker, and he had ample amount of time to dispatch it and clear the boundary quite comfortably. 6 to start. Perfect one for DH Dabanggs. Full toss. Good comeback delivery. And that will bring Khurram on strike. The batsman disappointed, Johar Jawans batsman, and now it's up to the bowlers. So the morale obviously is not high, but they should step up. They should apply some skills and try hard to take wickets and keep both the batters quiet, because they have to play for the pride here, because every session, every over is quite important. Targeting the legs. No chance for the leg by there. Just a while ago, when we saw in the dugout, Mohammad Umar, the pace bowler from DH Dabanggs, didn't have to do the bowling in the first innings. Still was having the energy drink. Maybe he's looking for the fifer in the next innings. Another good delivery, targeting the boots of Khurram Shehzad, Yoka. That's good comeback after conceding a maximum. And that's a bird view from outside the stadium. Just a reminder, it's a Geo Super production in collaboration with NetSet. And they have been wonderful right from December 1st, because it's a long tournament, 16 days consecutive tournament. And overall production has been top class. Farman again. Another good delivery. This time he gets it away, and it will be a boundary down the leg side. Not the best of connection, but certainly he delivered outside the leg stump, asking to be hit. Just a fine tickle, and short fine leg wasn't wide enough to stop it. It turned out to be an easy boundary. So 6 and a boundary he has considered, and now set for the last ball of the over. Down the leg side this time, whipped away, and will be a boundary. So consecutive boundaries to finish off the first over by Khurram. After first, it's 15 without loss of wicket. Once again, leg Irish, but beautifully played by Khurram Chakwal.
wrist work from him, and the fielder was placed at mid-wicket. Wasn't quite quick enough, and it was timed beautifully. So they are just 34 away. They have 30 deliveries to be bowled, 30 legal balls. So the foundation is well set, well laid by Khurram Chakwal and Chora Vicky. As I talked about, Johar Jawans has nothing much left for them in the competition. They have to play for the pride, and still they should give 100%. Quite a few individual brilliance we saw from them, but as a unit, they haven't stepped up to threat any side. Well, it's always important for you, no matter you haven't go through the depth of this tournament, but still, if you finish things on a high note, it can give you a lot of morale. Will Saddam is sharing the new ball. Will he put the batsman in trouble? Chora Vicky is on strike. Didn't play in the last game, Saddam Shah. Now he has his turn. Good delivery, low full toss, straight to mid-off for no run. It was smashed really hard, straight to mid-off. And the gap is really wide between extra cover and mid-off. So anything, even not well-timed shot, can take the ball to the boundary through the gap. Length ball, wrong line to bowl to Waqas Sher. You're going to travel the journey all day and all night if you keep bowling him there. Well, he's going great guns, Chora Vicky. Length was offered, and he waited for it. He waited for a fraction of a second, as a well read by Chora Vicky and well dispatched. Second six, and a lot more to come now. Down the leg side, erring in line. Keeper has to do a little bit of work. Does well to stop it in the end, but they've taken a single. The length offered by Saddam was an absolute mouth-watering, and just as a result of wide and fumble by the keeper, Khurram Chakwal was desperate to get the strike, and he wants to make some serious connection somewhere around to take the ball over long on or mid-wicket. This is his area of strength. He's targeting that mid-wicket boundary, and he's got the connection this time. Khurram has his first six. That is why he was desperate to get the strike, and beautifully played. The second time he used his wrist and used it beautifully. Superbly timed. Didn't try to overhit, and the ball traveled a long way. Empty seats welcome the ball. Khurram Chakwal and Chora Vicky both are in really good form. Full toss, gets the flake. And my word, it's carried all the way. Would you believe? How about the timing? Exquisite. Khurram, you little beauty. Absolutely spot on with his timing. Khurram Chakwal once again. Low full toss. Just pure wrist work. He's loving it. Quite effortless. And he did it in style. Pure elegance from a veteran cricketer. Goes down the ground this time. Will be stopped at mid-off, but not before this ran for a single. Very good opportunity DH Dabanggs has now to complete 12 more runs, and after that take a lead, take a healthy lead to apply pressure, and they have a certain chance to win it and win it convincingly and increase their overall net run rate in the competition. Full toss, gets the outside edge. Oh my word, what was that fielder doing? That was as easy as they come. Down she goes in a split second. That was quite unbelievable, and a straightforward catch. Just for a second I thought the fielder reacted late. So it's a drop catch, 2 gone, 38 for none. My word, that should have been taken. As easy as they come. It's Nasir, the captain, who makes a mess of it. Syed Nasir, the skipper of Johar Jawans, must be very disappointed. And he reacted a little bit late and should have been caught easily. A number of sitters we have seen put down by the fielders in various positions.
Well, it's been the story of this competition so far. We have seen quite a few going down, but we have seen some blinders as well. Overnight, that catch was taken at the boundary was just incredible. Amazing bit of effort by Riaz, the fielder. Yes, towards the end of the game, he made he made a spectacular effort. It was an extraordinary one. The tag team effort came into play. A lot of things are going in the mind of Syed Nasir because he, as a captain, didn't deliver. His boys are struggling to get going, and overall they did not apply any pressure in any game. And he's dropped the catch. Now he's brought the spinner Shah, who has been quite interesting and effective as well. Experienced campaigner, slow bowler. Will be a little bit of tester for somebody like Waqas Sher, who is short in stature. But my word, he can hit this tight ball a long way. Waited for it and put that away intelligently over square leg for yet another maximum. Not the best of deliveries, but it's a sign of a good player. He waited. Extra loop, reduced pace, and he let the ball come towards him. Delivered on the base of leg stump. Man, beautifully played. Quite effortless. Supreme timing. Down the leg side, that should be a wide. Or has it touched something in the way through? I think it has. He has to be very cautious as far as providing the length is concerned. He can't bowl too full or too over pitch. He can't bowl half trackers. He has to bowl somewhere between. That's good delivery. That's good delivery. Waited for it, and it was always going away from him. In tape ball, we don't see players come down the track and get to the pitch of the ball. They wait for the ball to come towards them. Yeah, he's waited for it this time, and he's got it in the gap for a boundary. Nobody was there. Surprisingly, there was a big gap between mid-wicket and long on, and he has picked it perfectly, did Khurram. The previous one was a better one from Arif, but on that occasion it was just a fraction short, and Khurram Chakwal brought back off the back foot, dispatched it well. Catch was a cry, but perfectly placed. Khurram Chakwal. What a wonderful opening partnership it has been. They're exactly on 49. The scores are level. Oh, improvisation by Khurram Chakwal here to get themselves lead. It will be a boundary. Or is it stopped inside? It's been a very good chase by Nasir, the captain. Very good commitment. Good effort by Nasir. Not much space was offered, so he had to really generate some sort of power to get some momentum. In the end, the race was on. And Nasir, just a while ago, dropped the catch, showing commitment. Oh, it could be a boundary. I think his right feet was in contact with the boundary rope. Yeah, that could be a boundary. We'll have to recheck. Confirmation, it was a boundary by Khurram Chakwal. Very good improvisation. Good to see some innovation by the batters in tape ball. Normally you don't see. It's also not the best of effort. Shoe was clearly in contact. Waited for it and hoiked it over long on to get himself to another maximum. What a way to finish the over. It's Khurram Chakwal who has hit that maximum. 59 for no loss after 3. Runs are flowing, absolutely flowing for the man in blue, DH Dabanggs. What a good strike that is. Outside the off stump, pitched up. And ball, he smashed it really hard and cleared the boundary. They are 10 ahead now. It's the half stage of the innings. So it's time for the change in voices. 59 for DH Dabanggs, Naseem Rajput and Danish Anis will pick up the commentary now. Thank you, Farooq Riaz, Falak Sher.
कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के लीडिंग रन स्कोरर्स में अभी भी फहद मियां चन्नू का सबसे पहला नाम 448 रन के साथ सिर फहरिस्त हैं। इमरान दूसरे नंबर पर आपको नजर आएंगे 422 रन के साथ। असद शाह 368 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि तैमूर मिर्जा 333 रन के साथ चौथे नंबर पर हैं। एक चीज़ देखिए कि इमरान जितने करीब दिखाई दिए यहाँ फहद मियां चुन्नू के दानिश, और मलीर मलंग्स के लिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। अगर मलीर मलंग्स ने इब्तिदा में 5 फतवात हासिल की थी, अकील शाह गेंद करने के लिए हैं, जौहर जवान्स के लिए कुछ जवानों वाली कारकर्दगी दरकार होगी जौहर को, क्योंकि ऑलरेडी लीड हो चुकी है 10 रन की, और दानिश 3 ओवर अब भी बाकी हैं, तमाम विकेटें बाकी। छोटा विकी खुर्रम चकवाल, अच्छी गेंद, अच्छी लेंथी गेंद की, जिसको बहुत अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल सके यहाँ छोटा विकी। फिलहाल डीएच दबंग्स के बल्लेबाज जौहर जवान के बॉलर्स के लिए, और इससे पहले डीएच दबंग्स के बॉलर्स जौहर जवान के बल्लेबाजों के लिए बहुत तीखे साबित हुए। दूसरी जानब जौहर जवान थोड़े से फीके फीके नजर आ रहे हैं एक बहुत ही तगड़ी टीम के आगे। डीएच दबंग्स की कोशिश होगी कि सिर्फ एक ही दफा बैटिंग करें इस मैच में। ये हिस्ट्री बनेगी फिर कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की तारीख की हिस्ट्री बनेगी कि अगर एक इनिंग से कोई मैच फिनिश होगा। अब तक ऐसा हो नहीं सका दानिश, क्योंकि इतना छोटा फॉर्मेट है कि उसके अंदर कोई 1 या 2 अच्छे ओवर मैच को चेंज कर जाते हैं। लेकिन जो बॉलिंग है ख़ास तौर पे डीएचए दबंग की, ज़हीर कालिया के आने के बाद, कश्मीरी के आने के बाद, सरदार के आने के बाद, अब वो बहुत ज़्यादा फॉर्मेडेबल एंड स्ट्रॉन्ग हो गई है। जबरदस्त स्ट्रोक, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का भरपूर इस्तेमाल किया खुर्रम चकवाल ने, कवर की जाने खूबसूरत ड्राइव खेलते हुए 4 रन हासिल किए। खुर्रम चकवाल उन रेयर बैटर्स में से हैं टेप बॉल क्रिकेट में जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए भी आपको नजर आएंगे। काफी डीप इनसाइड द क्रीज खड़े हुए हैं, लेकिन इस बॉल को टिक आउट करके निकाला, और शानदार ड्राइव खुर्रम चकवाल की जानिब से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जौहर जवान्स को ही तंग किया है इन 3 बॉलर्स ने जिनका भी आपने जिक्र किया, इससे पहले गुलशन गौहर को भी बहुत तंग किया। खासी बाहर अफसरम के ये गेंद, डेफिनेटली अंपायर का सिग्नल वाइट होगी। इस तरह 2 मजीद रन मिलेंगे यहाँ डीएचए दबंग को। खुर्रम चकवाल और छोटा विकी दोनों जिस तरीके के बैटर हैं, फिर आने वाले बैट्समैन इनके 1 या 2 अच्छी बट खतरनाक किस्म की बैटिंग करते हैं, तो चांसेस अब भी मौजूद हैं इस मैच में। इनिंग वाली बात जो हम कर रहे थे। एक बार फिर इनसाइड आउट खेले हैं, कवर के ऊपर से 4 रन हासिल करेंगे खुर्रम चकवाल। शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर खुर्रम चकवाल, बगैर रिस्क लिए। आप देखें नसीम राजपूत क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। जबरदस्त ऑफ वाली गेंद मिली थी, उन्होंने ऊपर से खेला फील्डर के और 4 रन हासिल किए। लेकिन जो उनका बैट का लिफ्ट था और जिस तरह उनका फुटवर्क था, ब्यूटीफुल। अकील स्ट्रगल करते हुए खुर्रम चकवाल के बल्ले के आगे। खुर्रम चकवाल, जबरदस्त बैटिंग। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के दूसरे हिस्से में गेंद को पहुंचाया। शानदार स्ट्रोक यहाँ खुर्रम चकवाल का। यह ओवर खासा एक्सपेंसिव। एक तो फुल टॉस, ऊपर से खुर्रम चकवाल की रेंज में। इनको आप जगह बताएं कहां मारना है, इस बॉल को वहीं मारेंगे। इतना टैलेंट है खुर्रम चकवाल में। इस बार थोड़ी सी अच्छी लाइन थी यहाँ पर, जिसकी वजह से प्रॉपर स्ट्रोक नहीं खेल सके खुर्रम इस गेंद पर, लेकिन 1 रन हासिल किया। 4 ओवर मुकम्मल, 77 फॉर नो लॉस। आपने जिक्र किया नसीम राजपूत, ज़हीर कालिया, कादिर कश्मीरी और सरदार हसनैन का। ये तीनों बॉलर्स जब से डीएच दबंग्स में आए हैं, एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि ये टीम अब अनबीटेबल बन गई है। इसको शिकस्त देने के लिए किसी भी टीम को गैर मामूली क्रिकेट खेलनी होगी, और सिर्फ 1-2 प्लेयर्स को नहीं, पूरी टीम को गैर मामूली क्रिकेट खेलनी होगी, तभी जाकर ओवरकम कर पाएंगे इस टीम को। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त खासकर इन 3 बॉलर्स के आने के बाद दानिश की टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है। और जिस तरीके से हमने देखा कि ये ज़हीर कालिया स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उमरी दिखाई दे रहे हैं उनके बराबर में, यासिर मुश्ताक इनके कैप्टन है। बहुत स्ट्रांग टीम है ये, और ख़ासकर उन 3 फास्ट बॉलर्स के बाद
फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके ओनर दानिश खान, वो जिस तरीके से अपनी खिलाड़ियों को लेके चलते हैं शेरी गेंद करने के लिए कल दानिश रात खान को का भी आपने जिक्र किया नसीमा, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी मैं देखता आया हूँ हर मैच से पहले, मैच के दौरान बकअप करते रहते हैं अपने प्लेयर्स को और बहुत ज़बरदस्त इंटेंसिटी के साथ बकअप करते हैं अपनी टीम के प्लेयर्स को, बाकायदा पेप टॉक्स भी देते हैं। इन्वॉल्व हैं पूरी तरह। उनकी टीम के साथ मीडिया डायरेक्टर भी हैं, वो प्रॉपर तौर पे मीडिया को खुद भी मदऊ करने की कोशिश करते हैं, दावतें करते हैं, अपने खिलाड़ियों को इंगेज रखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वैसे मैंने देखा कि और बहुत सारे मैंने नए ऑनर्स देखे, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दी इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 की। दानिश कई सारे फ्रेंचाइज ऑनर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दिए, जिस तरीके से हमारे चेयरमैन मिस्टर ज़ुहैर नसीर एफर्ट कर रहे होते हैं, जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब के साथ मिलके अब फ्रेंचाइज ऑनर्स की जो है वो बहुत दिलचस्पी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा। और इस बार देखना होगा, यहाँ आउट हो सकते हैं फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा कैच, वेल जज कैच, खासी दूर से दौड़ कर आई थी और इस तरह छोटा विकी की इनिंग का खात्मा। छोटा विकी की छोटी बट भरपूर 8 गेंदों पर 22 रन की इनिंग्स इख्तिताम को पहुंची। थोड़ा सा ज़्यादा पेस जनरेट किया इस बार, सही तरह मिडल नहीं कर पाए छोटा विकी। अच्छा कैच लिया यहाँ पर बॉलर ने अपनी ही गेंद पर। वापस जाना होगा वकास शेरा का छोटा विकी को 22 रन बना के आउट। डीएच दबंग्स 78 पे 1। सिर्फ दानिश खान ही नहीं, नसीम राजपूत, जितने भी ओनर्स यहाँ पर हमने देखे सब ही बहुत ही इन्वॉल्व नज़र आए, ख़ासतौर पे सीज़न 3 के दौरान, और रोज़मर्रा की बुनियादों पर इधर मौजूद होते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म के साथ इस टूर्नामेंट को खेलें और वो नज़र भी आ रही है। बिल्कुल, देखा हमने पॉपुलर ग्रुप नया आया, इमरान अली रोशन साहब, उनकी बड़ी दिलचस्पी दिखाई दी, मुजम्मिल अतर साहब बहुत एक्टिव रहे, ज़फ़र अब्बास साहब उन्होंने अपने प्लॉट्स का ऐलान कर दिया अपने खिलाड़ियों के लिए कि हर खिलाड़ी को जो है वो एक प्लॉट दिया जाएगा अगर वो ये टाइटल जीतने में कामयाब होते हैं। तो दिलचस्पी बहुत बढ़ती हुई। हनीफ गौहर साहब हैं, सलमान खान बैटिंग के लिए आए अभी। इसमें पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की अपनी एक्सपर्टीज़ का भी बहुत बड़ा दखल है। आज एहतशाम बारी साहब आए हुए, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग, बड़ा उन्होंने काम किया KTPL के लिए। तो पूरी टीम, अवेश लोधी साहब, जिस तरीके से ग्राउंड में आप उनको एक्टिव देख रहे होंगे, सुहेल लासी हैं, हमारे डायरेक्टर हसन रियाज, वो हर वक्त एक्टिव दिखाई देते हैं। ये पूरी टीम है एक, और ये सिर्फ एक इवेंट है, ये सारा साल इवेंट करते हैं और इसी तनदेही के साथ एक्टिव दिखाई देते हैं, जब भी टॉप पर हैं दुनिया पाकिस्तान में। इस बार एक बार फिर डिग करके निकाला और गैप में खेले। ज़ोहर नसीर का आपने जिक्र किया, मेरी नज़र में उनकी इन्वॉल्वमेंट का तो लेवल ही और है, क्योंकि ना सिर्फ वो मैनेजरियल रोल में हमें नज़र आते हैं बल्कि एज अ प्लेयर भी गुलशन गौर्स, इनफैक्ट लियारी लेजेंड्स की टीम में नज़र आते हैं। अगले दोनों मैच जो है वो ज़ुहैर नसीर साहब की टीम ने खेलने हैं नेक्स्ट, और उन दोनों मैचों पे लियारी लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार है। कल सेमीफाइनल खेले जाएंगे, तो इस वक्त फोकस सिर्फ क्रिकेट होगा। ऑन साइड की जानिब खेले, 1 रन हासिल किया और ये हैं एहतशाम बारी जिनकी हम बात कर रहे थे। बहुत एफर्ट किया एहतशाम बारी साहब ने इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए और तमाम इवेंट्स के लिए। पूरी टीम, मैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की पूरी शानदार टीम को दाद दूंगा, सिर्फ एक बारी साहब नहीं, मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत एक तवील लाइन है, लेकिन ऑल ऑफ देम वेरी वेल डन। इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस किया, टॉप एज लगा सलमान के बल्ले से, उतने सेटल नजर नहीं आए जितने सेटल खुरम चकवाल हैं, बट देन अगेन खुरम चकवाल भी अपने लिए अलग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। 5 ओवर के बाद डीएच दबंग्स 83 पे 1। दानिश, इस ओवर में अगर कोई 20-25 रन आ गए तो फिर चांस होगा, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है
और फिर जौहर जवान्स वो टीम है कि जो इस इवेंट में कोई एक मैच नहीं जीती है, तो ये वैसे ही मोरल डाउन है। जब वो बैटिंग के लिए आएंगे तो हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की इनिंग से कोई टीम मैच जीते, इस ओवर में कितने रन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हमें ये भी याद रखना होगा कि पहली इनिंग्स में जौहर जवान ने इस तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के आगे सिर्फ 49 रन ही बनाए थे। तो अगर 50 रन से ज़ायद का टोटल यहाँ पर देने में कामयाब होती है डीएच दबंग्स की टीम और लीड हासिल करती है 50 से ज़ायद रन की, तो यकीनी तौर पर फेवरेट्स होंगे वो एक इनिंग से मैच जीतने के लिए। आरिफ रेयर बॉलर्स में से एक हैं जो कि फिंगर स्पिन कर रहे हैं केटीपीएल के तीसरे सीजन में। इनके अलावा इमरान भी हैं जिनको हमने फिंगर स्पिन करते हुए देखा। हमारे बचपन में तो हर टीम में एक फिंगर स्पिनर होता था। खैर वो बात भी 30 साल पुरानी हो गई। जिस टीम के पास फिंगर स्पिनर होता था उसकी एक धाग हुआ करती थी, उसका एक दबदबा हुआ करता था, क्योंकि अनप्लेएबल हुआ करते थे उस दौर में। लेकिन शायद टेप बॉल क्रिकेट भी जिस तरीके से वक्त के साथ साथ क्रिकेट चेंज होती गई दानिश, इस तरह टेप बॉल क्रिकेट में भी अब बड़े स्ट्रोक्स ज़्यादा आ गए। हम लोग तो ड्राइवे भी खेला करते थे। और इस बार दूसरी विकेट गई, सलमान खान आउट हुए। यहाँ पर डीएचए दबंग को दूसरा दशका, आरिफ ने ये विकेट दिलाई। और आरिफ वेरी वेल बोल्ड, मर्दान से इनका ताल्लुक है और ये हमारे कोऑर्डिनेटर माजिद शाह के मामू भी हैं। पूरे इवेंट में इन्होंने हिट नहीं करने दिया, पूरे इवेंट में इनको शुरू में चांस नहीं मिला, लेकिन जब से आए इन्होंने बॉलिंग की तो अपनी टीम को भी मजबूत बनाना चाहिए। सलमान खान 2 रन बनाकर आउट हुए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो आपके डगआउट में बैठे होते हैं और उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता। मेरे ख्याल ये दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे हैं और सबसे अच्छी बॉलिंग इस टीम की जानिब से की है। ऐसा लगता है कि इमरान को एक्शन में देखने के बाद जौहर जवान्स का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ा और उन्होंने आरिफ को इमरान को एक्शन में देखने के बाद ही टीम में शामिल किया, क्योंकि इमरान बड़े इफेक्टिव साबित हुए थे। मुस्तफ़ा न्यू मैन इन, साथ देना होगा उनको खुरम चकवाल का। 5 गेंदें अभी भी बाकी, कितनी लीड हासिल कर सकती है यहाँ पर डीएच दबंग्स। फुल टॉस गेंद थी जिसे ऑन साइड की जानिब जोरदार हिट किया यहाँ उमर ने, गो के हिट लगाते हुए गिर भी गए थे, लेकिन गेंद को वहीं पहुंचाया जहां पहुंचाना चाहते थे। जोरदार शॉट इस बार उमर के बल्ले से, लड़खड़ाए भी, रिवर्स की तरफ गए, बट वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे जो हासिल करना चाहते थे। कैच भी ड्रॉप हुआ। डीके आपकी स्क्रीन पर अपनी टीम की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हुए बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पिछले मैच से। जैसे ही वो 3 फास्ट बॉलर्स इनकी टीम में आए, ऐसा लगता है सारा बोझ उतर गया उनके कंधे से। 3 गेंदें खुर्रम चकवाल कैसी खेलते हैं, डीके भी ये देख रहे होंगे, क्योंकि 54 रन ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। वेरी वेल बोल्ड, वेरी वेल बोल्ड। और ना विकेट कीपर गेंद को पकड़ सके और इस पेस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन तक गई है दानिश, तो इसका मकसद है कि अच्छी बॉलिंग। एक बार फिर डिसिप्लिन की शदीद कमी नजर आ रही है जौहर जवान्स के गेम प्ले में। इसी गेंद पर ये दूसरा ओवरथ्रो का रन था। थोड़ी सी और पेस के साथ अगर फिंगर बॉलिंग हो नसीम, तो वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बहुत अच्छी गेंद थी जो ना विकेट कीपर समझ सके, इवन के लेग स्लिप में खड़े फील्डर भी इस गेंद को नहीं रोक सके। अच्छा पेस था इस गेंद के अंदर, और वो विकेट पे तो बहुत स्लो गेंद छोड़ते हैं। और इस बार विकेट हासिल करने में कामयाब हुए आरिफ। आरिफ ने जबरदस्त बॉलिंग की। जब से इनकी शमूलियत हुई है, कहीं ना कहीं जौहर जवान्स के लिए एक अच्छी चीज जरूर आई कि आने वाले वक्तों में जो अपनी टीम को सेटल्ड करेंगे। उमर को वापस जाना होगा यहाँ पर, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। 7 रन बनाकर आउट। डीएच दबंग्स 93 पे 3।
खासा तंग कर रहे हैं यहाँ पर आरिफ डीएचए दबंग के मंजे हुए बैटर्स को। उनके कप्तान यासिर मुश्ताक अब क्रीज पर आए हैं। पर कमाल आखिरी ओवर कराया है यहाँ पर आरिफ ने। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं यासिर मुश्ताक। एक ही बॉल का सामना करेंगे अपनी टीम के लिए। और इस बार यासिर ने आके गेंद को जबरदस्त कनेक्ट किया, 6 रन हासिल किए। जो आखिरी बॉल बची थी उस पर 6 रन हासिल किए। और मेरे ख्याल है अभी गेंद बाकी है दानिश। इनिंग्स का अख्ताम हुआ चाहता है। लेग अंपायर ने इशारा किया अंपायर को कि ओवर खत्म हो चुका है। 1 रन ज्यादा जो पहली इनिंग्स में जौहर जवान ने बनाया था, डीएच दबंग ने उससे 1 रन ज्यादा की लीड दी है उनको। बिल्कुल 50 रन की लीड, अच्छी बड़ी लीड है। वेल प्लेड खुरम चकवाल, वेल बोल्ड आरिफ। अच्छी क्रिकेट यहाँ पर यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में पूरे मुल्क का टैलेंट एक जगह पे यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जमा है। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का ये ज़बरदस्त इवेंट के जो अब अपने तीसरे साल में दाखिल हुआ है। क्या लगे दानिश, इनिंग डिफीट की बात जो हम कर रहे थे, पॉसिबल है? अगर किसी बॉलिंग लाइनअप में अहलियत है इनिंग्स डिफीट देने की तो वो डीएच दबंग्स है। लेकिन फिलहाल आपके सामने इनके बैटिंग के जौहर दिन में तारे दिखा दिए बाकायदा। जौहर जवान के बॉलर्स को आज खुरम चकवाल ने और छोटा विकी ने दोनों अपनी टीम के लिए ओपन करने आए और चारे मिजाज नजर आए। पिच के चारों तरफ बड़े स्ट्रोक्स खेलते हुए नजर आया खुरम चकवाल और एक ना चलने दी किसी बॉलर की। छोटा विकी ने अपॉर्चुनिटी जरूर दी। आरिफ शानदार बॉलिंग करते हुए नजर आए जौहर जवान के लिए। अगर कहा जाए कि ये वाहिद पॉजिटिव एंगल थे जौहर जवान की बॉलिंग लाइनअप का तो गलत नहीं होगा। कुछ रिवर्स स्वीप्स भी देखने को मिले खासतौर पे आरिफ की बॉलिंग पर, बिकॉज बल्लेबाज इतने सेटल नजर नहीं आ रहे थे आरिफ के अगेंस्ट। खुरम चकवाल की धुआंधार बैटिंग एक एंड से जारी रही, वो कि दूसरे एंड से विकेट जरूर गिरती रही और खुरम चकवाल ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया यहाँ पर और अच्छे टेक्निकल स्ट्रोक्स खेलते हुए भी नजर आए। एक बार फिर जौहर जवान की जानिब से मिक्स बैग नजर आया जहां तक फील्डिंग एफर्ट का ताल्लुक है। कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए लेकिन कुछ जो पकड़े वो बड़े अच्छे पकड़े। आसान छोड़े और आसान पकड़े भी। ये एक ज़बरदस्त मिली जुली इनिंग इसको हम कह सकते हैं डीएचए दबंग की, जो इख्तिताम पजीर हुई। डिफेंडिंग चैंपियन की बॉलिंग बहुत तगड़ी जिसको हमने पहले भी बात की। ये स्कोर कार्ड 57, खुरम चकवाल 22, छोटा विकी। और यही एक ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसने तगड़ी पोजीशन पर पहुंचा दिया है। 50 रन की लीड दिला दी है डीएचए दबंग को। बॉलिंग कार्ड में 2 आरिफ ने आउट किए जबकि एक खिलाड़ी शेरी ने आउट किया। अच्छी बॉलिंग शेरी की जिन्होंने सिर्फ 6 रन दिए अपने ओवर में। तो फिर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जौहर जवान अपनी सेकंड इनिंग का जब आगाज करेंगे हम भी आपको ज्वाइन करेंगे।
Welcome back to DHA Sports Club Moin Khan Academy for the second innings of Johar Jawans in this match number 26 against DHA Dabanggs. We have got 3 games headed up today. It's the first game between Johar Jawans and DHA Dabanggs, and DHA Dabanggs have put up an excellent show, not only with the ball but with the bat as well. They are leading by exactly 50 runs in the second innings, so that means Johar Jawans will have to score 1 run better of what they did in the first innings. The 2 umpires are already out there at the centre. So is the fielding side, DHA Dabanggs, who has looked like a completely different side as soon as their main bowlers have joined the squad. Once again, Abdul Qadir and Zahir Khalia were on a roll in the first innings, did not allow Johar Jawans to get off the blocks. They could only score 49 runs in their allotted 6 over their second lowest team score in this tournament. And in reply, DHA Dabanggs were once again pretty berserk with the bat. Khurram Chakwal getting yet another half century, and they ended up with a 99 in their allotted 6 overs. There you see the equation is right in front of your screen. Johar Jawans, well, they're going to be trailing by 50 runs. It's going to be difficult for them to first cross that 50-run mark and then to build up a lead, so that DHA Dabanggs will have something to chase down in the second innings. This might be the first time that a team can concede a innings defeat. It will happen for the first time in this edition of Karachi Table Premier League Season 3. Anything is possible though. I would like to welcome Kainat Imtiaz alongside me in the commentary box. Good morning, Kainat. It's a very good morning to you, but good evening, ladies and gentlemen, and everybody watching around the globe. It's an interesting game, of course. I was pleased to see DHA Dabanggs bowlers and Syed Nasir, the captain, to face the first delivery of Abdul Qadir, I believe. Or maybe we have some change in the bowling lineup. Well, yes, DHA Dabanggs, I think, want to give other bowlers a chance. So far we have seen, and Basit lefty, the non-striker. We have seen so far that DHA Dabanggs have batted and bowled extremely well in this game. Let's see what they have to offer. Yeah, they've looked like a completely different side as soon as Abdul Qadir and Zahir Khalia has walked in their squad. Looks like it's going to be Umri pacer Mohammad Umar to start the proceedings from the gymnasium end, and we are all set for the first ball of this third innings. Straight away, the captain has deposited that up in the air. It's up. There is a fielder trying to get underneath that, and he takes an excellent catch. I think it's Achi Butt who has taken an absolute stunner at mid-wicket. And Johar Jawans could not have asked for a disastrous start than this. A great catch. Again, he went for a big one, but not able to get completely control of that delivery. And a good catch in the end on the boundary. It's going to become even more difficult now because the captain is walking back for a golden duck. It's not for one. Shah makes his way out there at the center at number 3. And DHA Dabanggs, well, they have done nothing wrong so far in this game. Restricting the opposition for 49, getting a lead of 50, and now picking up a wicket of the very first ball. Short and wide, creamed away over backward of point. He hasn't timed that well enough, but the ball is still running away to the boundary ropes, and it's going to go past there. So a good start is from Shah. I think they wanted Johar Jawans to give a chance. That's why they've brought in Umar as an attack bowler. And a good shot towards this point region, third man on point region. Yeah, they want their batters to bat in the second innings as well, maybe. But so far, so good for DHA Dabanggs. Umri Pacer once again has been really good in the start. He has done that throughout the tournament. He was not bowling the first few overs as soon as Zahir Khalia and Abdul Qadir walked in. On the leg side, it's up in the air. There is a fielder out there, but the ball is well wide of him. We'll have to check the replay whether that ball crossed the boundary ropes or did it land inside. The umpires are just going to confirm it was a firmly hit full stroke by Shah.
A good platter shot and could have been a great diving catch by the fielder on the boundary. I would have loved to see a diving catch by any of the fielders in any of the teams. It was struck hard, Kainat. And he has already taken a catch in the first ball of the inning, so got to give him some margin. Well, there's no margins for the fielders, and you need to give your 100% on every ball that comes towards you. 10 for 1, 3 balls still remaining in the opening over. Oh, that's a good bouncer. That's a really good bouncer. He was completely surprised by the bounce and the pace on that delivery, Shah Raza. He wasn't expecting the ball to come at him that quickly. The ball did skid through the pitch, and it was also not on, it was exactly on the bouncer area on his face. A very good delivery by Umri Pacey. Yeah, he took his eyes off the ball at the last moment. The ball hitting his hands. Could have been a catch for the bowler himself. He did not go after that. Pitched up. It's up in the air. The long on fielder is trying to get around, but the ball might go over his head. Yes, it does. Another 6 coming from the bat of Shah Raza. And a fuller delivery and a full pitched shot. They will need more of these. It was completely in the region of the batter, and he was completely set to hit it over the boundary. And again, I don't think it's a 6. I think it went for a 4. I think the ball just landed beyond the boundary, Rose, but you can say that it's more difficult to take the catches during the daytime because the sky is also grey in color and you've got wide tapes wrapped around the ball. Shot, once again couldn't time it well enough. Has just managed to hit it back past the bowler. It will be a dot ball. So a mixed bag this over from Umri Pacer, a wicket and 16 runs off it. Johar Jawans are 34 for 1. $16 for 1 after the first over. And as expected, Zahir Kalia is going to be bowling the second over. Right arm fast, and fast he is. The fact that he's 43 years of age, he doesn't have a long run up as well. Still, he delivers the ball at such rapid pace. Need to take a lesson or two from him. Definitely. Fuller in length. Bassett lefty once again did not judge the pace behind that ball. Well, kind of you have played international cricket. Looking at the way these fast bowlers are bowling and the pace that they are operating, how much do you think they are clocking at? Are they clocking at 140 or over that? I think Zahir Kalia, he is clocking at around 140. A very good pace offered by him. But even if you take the tips, that's not going to work for you, as this is something natural and it cannot be built overnight. And it's a raw talent that it's always inside you. Trying to hammer it down the ground, but there is a fielder out there at mid-off who fumbles up a bit, but they will just get a single. Yeah, it's important that the talent of tape ball gets groomed and they are given chances in professional cricket as well. You see the owners of DH Dabanggs, Mr. Danish Khan. He's always in such a jolly mood. When your team is winning, you're definitely in a jolly mood. Ask the owners of Johar Jawans at the moment. I don't think he has bothered to come today, in fact, to witness this game. It's going to be a wide down the leg side. Well, the first 3 deliveries have not been that quick from Zahir Kalia. I think he understands the situation as well. He's just maybe keeping himself fresh for the remaining games to come. Obviously, if they're going to win this game, which is highly likely,
for DH at Dabanggs. Their spot is almost going to be confirmed in the semi-finals. Still trailing by 31, Johar Jawans. Shah so far has done the bulk of the scoring. Can he get a big score today? That's a slower one. Completely foxed him. He was too early into that stroke. That's what the reputation of a fast bowler does. Now you are facing Zahir Kalia and you are expecting the ball to come at a rapid pace on every delivery. And as soon as Zahir Kalia delivers a slower ball, you look in a completely funny position, like as if you haven't even faced a fast bowler up till now. Well, of course, this is what experience brings on the table, and this is what Zahir Kalia brings for DH Dabanggs, all kind of experience that he had over 2 decades of playing cricket. He has been playing cricket since the time I didn't even know about this sport. Full toss once again, clearly laid onto that stroke. It has gone into the gap. They're looking to come back for the second run and they'll get it easily. But so far, even a full toss is difficult for Johar Jawans when Zahir Kalia is bowling. And I mean, of course, I haven't seen somebody bowl with this pace in tape ball cricket so far. So I'm quite impressed by Zahir Kalia, and also by the lengths that he's offering. And, I mean, it's not only one length and not only one pace. He keeps on changing it. So quite good use of his brain. When you can be as threatening as Zahir Kalia, even a bad delivery sometimes are hard to put by. Another full toss. Once again, it has gone into the gap on the leg side. Shah wants to come back on strike, and they're going to get 2 runs easily once again. Two back-to-back full tosses. But somebody should put that ball out of the park, as they were some juicy full tosses. They need to have a quick bat swing to hit all those full tosses offered by Zahir. And Johar Jawans realizes that they still trail by 27 runs. Even if they score 100, the target for DH at Dabanggs is going to be 50, which is going to be a walk in the park for a side that is as strong as DH at Dabanggs, having Khurram Chakwal and Chota Vicky opening the batting. A full toss outside the off stump this time. He has carved it away on the offside. That's going to run away for 4. That's a proper cricketing stroke. You must be impressed by that, Kanyat. It was outside off stump, that's why it was hit it between the fielders, and a good cricketing shot, I would say. Always good to see ball going towards the offside of the field. Expensive over comes to an end from Zahir Kalia. 11 runs off it, 2 done. It's 27 for 1. So, it's the 3rd over, and we are seeing another bowler, another bowling change. Abdul Qadir Abbasi with a slingy action. Fuller delivery that has been hit straight down the ground. 1 bounce into the fence. In fact, that has gone all the way for 6. Wow, that was a quality stroke from Basit lefty. Well, indeed, it was a good quality stroke by Basit lefty in attacking Abdul Qadir. Again, a straighter shot towards the straighter boundary. Down the leg side, he has managed to get it past that fielder at short fine. That's going to run away for 4. Perfect start of this over from Basit lefty. The idea should be to end the lead in this over so that they can have 3 more overs to go after the bowlers. Well, I would like to add here that I think from my side, the bowlers are being a little bit easy, coming on a little bit easy on the batsmen, and not bowling on the areas they were bowling in the first inning.
I would like to see some good Yorkers again. Excellent delivery, a slower in pace. He was clearly late onto that stroke, Bassett lefty. Once again looking to pull that away on the leg side, but just couldn't make any connection whatsoever. They're giving the opposition some chance to gain their form back, so that maybe when they are going to come back in the next tournament, they will have much more confidence. Once again, swiveling pull stroke. It's in the air. He has found the gap. In fact, forget about finding the gap, because that has once again gone over the boundary ropes. In fact, that has been taken. Bassett lefty is walking. Well, it's out, and Bassett lefty goes back to the pavilion, and it was not a full-bladed shot. It hit on the bottom of the bat of Bassett, and then another out for Johar Jawans. Bassett lefty went for 11 on 6 deliveries. Johar Jawans 37 for 2. Just get the feeling I need to finish the cup of tea. The Johar Jawans have now lost their second wicket. Bassett lefty has been dismissed as well. Abdul Qadir. Well, he was very lucky to have got a wicket on that ball, because it was there to be hit. Just couldn't time it well enough. Moise, meanwhile, is the new batter in at number 4. And just when we were talking about they need to get those runs so that they can add up runs on a lead after this over, but they have lost yet another wicket. Moise went on a duck in the last innings. That too a run out. Unfortunate one. Pitched up. It's up in the air. He hasn't timed it well enough. There is a fielder down there at long on. The ball is taking an eternity to come down, but has landed outside the boundary ropes. You were mentioning that he got out on the very first delivery last innings. Well, he is opening his account with a maximum. It was almost a catch, and we might have seen the best catch of the tournament. But again, it was dropped and went for a 6. Good delivery. You could see that shape into the right-hander. A pacey delivery to end the over with. 16 and a wicket in that over of Abdul Qadir. After 3, it's 43 for 2. Time for a change in the commentary box. It's going to be Rana Ashfaq alongside Asif Bukhari. बहुत शुक्रिया ज़िशान और कायनात। 43 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर। 24 रन्स पे शाह हैं, मॉइज़ 6 रन्स में। पहली इनिंग्स से अगर हम मुवाजना करेंगे तो बहुत बेहतर इनिंग्स ये खेली है जौहर जवान्स ने, मगर अभी भी 7 रन्स का उनको खसारा है और सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। ज़हीर कालिया जिन्होंने जब से टीम को ज्वाइन किया है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और अपने नाम की रेपुटेशन पे उन्होंने लिव अप किया है। गेंद करने के लिए तैयार हैं। गेंद करेंगे शाह को, जिन्होंने 24 रन्स बनाए हैं महज 9 गेंदों पर। शर्ट नंबर 99 में ज़हीर कालिया रेयरिंग टू गो। चौथे ओवर का आगाज। इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जाने। फील्डर बाउंड्री पे हैं। 1 रन मिलेगा। आसिफ बुखारी ने मुझे ज्वाइन किया है, खुश आमदीद। और बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त जौहर जवान्स की टीम जो है वो फर्स्ट राउंड में अपना आखिरी मैच खेल रही है और अभी तक कोई मैच जो है वो जीता नहीं है और यहाँ पर डीजे दबंग्स की मजबूत टीम के खिलाफ नबर्द आजमा है। बड़ी खूबसूरत गेंद ज़हीर कालिया की। इस गेंद का कोई जवाब नहीं मॉइज़ के पास और वो क्लीन बोल्ड हो गए।
ज़हीर कालिया जो हैं उन्होंने कल ही अपनी टीम को ज्वाइन किया है और कल आते ही उन्होंने दाग बिठाई थी। 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन के एवज जो है वो 3 विकेटें हासिल की थी और आज भी उन्होंने 3 विकेटें जो है अभी तक इस मैच में हासिल कर ली हैं और मजमूई तौर पर 6 विकेटों के साथ जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी रेपुटेशन जो है वो बना रखी है। मोइज आउट हुए हैं 6 रन बनाकर, इस तरह 44 पे 3। अरीब अब बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और जौहर जवान्स को अब भी 6 रन का खसारा है। तो आप बात कर रहे थे ज़हीर के हवाले से। हाँ जी, ज़हीर जो है पहले भी हमारे साथी कमेंटेटर्स ये बात कर रहे थे कि 43 प्लस जो है वो उनकी उम्र है और अभी तक भी जो है वो पहली पोजीशन पर अगर आप टॉप रैंकिंग जो गेंदबाज हैं वो करते हैं तो ज़हीर वहाँ पर जो है वो सर फहरिस्त हैं और मैं इनका किसी भी गेंदबाज के साथ जो है वो कंपटीशन नहीं करता बिकॉज इस एज में इतनी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही लाजवाब है और जिस टीम में वो जाते हैं बहुत ही वहाँ पर जो है वो शानदार परफॉर्मेंस रहती है। नए आने वाले बल्लेबाज अरीब जो हैं उनका ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस टूर्नामेंट में। 7 रन जो है उनकी बेस्ट इनिंग्स हैं। जी हाँ, 43 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना और फिर ख़ास तौर पे अगर आप पेस बॉलर हों तो यकीनन आसान नहीं और फिर उसमें यह कि आप टॉप के परफॉर्मर भी हों तो ज़हीर कालिया को क्रेडिट देना ही चाहिए। अरीब बैटिंग करने के लिए आप पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं एक तेज़ और तूफ़ानी इनिंग्स चाहिए जौहर जवान्स को उनके बैट से। दूसरी जानिब शाह बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं 25 रन पर, मगर वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर हैं। ये एक तरह से शाम का मैच है, आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं और इस वक्त साए जो हैं वो लंबे हो रहे हैं। बड़ा दिलकश मंजर है डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में। कुछ ही देर में यकीनन फ्लड लाइट्स ऑन कर दी जाएंगी, तारीखी फिजा को अपनी आगोश में ले लेगी। ये गेंद बोल्ड कर दिया ज़हीर कालिया, बड़ी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं। बैट्समैन गेंद का ऑन साइड पे वर्क करने गए थे, गेंद की लाइन को मिस किया। ये हम दोबारा देख सकते हैं, ये गेंद जो कि उनके लेग्स के पीछे से होती हुई बिहाइंड हिज लेग्स, बड़ी उम्दा गेंद। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर संभल ही नहीं पाए हैं और आते ही आपको जो है वो कहते हैं ना सर मंडाते ही ओले पड़ना। तो यहाँ पर एक बड़े गेंदबाज का सामना था अरीब, जिनका मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं थी, सिर्फ 7 ही रन से बना रखे थे और यहाँ पर बिल्कुल आते ही जो है उनको जाना पड़ा है और ज़हीर कालिया जो है बिल्कुल बॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं। जो मंजरकशी आपने यहाँ पर की है ग्राउंड और ग्राउंड के पार वो सामने नज़र आ रहा है इस वक्त। बड़ा खूबसूरत और दिलकश दिलनशी मंजर, समंदर और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो शाम को मज़ा दुबाला कर देती हैं। बिलाशुबा इस पे तो एक वो शेर भी था कि सलीम कोसर का है मेरा ख्याल, ये शहर समंदर के किनारे पे वाक़ है, कुछ इस तरह से है। इस शहर में रहना तो अपनी औकात में रहना। शायरी जो है ये तो बिल्कुल जनाब आप पर एंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायरी जो है इसको याद करना जो है ना ये भी एक बहुत ही कठिन काम है। सो नए आने वाले बल्लेबाज जो हैं वो उमर लेफ्टी सरगोदा से ताल्लुक़ है, बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। 2023 में इनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रही है। ज़हीर कालिया हैट्रिक में हैं, गेंद करने के लिए तैयार बाएं हाथ के बैट्समैन उमर, विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक, स्लिप और लेग स्लिप मौजूद। कैन ज़हीर कालिया गेट दी हैट्रिक इन? 99 नंबर शर्ट में तैयार यहाँ इस मुकाबले में ज़हीर कालिया 2 गेंदों पर मुसलसल 2 खिलाड़ियों को बोल्ड करने में कामयाब हुए हैं और हैट्रिक होती है तो ये बड़ा एजाज होगा उनके लिए। और इस गेंद को ड्राइव कर दिया, यॉक करने गए थे मगर कामयाब नहीं हो सके ज़हीर। 1 रन बना, बहरहाल बिलाशुबा बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, नो डाउट इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़हीर कालिया कभी भी ये वाहिद ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर आज तक जो है तकरीबन 2005-6 से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मैंने इन पर कोई तनकीद जो है वो नहीं देखी, कोई सुनी नहीं है। किसी बंदे ने इनको जो है वो इस तरह नहीं किया, किसी और गेंदबाज को इनको ऊपर से जो है वो नहीं ले जाया गया। सो अगले बॉल के लिए एक दफ़ा फिर हैं तैयार और शाह रज़ा 25 के इनफरादी स्कोर पर उनको फेस करेंगे ज़हीर कालिया को। इस गेंद को शाह रज़ा ने ऊंचा खेल दिया। शाह रज़ा बड़े जारहाना मूड में हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल ये ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर शाह रज़ा ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो उनकी एक जो रेपुटेशन है बहुत ही शानदार डेवलप हुई है और उन्होंने जब जब मौका मिला है तब तब उन्होंने परफॉर्म। ये देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ
और इसमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था और शानदार जो है वो एक छक्का हासिल किया है। हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है जौहर जवान्स की और अब उनकी लीड भी हो गई है 1 रन की, यानी अब वो इस पोजीशन में है कि चेस के लिए आना पड़ेगा डीएचए दबंग्स को, वरना तो इनिंग्स की शिकस्त का भी खतरा एक मौके पे लगने लगा था, लेकिन अब टारगेट देने की पोजीशन में है। तेज गेंद जहीर कालिया की, जिसे विकेट कीपर के पीछे मौजूद फील्डर ने रोक लिया है, मगर अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल, तो कीमती 2 रन्स जो हैं वो आ गए। फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है तो मैं इस लीग में अभी तक जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो लीडिंग विकेट टेकर्स हैं, उनकी बात मैं ज़रूर करूंगा। इरशाद खान आफरीदी वजीरिस्तान से दूर अफ्तारा इलाके से ताल्लुक़ है और काला खेल से जो है उनका ताल्लुक है। सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम फर्स्ट राउंड से बाहर हो चुकी है। 19 विकेटों के साथ जो है वो पहले नंबर पर हैं। कभी कभार ये होता है कि इंडिविजुअली तो परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर टीम की वजह से वो लेट डाउन भी होते हैं। डाउन द लेग साइड, इस दौरान फाइन लेग की जानिब गेंद जा रही है। 2 रन तो वाइड के होंगे, 2 रन दौड़ के मिलेंगे, तो 4 रन का इजाफा। इसमें मुझे 2003 का वर्ल्ड कप याद है, जब पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हुआ, तो उस वक्त तक वसीम अकरम टॉप विकेट टेकर थे 15 विकेट्स के साथ पहले ही राउंड में, लेकिन पाकिस्तान सेकंड राउंड में भी नहीं पहुंच सका था। उसके बाद फिर उनको क्रॉस कर लिया कुछ बॉलर्स ने, बट उस वक्त तक जब पाकिस्तान एलिमिनेट हुआ तो अकरम हैड 15 विकेट्स। तो यकीनन इरशाद के लिए हेड्स ऑफ हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया, दूर दराज इलाके से उनका ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, नसीम राजपूत यहाँ मौजूद हैं वीआईपी गैलरी में, और सादिक भाई इस वक्त चाय लगता है कि उन्होंने कहा कि कड़क पत्ती वाली लाई जाए। ये गेंद यॉक करने गए थे, गेंद को डिग आउट किया, बैक डाउन टुवर्ड्स द बॉलर, कोई रन इस गेंद पे नहीं बन सका। बिल्कुल, चाय जब हम पी रहे होते हैं शाम को, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर लीड जो है वो 57 की हो चुकी है। और उमरी पेसर जो है, हम उनको स्क्रीन पे देख रहे हैं, उमरी पेसर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है। साल 2023 में ये छाए रहे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेल चुके हैं, सिडनी सिक्सर के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की जानिब से। और इस वक्त जो है टूर्नामेंट में ये तीसरे नंबर पर हैं 17 विकेटों के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ये कुछ जो है वो कराची टेबल प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल है आपके सामने। मलीर मलंग स्टिल टॉप पे हैं 10 पॉइंट्स के साथ। 8 पॉइंट्स हैं क्लिफ्टन पॉपुलर्स के, और 6 ही मैचों में डीएचए की भी 8 पॉइंट्स है, मगर उनका जाहिर है कि रन रेट ज़रा सा कम है क्लिफ्टन से। उनका प्लस 2.6152 है, इनका प्लस 2.361 है, यानी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। तो डीएचए और क्लिफ्टन ऑलमोस्ट गोइंग नेक टू नेक। और एक और टीम है जो 8 पॉइंट्स के साथ सिट कर रही है, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला अभी भी है। देखते हैं कि कौन सी टॉप 4 टीमें, लेकिन कुछ टीमें ज़ाहिर है कि उनके लिए बिल्कुल वाज़े हो गया, जिनमें से एक जौहर जवान्स भी है कि वो अपना पैकअप करें और फिर अपने अपने घरों की जानिब जो है वो रवानगी होगी। ये होता है किसी भी बड़े इवेंट में, टीमें एलिमिनेट होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस गेंद को खेलने तो ऑन पे गए थे, गेंद ऑफ साइड में गई, मगर हल्का सा फंबल हुआ, थ्रो बराह रास्त विकेटों में लगा नहीं, ओवर थ्रो हुआ, और इस दौरान 2 रन बनाने का मौका बैट्समैनों को मिल गया। जी बिल्कुल, कल भी बात ये की जा रही थी कि जो 8 पॉइंट्स हैं, ना तो आप सेमीफाइनल्स के लिए क्लियर हैं और ना ही 8 पॉइंट्स के साथ आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। सो नेट रन रेट जो है वो कलीदी किरदार अदा करेगा। और यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर की एक जो टीम है, यहाँ पर थ्रोज रूल किया गया था खुरम चकवाल की जानिब से, जो कि पॉइंट पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं। और अगले बॉल के लिए डाउन द लेग साइड, तेजी से दौड़े बैट्समैन, थ्रो, लेकिन बड़ा वाइड वन, और डीप मिड ऑन पे गेंद को बैकअप किया गया। ओहो, क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लेजीनेस, और इस दौरान वाइड बॉल का इशारा, तो कुल मिलाकर 4 रन बन गए। गेंद चूंकि अभी डेड नहीं हुई थी, साकिन नहीं हुई थी, तो लिहाजा मौका था, बैट्समैनों ने उसका इस्तेफादा किया। फील्डर्स कहीं ना कहीं थोड़े लेथार्जिक रहे, जिसकी वजह से ये रन भी जो है वो अलाउ हो गया। उमरी पेसर चारे मिजाजी ये रखते हैं अपने अंदर, और अगर मिस फील्डिंग हो जाए, फील्डर कैच छोड़ दें, तो फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और इसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस गेंद को ऊंचा खेले, फिर मिसक्यूट स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर आएंगे कंट्री साइड से आगे की जानिब मिड ऑन पे, और सिर्फ 1 रन मिलेगा। लीड जो है वो स्ट्रेच ज़रूर हो रही है, मगर इतनी बड़ी नहीं है कि डीएचए दबंग्स कोई बहुत बड़ा प्रेशर महसूस करे। 10 गेंदें अभी बाकी हैं, अगर इन 10 गेंदों पर कोई 30-40 रन बनाने में कामयाब होते हैं, तो कम से कम 50-55 रन का एक टारगेट ज़रूर
देने में कामयाब हो सकते हैं डीएचए दबंग्स को जौहर जवान्स के बैट्समैन। उमरी का ये दूसरा ओवर है, 1 for 23 उनका बॉलिंग का तज्जिया अब तक। गेंद करेंगे रजा शाह को और इस गेंद को पुल करने में कामयाब हुए। फील्डर मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह ये कैच लेने के बाद उन्होंने आउट कर दिया है शाह को, जो इन फॉर्म थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे। और उमर की ये बड़ी अहम कामयाबी। मुस्तफ़ा जो है वो वहाँ पर फील्डर मौजूद थे और बड़ी आसानी के साथ जो है वो कैच को लिया है और यहाँ पर उमरी ने 18वां विकेट जो है वो हासिल कर लिया और इस तरह लीडिंग विकेट टेकर जो है वो वहाँ पर दूसरे नंबर पर आ गए हैं इरशाद अफरीदी के बाद। शाह रज़ा जो है इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही मुतासर किया है उन्होंने अपनी ज़बरदस्त जो बैटिंग स्किल्स हैं। नौजवान हैं, अभी उनके पास बहुत वक्त है, आने वाले जो एडिशंस हैं उनमें मज़ीद जो है उनको अच्छे तरीके से जो है उनको बैटिंग करते हुए देखा जाएगा। बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जिशान सलीम सकी, आरिफ बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुंचे हैं। आरिफ शाह राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। इस गेंद को ऊंचा खेल दिया, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में और यहां पर फील्डर गेंद को कैच करने में कामयाब हुए और सेलिब्रेशंस डीएचए के लिए। विकेट्स गिरने का सिलसिला अब तवील हो रहा है और ये देखें कहां जाकर उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। दौड़ते हुए चले गए उमर उनके पास और उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच भैया, मेरी विकेटें आपने 19 कर दी हैं। ये आउट होने का मंजर सब बिल्कुल हैट्रिक पर हैं एक दफ़ा फिर यहाँ पर उमरी पेसर। पिछले ओवर में आपने देखा ज़हीर और ये जाकर अपने फील्डर को जो है वो शाबाशी दी है। सो अच्छे कैचेस यहाँ पर आरिफ शाह गोल्डन डक जो है उन्होंने हासिल किए। पहली गेंद पर चलते बने शिकार हुए उमरी पेसर का, जो कि अब हैट्रिक पर हैं और 19 विकेटों के साथ पहले नंबर पर आ गए हैं। नए बैट्समैन शहरी मैदान में दाखिल हो रहे हैं। 10 नंबर शर्ट में हैं और हैट्रिक पे इससे पहले ज़हीर कालिया थे, वो नहीं कर पाए। अब उमर हैं हैट्रिक पे, लेट्स सी इफ ही कैन गेट इन। मगर हैट्रिक बॉल को स्मैक कर दिया है भरपूर कुव्वत से। यहां पर शहरी ने खूबसूरत छक्का, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की इन्होंने कोशिश की है और कामयाब कोशिश की है। यॉर्कर लैंड डिलीवरी करना चाहते थे, क्लीन बोल्ड करना चाहते थे और थोड़ा सा लाइन से चूके हैं। और क्रेडिट देना चाहूंगा मैं यहाँ पर शायरी को, जिन्होंने भरपूर अंदाज में पावरफुल हिटिंग करते हुए यहाँ पर गेंद को बाहर पहुंचा दिया है 6 रन के लिए। एक और ऊंचा शॉट अब खतरे में है। फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे और कैच लेने में कामयाब हुए। गो के हैट्रिक नहीं कर पाए उमर, मगर 3 खिलाड़ी आउट करने में कामयाब हुए इस ओवर में। और इस तरह कुल मिलाकर अब उनकी विकेट्स 20 हो गई हैं इस इवेंट में। लगातार विकेटें ले रहे हैं और लगातार विकेटें यहाँ गिर रही हैं जौहर जवान्स की भी। काफ़ी खुश हैं उनके साथी भी उनसे, उनके फील्डर भी, ये हम देख सकते हैं। इस तरह से आउट हुए चेरी। ज़ोरदार स्ट्रोक उन्होंने अटेम्प्ट किया था, फील्डर के पास बड़ा वक्त था कि गेंद के नीचे आएँ, गेंद को ग्रैब करें और एक बार फील्डर का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया और 6 रन बनाकर आउट हुए चेरी 70 पे 7। कैचेस ड्रॉप नहीं हो रहे, सनलाइट है या फ्लड लाइट्स में काफ़ी कैचेस ड्रॉप किए गए। परसों 13 कैचेस छोड़े गए, कल रात में 9 कैचेस छोड़े गए, आज जो है वो अभी तक 3 कैचेस छोड़े गए हैं। ये एक वजह ये भी हो सकती है कि ये आदी ना हो अंडर लाइट्स कैच करने के, मगर ऐसा तो नहीं है क्योंकि इवेंट्स तो जो है वो ज़्यादातर नाइट होते रहते हैं जहाँ ये खिलाड़ी खेलते हैं। तो मुझे लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट भी है और शायद डीएचए कदरे बेहतर जो है वो साइड लग रही है फॉर कैचिंग। और वैसे भी वो फॉर्म में भी हैं, उनका मोराल भी हाई है, अच्छे अंदाज में टूर्नामेंट में मौजूद हैं। काफ़ी बॉलर्स अच्छा हैट्रिक्स पे आए हैं। फरमान बैटिंग के लिए आ गए हैं अब। तो मुझे याद आता है कि जो वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक थी वो जलालुद्दीन ने की थी पाकिस्तान के लिए हैदराबाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कराची ही से जलालुद्दीन का ताल्लुक। उसके बाद फिर बहुत सी हैट्रिक्स हमने देखी। वसीम अकरम ने दोनों फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में 2-2 हैट्रिक्स की। आकिब जावेद गॉट अ हैट्रिक इन। मुस्तफ़ा हनीफ आखिरी ओवर करने के लिए तैयार हैं।
और इस गेंद को ऑन साइड पे खेलने गए थे, गेंद लगी है बॉडी पे, कोई रन। उमरी जो है थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, हालांकि ज़्यादा मैचेस इनको नहीं खिलाए गए हैं और शायद उस वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है और यहाँ पर इनको आखिरी मैच में मौका दिया गया है जबकि अब सब कुछ जो है वो खो चुके हैं और एक दफ़ा फिर हैं तैयार। मारने गए थे ऑन साइड में, 1 रन मिलेगा। अच्छा आसिफ, कुछ आपको याद आता है कि एक बॉलर उन्होंने हैट्रिक कर रखी है इंटरनेशनल, लेकिन वो बदनाम बहुत हैं, हैट्रिक का उनकी कोई जिक्र नहीं करता, कुछ ज़हन में आ रहा है? नाम ज़हन में नहीं आ रहा आपका। ये इंडिया के चेतन शर्मा हैं जिन्होंने वनडे के वर्ल्ड कप में हैट्रिक कर रखी है, बट बदनाम है कि छक्का जावेद मियांदाद ने जो उनको लगाया, जो प्रेसिडेंट है KTPL सीज़न 3 के, और इस गेंद को ऊंचा खेलने में कामयाब हुए और ज़ोरदार शॉट और छक्का। उन्होंने खुद बताया एक इंटरव्यू में कि लोग मेरी हैट्रिक का जिक्र नहीं करते, ये दोबारा हम छक्का देख लें पहले, बड़ा अच्छा शॉट था मिड विकेट पे, बल्कि अगर मुझे कोई टैक्सी ड्राइवर भी कहीं मिल जाता है वो कहता है आप वही हो ना जिसको जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था। एक बार तो फिर स्विंग कर दिया है ऑन साइड में और गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर, अंपायर के हाथ फजा में बुलंद, एक और छक्का। अब बिल्कुल यहाँ पर जो बात आप कर रहे हैं तो बॉलर्स के साथ थोड़ा सा जो है ये देखें, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो है वो वहाँ पर गेंद को पहुँचाया गया, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था और यहाँ पर कुछ रन्स जो हैं वो बहरहाल आते हुए 6 रन्स तो हैं लेकिन लीड जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर 33। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, बड़े अहम रन बना रहे हैं फरमान और कुछ बेड़ो फुटबॉल हमने देखी, गेंद को पाँव से रोकने में कामयाब खुरम चकवाल थे और इस दौरान जो है वो 1 रन बना है, 2 रन इनफैक्ट, 35 रन की अब लीड हो गई है ओवरऑल। आखिरी गेंद बाकी है, देखते हैं कि इस पे फरमान क्या करते हैं। ये मैच अगर मैं ये कहूँ कि DH दबंग्स के लिए एक किस्म का प्रैक्टिस मैच है, लेकिन क्या उनको पूरी तरह से प्रैक्टिस मिली है, क्योंकि मद्दे मुकाबले टीम अगर रन ही नहीं बनाएगी। और यहाँ पर जोरदार शॉट, फरमान ने बड़ा अच्छा इख्तिताम किया इनिंग्स का, 3 छक्के लगाने में वो कामयाब हुए और 4 गेंदों पे 20 रन की एक बड़ी शानदार कैमियो उन्होंने खेली और 91 रन 7 विकेट पे इनिंग्स फिनिश की। 41 रन की ओवरऑल लीड, 42 रन का टारगेट जो है वो अब मिला है DH दबंग्स को। ये मुकाबला जीतकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल करके मलीर मलंग्स के पॉइंट्स को ज्वाइन करने का उनके पास मौका है, क्योंकि ये जीतने के बाद उनके पॉइंट्स की तादाद भी 10 हो जाएगी। मुस्तफ़ा के ओवर में 20 रन बने, फरमान ने लोअर डाउन द ऑर्डर अच्छी हिटिंग की, आखिरी 4 गेंदों पर 20 कीमती रन बनाए। ये DH दबंग्स की टीम, ज़हीर कालिया जिन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, एक ही 2 गेंदों पे, उसके पहले भी विकेट हासिल की, जबकि इस तरह उमर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, वो एक मौके पे हैट्रिक पे थे, हैट्रिक बॉल पे तो उनको छक्का लगा मगर वेरी नेक्स्ट बॉल फिर उन्होंने विकेट हासिल की। यासिर मुश्ताक उनके साथ ही ग्राउंड से बाहर अब आ रहे हैं, हौसला बुलंद है। ये इनिंग्स की हाईलाइट्स हम देख सकते हैं, ये कुछ होता रहा इस इनिंग्स के दौरान और 91 रन जो है बनाने में कामयाब। यहाँ पर बैट्समैन आउट हुए थे, जस्ट वेन ओवर द टॉप, इस गेंद को पुल किया था ऑन साइड पे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ऊंचा उठाकर खेले थे, ऑफ साइड में, and that was a beautiful shot. कालिया की ज़बरदस्त बॉलिंग के मुनाजिर, बहुत ही खूबसूरत, ये वो मौका जब वो हैट्रिक पे थे, जहाँ बड़ा अच्छा कैच किया था फील्डर ने। आरिफ शाह इस तरह से आउट हुए। एक और कैच, फरमान ने आते ही कुछ हाथ दिखाए, 20 कीमती रन बनाने में वो कामयाब हुए। इस स्कोर कार्ड में 31 रन के साथ रजा शाह नुमाया हैं और डाउन दी ऑर्डर फरमान के 20 रन बड़े अहम हैं। बॉलिंग में उमर ने 4 खिलाड़ी आउट किए और ज़हीर कालिया ने 2, जबकि 1 विकेट मिली कादर।
ड्रोन कैमरा के जरिए आप मुनाजिर देख रहे थे वीआईपी गैलरी के। दोनों ओपनिंग बैट्समैन मैदान में दाखिल हो रहे हैं। और फर्रुख रियाज और जिशान खालिद आपको अब ज्वाइन करेंगे जब डीएचए अपनी इनिंग्स शुरू कर रहा है और चेज के लिए जा रहा है। Thank you very much, Rana Shwak. And now fourth innings is about to begin. The DH Dabanggs batsmen are making their appearance. So, some sort of fight back we saw from Jawans. They batted much better than they did in the first innings. And now have given the target of just 40 odd runs. Certainly it's not a stiff one. Waqas Sher will face, and his partner from Shahzad both batted beautifully in the first innings as well. So easy job to be done in this last innings of the first match of the day. Ball number 1. Width provided, smashed it down the ground. And I think it's taken it. The catch has been taken. That is interesting. At the boundary, and Chota wicket is gone. Yes, indeed. That's a really good catch just from Shah. Look at the celebration. A wicket of the very first ball, and we are talking about Chota Wiki. It was short, it was wide outside Eos, and he was looking to slap it. But look at that take. That's an excellent grab from Shah. And he knows it. He was pumped up. A wicket of the very first ball. Chota Wiki goes back for a golden duck. It's not for one. Wow, this is exactly the start they were looking for, Johar Jawans with the bowling, but the fact that they have just scored 41, that means the Dabanggs just need 42 more runs to win. Don't think it's going to be that difficult. What a catch that was. It's worth watching over and over again. Shah scored 30 odd runs in the previous innings, was the leading scorer for Johar Jawans in the previous innings that just got concluded. Now he has taken an excellent grab. I mean, we have seen some really good catches being taken, some easiest being put down, but this one clearly being the best of the lot. Without a question. And now Salman Khan has come out of the centre. He's got the promotion in the batting order, and after the fall of Chota Wiki, a dream start in this innings for Johar Jawan. Tickle here, more runs. In fact, it will go for just one. It was quite right. Number of drop catches we saw, especially in the first innings. I remember Syed Nasir, who the captain, dropped it. Very relaxed dugout of TH Dabanggs. But Shah was absolutely brilliant. Highly spirited effort and covered a lot of ground to grab it. So that's the kind of attitude is required if you're defending a low total. Khurram Chakwal, the man in form, has got the strike. Yeah, they did not have a good campaign this season. Johar Jawans couldn't win any of the game. And to add salt to the wounds that they are up against TH Dabanggs in the final game of the league stages. Missed out, low full toss. Quite a few times he belted low full toss for sixes in the previous innings, and a loose shot on this occasion. It was wide outside Eostum. He was just looking to slam it. Got a thickish outside half of the bat, and the ball absolutely went nowhere. It was just dying when it went towards the wicket keeper. So far so good from Sherry. Just 1 run conceded, and he has also picked up a wicket, that too, of Chota Wiki. But you just get the feeling that the opposition is too good for Johar Jawans today. Waited. And he's found the gap, and he picked up a boundary. Lovely shot width was offered, and nicely controlled cut shot from Khurram Chakwal. That was a beautiful cricketing stroke. It was a length delivery. He waited for the ball to come closer to the pad, got on top of the bounce, and just belted it past that fielder at point. Really good shot this from Khurram Chakwal to get off the mark with proper cricketing stroke. Absolutely, no need to hammer all the time. It was the width was offered and played it on the merit, deliberately lifted. And a lovely carved away to the offside. Goes onside this time.
And it goes for 4. Shah was very quick, but not quick enough. He has picked the gap beautifully. And it has gone for 4 more. Fast use of hands this time by Khurram Chakwalis. Was pitched up outside the awesome. He just whipped it past that fielder at long on. Shah thought he was there in business, but the ball just kept going up away from him and bounced just once before it touched the boundary ropes. It has been a great display of wrist work from Khurram Chakwal throughout this competition, especially today. Number of effortless shot and heavily relied on his super wrist work. Low full toss turned away to the onside. More runs. Chases on. Easily cut off on this occasion. It was a low full toss, once again looking to target the leg side region. Got it into the gap, but it couldn't get a boundary. It's 10 for 1 after the first over. DH Dabanggs now just need 32. Happy dugout, happy owner, Danish Khan. Side peaking at the right time. They started their campaign very well against Clifton Popular in the tournament opener, where Khurram Chakwal belted 37 runs against Farhad Abdali. They lost their way at the center. They lost few games, but now they are up and running, especially with the inclusion of someone like Abdul Qadir Abbasi and Zahir Kalia. Arif Shah is now going to be bowling the second over of the innings. He picked up 2 wickets in the previous one, but was a touch expensive, gave away 30 odd runs. The right arm finger spinner Syed Arif is also, he has also trouble a little bit and also got some hammering as well. Some interesting field placing. Goes for it to the onside. It doesn't matter. The fielder was down there, but it was long enough, high enough. Up goes the arms. Yeah, he doesn't have that much pace, Arif, to trouble the batter with. And if he's going to pitch the ball up at that length and at that line, he's going to travel to journey. Really good stroke this from Khurram Chakwal. Nicely played. He's found the gap beautifully. Once again, a brilliant boundary for Khurram Chakwal. Didn't try to hit too hard, just plucked the gap and outfield did the rest. Yeah, that was a really good looking shot. Once again, waited for that ball to come closer to the bat, and he got the room he was waiting for. Just opening his arms and finding the gap with precision, getting another boundary to his name on the offside. He's played some classical cricketing shots too. And just a block on this occasion. That is quite interesting and unusual. Yeah, it was a slower delivery. The ball was just slightly curling away from him. That's why he had to check his shot in the end. He goes for it to the onside. Should be maximum. Yes, into the stands. That's beautifully timed. Exquisite batting from Khurram Chakwal. Yeah, as soon as he struck it, you could hear the noise from the wicket keeper. Did not want the bowler to bowl in that region because Khurram Chakwal is going to hit you all day long. Once again, no real hammering, just pure timing and class from Khurram Chakwal. Goes for it, over the ring, should be a boundary. Now they need 12 to win this contest. He's unstoppable once again, Khurram. Really good looking stroke once again, giving himself room, move away from the line of leg stump, created that room and hit it comfortably up and over extra cover. We have seen some delightful cricketing strokes in this over from Khurram Chakwal. Turning out to be a comprehensive victory. Down the track, good use of the feet, and it has gone many a mile. Wonderful strike. Well, this was a full-blooded hit from Khurram Chakwal, coming down the track, using his feet and dismissed the ball out of the sides, not only of the bowler, but from the fielder at long off as well. Look at the bat swing. Got the perfect part of the bat and got the maximum result in his favor. Probably for the first time, he used his feet, got to the pitch of the ball, lofted beautifully, and now just a stroke away. DH Dabanggs. Yeah, he knew Arif does not have that much pace, so they can easily afford to use their feet. Something you cannot do to a fast bowler who is bowling at pace. Khurram Chakwal, what a form he is in. Got a half century in the first innings.
35 of 10. Akil Shah, meanwhile, is going to be bowling the third over, which can well and truly turn out to be the last over of the game as well. The net run rate will certainly jump up after this win. Plenty of balls to be bowled, and they are just 6 away. It's time for Salman to play the winning stroke. Full toss, go straight. Is it the winning shot? It is the winning shot. Half a dozen to Salman, and DH Dabanggs have won it. They have won it by 9 wickets, absolutely comprehensively. Yeah, this is carnage, absolute carnage from DH Dabanggs. They just needed 13 legal deliveries to chase down a target of 42, and they do it by 9 wickets. Comprehensive performance once again from DH Dabanggs. Khurram Chakwal, who was a hero with the bat in the first innings, once again scoring 35 of just 10 deliveries. And we saw Salman hitting a 6 of the last ball to finish the game off for DH Dabanggs. A convincing victory. This will definitely cement their place in the semi-finals race. And the campaign finally comes to an end for Johar Jawans. They couldn't win one game in this edition of Karachi Table Premier League Season 3. They were up against a very strong DH Dabanggs side in their last league game, and they have been absolutely hammered. They will be so disappointed, Johar Jawans. They had few moments, but overall as a side, they didn't step up. Few good individual performances, but certainly these performances were not good enough to earn a victory for them. In the end, the way they lost to DH Dabanggs, that really sums up about their game plan, about their overall ability, and the skill set. That's the highlights. That is how Chota Vicky got out first ball. Fantastic catch, running catch by Sharada, and then the show began. Khurram Chakwal smashed it over the infield deliberately. And the wrist work came, and Sharada wasn't quick enough. And then beautiful time to the onside into the stands. And nicely, he found the gap to pick up 4. And once again, beautiful timing over a square leg for 6 more. Up and over. And it went for 4, and lovely shot. Got to the pitch of the ball, launched it beautifully. And the final shot, full toss, put away by Salman for a big 6. That was a winning stroke. Yeah, it was just like a walk in the park for DH Dabanggs when after they managed to score 26 runs in that over of Arif. They just needed one big hit, and that came from the bat of Salman. Waqas went out very early in the innings of the first ball. Khurram Chakwal once again scoring 35 of just 10, and Salman finishing off the innings, hitting a 6 of the last ball to finish the game off for his side. We talk about the bowling effort. Well, just 3 bowlers were used. Sherry gave away 10 runs, picked up a wicket of Chota Vicky. Arif, look at those spell. 26 runs conceded in that opening over, and Akil was just allowed to bowl 1 delivery where he was hit away for a 6 down towards long off. So a comprehensive victory there for DH Dabanggs. Johar Jawans won the toss, decided to bat first, could only score 49 runs in the allotted 6 overs. In reply, DH Dabanggs scored 99, got a lead of 50 more runs. Johar Jawans in reply batted well as compared to first innings, scored 91, gave them a lead of 42. And in reply, DH Dabanggs just needed 13 deliveries to chase down the target with 9 wickets in hand. It's time for a short commercial break, and after that, we'll be back with the presentation ceremony.
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के 26th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और जहां जहां 84 कंट्रीज में जो हमारी ट्रांसमिशन जा रही है, आप तमाम लोगों को और जितने लोग भी यहाँ डीएचए मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। हमारी लीग का आज के दिन ये एक इजाफी मैच था कि जो दिन के वक्त खेला गया और अभी 2 मैचेस बाकी हैं जो डबल हेडर आप देखते हैं वो आपके लिए मौजूद होंगे। आज के मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए की दबंग अंदाज से आज सेमीफाइनल में एंट्री हुई, जिन्होंने जौहर जवान्स को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अपनी सीट सेमीफाइनल के लिए पक्की कर ली। वेरी वेल प्लेड डीएचए दबंग। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद है फाउंडर मेंबर ऑफ यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट द सेम टाइम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब। थैंक यू वेरी मच सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ डीएचए दबंग जो अपने टाइटल का दिफा करने के लिए बहुत ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं दानिश खान साहब, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन वकार हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच वकार भाई। उनके साथ प्राउड कोच ऑफ डीएचए दबंग मिस्टर नवाब आलम, नवाब भाई के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, एक ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर हैं। जबकि आज यहाँ जौहर जवान्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मर्दान के आरिफ शाह, जिन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग भी की, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लूजिंग टीम के कैप्टन सैयद नासिर को मदऊ करूंगा। नासिर आप आएंगे और हमसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम नासिर, सत्ते पे सत्ता हो गया, 7 मैच खेले और 7 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आई थिंक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है आपकी टीम के लिए। नसीम भाई बस कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, लड़के अच्छा खेल रहे हैं आपके सामने, फिनिश उस तरीके से हो नहीं पाता और पहले मैच से यही चलता हुआ आया, फिनिश नहीं हो पा रहा था। लड़के बहुत अच्छा खेले हैं, बस एंडिंग जो मूवमेंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके चक्कर में हम मैच लूज़ कर जाते हैं। ख़ास तौर पे सेकंड सीज़न में भी आप साथ ही थे, थर्ड सीज़न में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत बड़ा इदारा है डैल मुलर एंड फिप्स जिनकी ये टीम है, और थैंक यू वेरी मच हमारे सारे स्पॉन्सर्स का। लेकिन क्या कुछ लर्न किया और जो 4th सीज़न को आप किस तरह देख रहे हैं आप नासिर? बिल्कुल नसीम भाई बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा इवेंट है, हमने मिस किया। बस जो है सेमीफाइनल खेलना था, टीम भी अच्छी थी, खेल नहीं पाए और उम्मीद करेंगे कि सीज़न 4 में कमबैक करें और बहुत अच्छा गेम पेश करें। थैंक यू वेरी मच नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द नेक्स्ट सीज़न। क्योंकि अब जौहर जवान्स के मैच मुकम्मल हो गए। मैंने कहा जैसे हमारी तमाम टीम्स, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। पॉपुलर ग्रुप हमारे मेन बेवरेज पार्टनर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलर एंड फिप्स, डेल का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज इस मैच में खेल रहे थे, और डीके इवेंट्स दानिश खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डीएचए दबंग की टीम, ये सारे लोग एक बड़ी एफर्ट डाले हुए इस लीग के सिलसिले में। आज की विनिंग टीम के कैप्टन जनाब यासिर मुश्ताक, यासिर एक और फतह, और ये फतह ज़रा थोड़ी दबंग रही है आपकी, बिफोर सेमीफाइनल एक बहुत ही पावरफुल विन। जी सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, और लड़कों ने जिस तरह से एफर्ट की नज़र आ रहा था माशाल्लाह से टीम पूरी जेल होकर खेली थी, और विनिंग हमेशा टीम को लिफ्ट करती है, और सेमीफाइनल से पहले ऐसी जीत हम लोगों को ज़रूरत भी थी इस तरह की जीत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सेमीफाइनल में भी इस तरह का पेश करें खेल। देखिए अभी लियारी लेजेंड्स ने अपने 2 मैच खेलने हैं, जिसके बाद अभी टीमों का ही नहीं पता कौन सी टीम सेमीफाइनल में होंगी। आप पहुंच गए सेमीफाइनल में, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे अगर एक दिल करे कप्तान का कि मैं इस टीम के खिलाफ सेमीफाइनल खेलूं तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो कौन सी टीम? नसीम भाई ये तो अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, इन और आउट अभी डिसाइडेड नहीं है, मगर हम लोगों की प्लानिंग सबके खिलाफ है, किसी से भी मैच पड़ सकता है, तो मेंटली हम लोग सब टीमों के लिए तैयार हैं। जो भी टीम आएगी हम लोग कोशिश करेंगे उसके खिलाफ अच्छी प्लानिंग करके अच्छा मैच फिनिश करें अच्छे नोट पे। दैट्स द स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच यासिर मुश्ताक। कोई भी टीम आए मुकाबले के लिए तैयार है, और ये यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल की तमाम टीम्स ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस देती हुई भी दिखाई दी। आज के मैच में अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, जिनमें अगर खुर्रम शहजाद 57 ऑन 20 बॉल्स, 6 4s, 4 6s, मोहम्मद उमर 29 for 4,
शाह रजा 31 ऑन 13 बॉल्स, लेकिन एक प्लेयर के जो दूसरे मैच में मुसलसल तौर पर उस्ताद दिखाई दिए और कमाल की परफॉर्मेंस उनकी रही। पहली इनिंग में 2 ओवर 6 रन, 2 विकेट और 4 विकेट उन्होंने अपने दूसरे 2 ओवर्स में हासिल की। कोई और नहीं, उस्ताद ज़हीर कालिया। जो आ रहे हैं ना, आइए ज़हीर साहब, पीछे से आवाजें आ रही हैं, क्या बात है उस्ताद जी, जबरदस्त। तो एक उस्ताद का अपना आपका एक दर्जा है, अगर मैं बात करूं ज़हीर साहब, इस KTPL में या पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में इसको कितना एंजॉय करते हैं और कितने शागिर्द अब तैयार हो रहे हैं आपके? काफ़ी शागिर्द तो काफ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सारे दोस्त जितने भी हैं रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरी तो कोशिश होती है जो मुझसे कितने भी लड़के सीख लें तो अच्छी बात है, उनके फेवरेट के लिए अच्छा होगा। बाकी KPTL आगे उसमें आके मुझे KPTL जो खेल रहा हूँ तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, और जहाँ जो मौसम है यहाँ का है, जो टीम्स है, वो ग्राउंड्स है, मुझे तो बड़ा इंजॉय वाला सीन नज़र आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खेलने का। ज़ेबी, ख़ास तौर पे जैसे आपने बात की UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की, आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो अब आप रिमेनिंग मैचेस में किस तरह देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह, जी हमारा टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बैटिंग में भी बॉलिंग भी, और इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचेगा और इंशाल्लाह फाइनल विन करेंगे इंशाल्लाह। आपकी टीम वैसे आपके कादिर कश्मीरी के आने के बाद, सरदार के आने के बाद वैसे ही बहुत मजबूत हुई है। विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और आइए कि आप ट्रॉफी के लिए आएंगे द वन एंड ओनली फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, सादिक मोहम्मद साहब ज़हीर कालिया को ट्रॉफी देते हुए, और उसके बाद वकार साहब आप आगे आएंगे। और जनाब ज़हीर साहब, ये आपके लिए विन बोनस मैन ऑफ द मैच। नवाब आलम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे आएंगे और बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल, उनका जो गिफ्ट है वो जाएगा आज के मैन ऑफ द मैच ज़हीर कालिया। थैंक यू वेरी मच ज़हीर कालिया, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग मैचेस। और बेस्ट कैच ऑफ द मैच और गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम ओसाका लाइट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों दानिश खान साहब टीम ओनर एंड रिप्रेजेंटेटिव, आरिफ शाह साहब आप आगे आएंगे, और ओसाका लाइट्स का ये गिफ्ट हैम्पर बेस्ट कैच शाह रजा। वेरी वेल डन। और अब जो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जिसे UBL अमीन स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका जो खास फैन ऑफ द मैच अवार्ड है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे सादिक मोहम्मद साहब, दानिश साहब आप आगे आएंगे, और फैन ऑफ द मैच अवार्ड देने कौन आ रहा है? डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, और अवार्ड जा रहा है अब्दुल समद। डॉन आ चुके हैं मैदान में अपनी मखसूस बाइक पर। ये विक्ट्री देखें डॉन की। अब्दुल समद आपको बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, एंड थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद साहब, दानिश साहब, वकार साहब, नवाब आलम साहब एंड आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, क्योंकि अब फौरी तौर पर सेकंड मैच का टॉस रेडी है कि जहां पर लियारी लेजेंड्स सामना कर रही है हमारे बेवरेज पार्टनर क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम के खिलाफ। एक ब्रेक, फिर दानिश अनीस आपको टॉस पे ज्वाइन कर रहे हैं।
All right, ladies and gentlemen, welcome back once again to DHA Sports Club, Moin Khan Academy, where we are ready for match number 2 of 3 for the day here in season 3 of UBL Amin Karachi Table Premier League. I bet you're enjoying all the matches. Let's move on towards the toss for game number 2. We have both the captains here with us. Now, let's not forget, this one is to be played between Lyari Legends and Clifton Populars. I have both the captains here with me. Leading Clifton Populars is the captain Asad Shah. Leading Lyari Legends is the captain Ashraf Pathan, along with match referee Naeem Ahmed. Who has the coin? It's Asad Shah who has the coin. Asad, let's flip it. Badar Expo is the call. It is Badar Expo. Badar Expo it is. Ashraf Pathan ने टॉस जीत लिया. अशरफ, क्या करने का फैसला किया है? जी हम पिछले 3 मैच फर्स्ट बैटिंग से ही जीते हैं, तो हम आज भी बैटिंग करने जाएंगे. आज थोड़ा सा आपके लिए कहानी में ट्विस्ट भी है. लगातार 2 मैचेस आपने खेलने हैं. क्या लगता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज्यादा थक जाएंगे? वैसे सारे फिट हैं आप माशाल्लाह से. नहीं, लड़के सारे फिट है और ये मुश्किल होता है क्योंकि ये हम मतलब 2 मैच नहीं खेलेंगे. अगर हम टेप बॉल की बात करें तो बैक टू बैक 4 मैच खेलने पड़ने, क्योंकि डबल इनिंग्स है. तो मुश्किल ज़रूर होगा. और आगे साइड भी तगड़ी साइड जो टूर्नामेंट की है, उनसे आज हमारा टाकरा है, तो कोशिश करेंगे कि अच्छे रन करें. और टूर्नामेंट में अभी तक माशाल्लाह से आप जिंदा हैं, आपके पास चांसेस हैं. ये दोनों मैचेस जीते तो आप सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं. दोनों मैच जीते तो फिर तो ऑलरेडी हम क्वालिफाई कर जाएंगे. अगर हम एक मैच जीतते हैं तो फिर रन रेट वाली कहानी आएगी. तो हम कोशिश करेंगे कि रन रेट पे ना जाए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर है. अशरफ पठान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. असद शाह, आ जाइए. क्लिफ्टन पॉपुलर्स ऑलरेडी नेट रन रेट पे थोड़ा हाई है, तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं. उसके बावजूद आपकी कोशिश होगी ये मैच जीतकर बिल्कुल पक्की कर लें अपनी जगह. जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन कोशिश करेंगे मैच फिनिश करें, क्योंकि आपको पता है मैच हार जाएं तो फिर आगे के मैचेस में मोरल डाउन हो जाते हैं. कोशिश यही करेंगे अच्छा खेलें और ये मैच भी जीतें. कोई चेंजेस किए हैं टीम में? जी एक चेंजिंग है, मंसूर खेल रहे हैं दानियाल की जगह. बहुत शुक्रिया आपका. बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच Asad Shah. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Lyari Legends have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
दुनिया को दिखा दे अपना हुनर कुछ बांध कमर कोई ना हो डर यह टैप बॉल का जोश और जुनून जो होगा वतन में अब घर घर हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले 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 चांद सीने पर सजा और सितारा दिल से लगा गेम तू अपना उठा जीत का नारा लगा हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले ललकार से रफ्तार से हर बार से ये ललकार से रफ्तार से हर बार से ये ललकार से दिल जीत ले 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 ललकार से दिल जीत ले रफ्तार से दिल जीत ले हर बार से दिल जीत ले Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and good evening to you people wherever you are in the world. We are live here yet again for match 27 where Clifton Populars are up against Lyari Legends from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi. It's going to be another thrilling contest as both of the sides are very well served and they have shown in their last encounters that they are well made and fully up to it for the challenge. These are the two umpires making their way to the center to officiate this particular match. And with me is Danish Hussain and Sibtan Raza, the umpires. And with me is Rana Ishfaq. Good evening, Rana. Good evening, FS. And there you see the Clifton Populars. They are taking the field. As you rightly mentioned, both teams are very strong candidates of top four. Clifton Populars sitting on the second position at the moment with 8 points. Lyari Legends will look to get a couple of precious points tonight. And there you see the two openers. Lyari Legends didn't start their campaign well, but then they made a very good comeback and won a couple of games in a row previously. Yeah, a little while ago, both of the captains were there in the middle with our colleague Danish Anish. And the news from the center was that Lyari Legends have won the toss and opted to bat first. Have a look at the two sides. Clifton Populars, Asad Shah the captain, Fahad Alam, Tahir Pindi, Umar Bajwa, Arfan Nana, Haq Nawaz, Mansoor, Kamran Lefty, Farhad Abdali, Imran Mehru, Arbaz, and Lyari Legends, Ashraf Pathan the captain, Rana Mohsin, Kari Hamidullah, Hassan Painda, Sohail Lefty, Nizar Ali, Ahmed Kulfi, Syed Bilal, Abdul Salam, Dawood Suleiman, and Zohair Nasir. And if you talk about Zohair Nasir, he has taken a couple of blinders so far in this tournament. He has fielded tremendously well. Of course, the chairman of the UBL Amin presents KTPL Season 3, and he has put a phenomenal effort in every aspect of this cricket. He loves cricket,
and loves to be part of this game, which is always good to see. Absolutely, he's very enthusiastic as well. And he has taken the play ball cricket to the next level, I'm very sure. It will be a huge responsibility on these opening batters from Lyari Legends to provide their team with an aggressive start. This is what they will be expecting. It's a clash of titans and start will be a very, very important for both the sides. Bowling side would look to break through in the first over, while the batting side would look to score swiftly, as quickly as they can. You're talking to Danish, and he said the toss captain was saying Ashraf Pathan of Lyari Legends, Kari Hamidullah the opener, that we won 3 of the last games by batting first, and this is the ploy we're going to apply in this match too, and this is going to help our cause. Let's see what happens. Nizar Ali, the left-hander, left-hand, right-hand combination at the top of the order, always helpful if they get going. Nizar got a 50 under his belt as well. Imran Mehru going to start the proceedings. Yeah, he's the spinner. Argue. Here we go. It's match 27 and we are all set. The players are just about to get ready. Tightening his shoes first. Imran Mehru, the bowler. It is a rarity that spin bowler opening the bowling, although it did earlier as well, but we haven't seen too many spinners, particularly when it comes to opening the bowling in trade ball cricket. Yeah, but he's been one of those rare players who has been opening the bowling, and he's been good. He's been okay up till this point. No doubt about that. But he bowls a full toss this time, and it's a welcome to the bowling crease by Hamidullah. 6 to start. Kari Hamidullah straight away got into his class act, although that was there to be put away, and that's exactly what he did. He went down on one knee and then gave it a tremendous go over mid-wicket. Good start. Swing and a miss this time, and it will be a wide. Bowler didn't look happy though with the decision of the umpire, but umpire extended his arms and a couple of more runs for the batting side. Every run does have a count. Every run is very precious. This is a big game, can tell you that. Down he comes and misses the ball altogether. I wonder if that was a carom ball. He put his dancing shoes on, the Kari Hamidullah, but missed that one by all means. Wicketkeeper standing bit back. Had he been up, that would have been stumping as well. Oh, was there a nick? I get the feeling that was a catch. Keeper didn't even try to take that. Imran making the ball to talk a little bit. He got some variations. Zohair Nasir is on your screen with his companions. This is the dugout of Lyari Legends, the happy dugout, because now they're winning games and winning them regularly. While Clifton Populars not putting any foot wrong. Particularly Fadmiya Chanu is in a terrific form. Down the leg side, we'll have to re-bowl that. This is going to be a tester for this spinner. Left hand, right hand combination always tests the bowlers with the lines. Fad is the leading run getter so far in this event, isn't he, Falak? He is, to this point. This is terrific. He's in terrific form. This is a big swing, and he's got the connection all right. It's a first 6 by the left-hander, and it's a good one. Typical left-handed, leg-sided swing. He swung that one away.
Picked that one, went down on one knee, and that was a colossal hit. Great to watch. He goes again. Another one. 2 of 2. That's even bigger. That's landed on the second tier. Imran has come in for a bit of stick. He's getting some pounding off the bat of Nizar. Nizar goes up to 12. He's in a relentless mood. You were mentioning before, Rana, that he has had a 50 under his belt in the last game. He's in very good touch as the left-hander and making use of his form to good effect here. Nicely worked away on the onside. We'll look for 2 here. We'll have to hurry. You have to hurry. Wisely sent back by his partner. So single they will manage of the last ball. 24 without loss of wicket after the first over. Lyari Legends. They deployed Imran on the first over, but it didn't work, I reckon, for Clifton Populous, because Nizar did read him pretty well. And it did hit him pretty well. 24 of the first over. So good start for the Lyari Legends. And they will have to keep playing like this if they want to score big. Well, at times I get the feeling, Rana, that they're taking a gamble having quality players in their sides. The seamers I'm talking about. Won't say seamers, the fast bowlers, because tape ball doesn't have any seam on it. Thank God, you got it right finally. Irfan Nana is a well-known bowler of late in tape ball circuit. And he's been performing brilliantly for the last couple of years. This time it's in the air. It's a miscued one. Oh, my word. Tahir Pindi was the fielder, and he didn't even get closer to the ball. Would you believe that? There you see it again. Hit that one in the air. Didn't get really hold of that. It was in the air for a long, long while. And fielders didn't even try to get closer to the ball or get under the ball. Lost it in the dark sky, did Tahir Pindi, the fielder, on that occasion. But they need to get underneath those and need to grab them as well. They are to come back because it's been a very good start so far by Lyari Legends. He goes for the massive shot but doesn't connect. And this time it's Farhad Abdali who doesn't make any mistake. And look at the celebrations. They are relieved, Clifton Populars. Irfan has drawn the first blood. Watch that again. That was just a bit outside the off stump, and batsman tried to put that away outside the boundary. He top edged that one, and that was in the air for a long, long time, and fielder didn't make any mistake. Nizar is gone for 15. 26 for 1 is the score. I get the feeling they heard us, Clifton Populars. It was a good start by Lyari Legends. They needed to come back, and they came back with some style. It was a very good catch taken by Farhad Abdali. Hassan Painda came out to bat at number 4. He's also a well-known cricketer, comes all the way from Lahore. But he's appearing for the first time, I get the feeling, in this tournament. What does Pender refers to? Those typical nicknames of these cricketers. Full toss, and he will be away with the single. It was very nice to see him. Somebody glancing the ball in the trap ball. Zohair Nasir again having a philosophical look on his face. Not quite sure what he's pondering about. Well, you're talking about the leg glance. Necessity is the mother of invention.
if you feed them there, if you bowl with that line, you will get that type of strokes, Rana. But still, usually they don't play these strokes. Even you feed them there, but that time around, he did glance that one. Yeah, normally they're made of those big blooded heaves. Just see the ball and hit the ball. This is their coaching menu. What I have assessed. Absolutely spot on. Because they, most of the time, they look to hit sixes. Even they don't try to hit too many boundaries. Because this is what this game is all about. You got to hit boundaries and got to hit over boundaries. Yeah, but there have been a couple of players, I can tell you, Rana, who've been trying to go according to the merit of the deliveries, trying to produce those strokes, those orthodox strokes in Khurram Chakwal and Fahad Mianchanu at times. Agreed. Yes. And it is always good to see a six-hitter hitting some fours as well. Nicely ball squeezed away through the legs, through the offside, and will be a couple, easy couple to the batter. And as the great Javed Miandad was mentioning in our commentary box, that they're going to extend the numbers of overs, or number of overs in upcoming events. It's going to be 10-10. It's going to be T10. And 10 overs for per innings, and there will be 2 innings match as well. So it's going to be 40 overs competition next year. Inside edge again. It was a little French cut, as they call it, to end the over. 2 done. It's 31 for 1. Lyari Legends. There is a mascot. Oh. Popular milker. Who's that? Do you know it? How can I know it? Okay, I know him. Oh, my word. It's entertaining stuff. UB Lamine, KTPL Season 3. It's been entertainment throughout the course of the 14 days that we have had so far. Amazing stuff. No doubt about that. And here comes the signal for the second power play. Farhad Abdali will start the over number 3. And now the captain of Popular can have 4 fielders outside the 30 yards ring. A touch late, he's been introduced into the attack. He's one of their main bowlers, and he's been amongst wickets as well. We witnessed in the last encounters. Yes, because they took a gamble on Imran. That's why he's bowling the over number 3. Losing his run up there. The batter didn't like it. But in game of cricket, still I think a good captain needs to take gambles, particularly on his bowlers. That's what the Popular's captain did, although it didn't work. Yeah, very good point you made, Rana, because you need to keep on experimenting for the times coming in the future. You know, you got to know your weaknesses. You got to observe your strengths at the same time. And by taking gambles, you can do that. This time it's an outside edge, and this time it's been taken at short third. Catching has been good in this innings at least. Farhad comes and gets a wicket. Hassan is the one who is going to be out after this catch was taken. So they have seen the back of Hassan straight away, the Farhad Abdali. Well done by him. He's gone for 4, 31 for 2. Couldn't have that much impact which was expected by somebody like Penda. He has some reputation with the bat, but couldn't prove a point here. Credit to Farhad Abdali for getting that scalp. It is always a
big confidence booster for a bowler if he gets a wicket on the first ball. Now he's got his tail up. His confidence will be sky high. Daud Suleiman is the newcomer. Tell you what, this lad has been in a very good touch as well with the bat. Daud mistimes it, but it doesn't carry to that fielder at long on. Fahad Miachanu was the fielder down there. They got 24 in the first over, but after that, I think the bowlers have made a very good comeback. Second over gave them just 7 runs, and Farhad in this over has bowled a couple of balls for just 1 run and a wicket. And have a look at that, play and a miss. He's their premier bowler, and he's definitely making his presence felt here. He's hitting the good lines and good lengths here. That was a very good ball. He bowled that one just a bit outside the off stump, and that one took off a little bit as well. And it had a good carry, almost had a steep bounce towards the keeper. And again, have a look at that. It's a typical tennis ball bounce, but he's definitely bending his back, is Farhad Abdali. Yes, he's putting a lot of effort and doing a great job for his team, drying up the runs, trying to get the batsman out of his comfort zone. So Farhad is doing a wonderful job so far in this over. Let's see how he finishes. This time it's a connection. It's Hamidullah who's got one in the middle of the bat, and there you go. It's half a dozen the result. Over square leg. Yes, you can't keep these batters quiet for a long time. That one pitched fairly back. Oh my God, after bowling few very good balls, he made the Cardinals in. That was a half tracker, and it got punished. Yeah, it was way short, and he became predictable as well with that length, I would suspect. And this time it was Hamidullah who has taken full toll. This time another play and a miss went across. Dot delivery to finish the over. 3 done. It's 38 for 2. Lyari Legends winning the toss and opting to bat first. With that, we are going to have a change in the commentary box. It's going to be Kainat Imtiaz with Zishan Khalid. Thank you so much, Falak. And yet another game, exciting game of cricket going on at DHA Moin Khan Cricket Academy. "38 for 2, Lyari Legends. They will be aiming for that win in this game as they want to become one of the semi-finalists. It's a good thing they have another game ahead as well. Won't be easy as back-to-back games are always hard. But again, they'll try their best. On screen, we have Hassan Raza, ex-cricketer of Pakistan, enjoying Clifton Populars bowling at the moment. All right, it's 38 for 2, still having 3 overs remaining. Lyari Legends. Qari Hamidullah still out there at the crease. Nizar Ali, who has been batting really well in recent times for Lyari Legends, has been dismissed, the left-handed opener. Imran, meanwhile, to continue with his second over, was a touch expensive in that opening over, but he gave away 24. They're going for a run, and they managed to pick up a leg bye. Could have been an opportunity for a run out, but they still scamper their way for a leg bye. Lyari Legends are playing back-to-back games tonight. They will be itching to get 2 victories so that they can cement their place in the semi-final spot. It's a leading edge chance for the bowler himself. Imran is going to take it.
Once again, another wicket has gone down for Lyari Legends. Qari Hamidullah just not timing that sweep shot whatsoever, ending up giving a dolly of a catch to the bowler. Hamidullah could have done better, didn't time the ball right, and it was a top edge by Hamidullah and an easy catch in the end by the bowler. Even though he wanted to make it difficult, but an easy catch. Hamidullah went for 14 on 9 deliveries, 39 for 3. Lyari Legends. Really good start this from Imran, specifically in this over. A leg by and then a wicket, that too of Qari Hamidullah. In walks Ashraf Pathan, the captain of Lyari Legends. And he needs to deliver now for his side. Big heave on the leg side, looks like he has got plenty on it. What a connection. First ball has been deposited into the stands on the leg side. Full toss towards the leg side. Of course, it had to be put outside the park, and that's what he did. Not exactly on the leg side, but yes, on the middle stump. Once again looking to play that similar stroke, this time not connecting it. You could see the dismissal of Qari Hamidullah. He was not at all comfortable while looking to play that sweep shot. That tells you that they are not naturally good sweepers of the ball, because they don't get to play spinners that much in tape ball cricket. Shot asking to be hit, getting the elevation and the distance. Another 6 this to the captain. Not good bowling from Imran. Well, Imran will have to get back to his focus. Yes, yet another short pitch of a delivery and a good shot in the end towards mid-wicket. All the hard work is being undone with those 2 maximums coming from the bat of Ashraf Pathan. He'll be breathing a sigh of relief as well. That was a gentle loosener. Shot again. It's flat, it's hard, it's long, and that's going to be yet another 6. What a start this is from the captain. 3 sixes in the over. Rightly picked. I would say this is a good pickup shot by the batter. And again, used all his power and put it onto the bat to hit that 6 over square leg region. A very good way to end the over with. 4 overs done. It's 57 for 3. .57 for 3. We saw the Ashraf Pathan, the captain, hitting 3 maximums in the previous over. They will be looking to build on from this momentum. So here Nasir clearly watching this game. He wants 2 victories from his side. Dawood is on strike. Irfan is going to start his second over, the left arm seamer. Starts off with a length delivery that has been picked down the leg side, but there is a fielder out there at backfoot of square. Farhad Abdali is going to throw the ball back to the wicketkeeper. Now, we haven't seen a fielder in that region in previous matches, but now the fielding side realizes that both these batters are predominantly strong in the leg side region, so they have to patrol that side of the boundary. Well, it's important to bowl according to the field, and the bowler Irfan is doing good so far and making all use of that fielder on the boundary. Full toss. Might be given as a no ball. It's going to go all the way for 4. We'll have to wait for the umpire signal. Yes, the left arm is aloft. Not only it's a no ball, but it's a boundary as well. 6 more added to the total, and they're going to get a free hit. Lyari Legends doing it good for the team.
And yes, a full toss, a juicy full toss pulled away towards the boundary. And yet another free hit delivery. Let's see if we can see a 6 on this ball. Short again, just missed out. This time it was an attempted bouncer by Irfan. Couldn't get any connection whatsoever, Ashraf Pathan. Now they have taken 3 fielders on the boundary at the leg side. They have got a fielder at fine leg who's pretty square, a fielder at mid wicket, and a fielder at square leg. These are the tapes that are being wrapped around the tennis ball, which is being used in KTPL Season 3. It's a specially designed tape. Oh, that was a good ball. Don't think there was any connection whatsoever with the bat. That might have hit the boot. Or did that? No, it didn't. Osaka cricket tape specifically being designed for this Karachi Table Premier League Season 3. We had a day game earlier as well, and I was hoping that we can see a red tape being used so that it becomes easier for the fielders and the bowlers to side the ball. Slightly shorter once again, but it's going to go straight to the fielder at fine leg. Well, it's not hard to see a white ball in during the daytime. We play white ball cricket during the day and it's completely okay. Ask those fielders who drop the catches. They'll be coming with all those excuses that they couldn't side the ball was too hard, or it was swirling in the air. Slightly shorter, slapped it straight towards the fielder at long off. He's timing the ball well so far, Ashraf Pathan. Needs to connect well as well. Good comeback by Lyari legend so far, 67 for 3. One more delivery left in the 5th over. They have a run rate of 14.75 at the moment. Another bouncer attempted. We'll have to wait for the umpire signal because he has already bowled a bouncer in this over. That was a free hit. There you see the umpire signaling it as a wide now. So far so good for Lyari Legends. They still have an over remaining after this one. They will be eyeing somewhere between 85 and 90 the first innings score. But you can expect anything from Clifton Popular, especially the way their openers have performed in this tournament. They can even go past 120. Another full toss. Tried to hit it a little too hard, but it was a slower delivery. Looking to come back for the second run. There is a throw at the bowler's end. Irfan just couldn't collect it. It could running between the wicket and I would say a very casual throw. The batter was able to finish the run. 71 for 3 after 5. That's a beautiful trophy all these 8 sides are playing for. The 2 sides have already been eliminated. Johar Jawans and Karachi Knights. Who would lift a trophy at the end of the tournament, Kainat, regarding the performances that we have seen so far? I know your favorites are DH Dabanggs, but apart from them. Well, not DH Dabanggs, but we have a lot of good contenders for the trophy. And Malir Malangs have been doing quite well. DH Dabanggs, Clifton Populars. And let's see if Lyari Legends make it to the semi-final and we can have another contender for the trophy. Mansoor, left arm fast, bowling the last over of the innings. Outside edge and taken. Well, that was dying to the wicket keeper, Umar Bajo, behind the stumps. Still managed to take it. Well, he didn't move at all. It was just the body which went forward for the ball. Again, he is standing too wide. And yes, he was expecting the ball to come to him. But in the end, a good diving catch. At least his foot was there, right on the position. So it's a good thing that at least his mind is working and a good catch at the end. And not having a good time with the bat, Umar Bajo, but has taken a really good catch diving forwards. Ashraf Pathan still waiting for the umpire to confirm it, but that was a clean catch. It was taken well above the ground.
A wicket of the very first ball to Mansoor. Ashraf Pathan's cameo comes to an end. 23 of 9 for the captain. It's 71 for 4. Four wickets have gone down for Lyari Legends. The latest casualty being the captain Ashraf Pathan, who was taken by the wicketkeeper behind the stumps. And in walks Rana Mohsin. He's a very hard hitter of the ball. Will have a role to play in the second innings with the ball in his hands as well. But now he needs to make sure that they utilize the remaining 5 deliveries of the innings. They will be eyeing somewhere between 85 and 90 to have something to play with in the second innings for the bowlers. Good start meanwhile by Mansoor, picking up a wicket of the very first ball, that too of Asad Badar. Slightly wide outside the off-stump. I think it was a legal delivery. Rana Mohsin just asking the umpire, but it was well within the guidelines. It's always hard to play the ball that's going away from you, and his action is completely showing that results, as he's pulling away from the batter, and only the batters who play on the merit of the delivery can actually face these kind of deliveries. Full toss, thumps it down the ground all the way for a maximum. That's a good connection for Rana Mohsin. If you bowl in the middle on his body, definitely you're gonna get hit, and it was a straighter delivery. And of course a full toss, and timed it really well towards the straighter boundary. Since he's a fast bowler, so he's got all the strength to hit those sort of deliveries out of the park. Squirts it away, but couldn't get it past that fielder at cover. He's deliberately bowling it outside the off stump. We have seen in recent times that as well in professional cricket, whenever the fast bowlers are being hammered by the batters, they try to bowl outside the off stump so that they can stay out of the reach of the batters. How many times have you tried that, Kainat? Well, it's important to bowl outside off stump because in a limited over game, you need all those kind of strategies. Slower one, picked up, it's up, and it's over. Really good hit this from Dawood. He was waiting for that slower length, and as soon as he got it, he had no hesitation in dismissing the ball out of his sights. A fuller delivery again by the fast bowler. He was doing well bowling outside off stump, but again in the body, and put it outside the park by the batter. A great shot in the end. Now he needs to connect one more. It's the last ball of the innings. They are at 84 for 4. It's going to be a wide. This time the plan not working. 2 more added to the total. Not always that you can be accurate, and because it's a hard delivery to bowl. The 2 hard deliveries to bowl outside, completely outside off stump, and one is the wide line Yorker. They're very hard to deliver with perfection. And so far Mansoor is doing a good job, but a wide in the end for Lyari Legends. Now he doesn't want to come around the wicket. He doesn't want to bowl into the legs of the right-handers. It's pitched up. Once again, Dawood has deposited that over long on for yet another gigantic 6. And a perfect way to finish the innings. 3 maximums coming in that last over of Mansoor. Lyari Legends have put up a very good score. They have managed to score 92 runs for the loss of 4 wickets, courtesy of some cameos by Dawood and their captain towards the end of the innings. Again, a fuller delivery, and that too in his region. Exceptionally putting it through the line towards the long on boundary and getting that ball out of the park. An excellent shot in the end. This is what Lyari Legend needed. It's 92 for 4 and 6 overs. Lyari Legends has a very good chance to get a lead in the next innings too. Yeah, definitely. 92 runs is definitely what the captain was also looking for when they won the toss and decided to bat first. Clifton Popular also are going to take it.
They have done some really good hitting towards the start of the order. Their openers, Asad, Shah and Fahad Mia Chunnu, who have been simply outstanding with the bat, and they will be hoping to get a healthy lead here in the first innings as well. But talking about Lyari legend, but they have got some excellent bowlers as well, Rana Mohsin being one of them, who have bowled really well. He's one of the leading wicket takers of the tournament. That's how they started off their innings. Qari Hamidullah and Nizar Ali scored 20 odd runs in the first over, 24 in fact of the first over of the spinner Imran. Nizar Ali was simply outstanding against the spinner, but then he lost his wicket, skying up in the air, and a chance taken by the fielder Farhad Abdali. So many catches have been put down of his bowling. This time the fielder making no mistake. Qari Hamidullah tried to stay there for quite a bit of time, but even he was dismissed when looking to play that sweep shot, and the bowler taking an easy catch on his follow through. Ashraf Pathan, the captain, came out, struck 3 maximums in the over, and he was looking to score a big innings tonight. Scored 3 maximum in that over, but couldn't really utilize the start that he got. A very good take by Umar Baja behind the stumps. Then came Rana Mohsin, who also struck a full toss down the ground, and then it was Daud who managed to hit 3 sixes in the last ball of the left arm seamer, which allowed Lyari legend to score 92 runs in their allotted 6 over for the loss of 4 wickets. They will be happy with the effort with the bat. Now it's up to the bowlers. There you see Hamidullah and Nizar Ali once again came out to open the innings, scoring 14 and 15 respectively. Daud scoring 17, Ashraf Pathan, the captain, being the top scorer of the innings with 23 of 9. And if you talk about the bowling effort, Imran started the proceedings, went for 42 in his 2, pick up a wicket. Irfan, Farhad and Mansoor also picking up a wicket each. The Clifton Populars, when they will be coming out to bat in a while, will be needing to score 92 runs first, and then to add a little more to the lead. It's a Jio Super production in collaboration with NetSat. This UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3, which is now entering into the final stages, and the contests are getting even more exciting. To talk you through to the start, from the start of the next inning, is going to be Rana Shfaq, along with Syed Falak Sher. बहुत शुक्रिया ज़िशान खालिद। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ रहा है उसकी दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है, और इसी के साथ ये दोनों ओपनर्स क्लिफ्टन पॉपुलर के अब मैदान में जा रहे हैं। बड़े अच्छे फॉर्म में हैं, बड़े अच्छे रन्स कर रहे हैं ये ओपनिंग बैट्समैन, और दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी टीमें हैं, और ये मुकाबला बहुत अच्छा मतवक्के है, क्योंकि 92 रन्स यहाँ पे स्कोर करने में कामयाब हुई है लियारी लेजेंड्स की टीम, और 100, 110, इवन 90, 92 एक बेहतर स्कोर तस्वर किया जाता है पहली इनिंग्स में। और मेरे साथ मौजूद हैं फलक शेर, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया राना इशफाक। जिस तरह आप बात कर रहे थे, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज असद शाह और फहद मियां चन्नू, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी इनकी रही है। फहद मियां चन्नू तो लीडिंग रन गेटर हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा लियारी लेजेंड्स के लिए इन दोनों से अर्ली जान छुटकारा हासिल करना, फिर जाके मैच में वापस आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो चाहते हैं कि उनको लीड मिले इस 92 रन बनाने के बाद, तो फहद मियां चन्नू और असद शाह से जितनी जल्द वो छुटकारा हासिल कर लेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें पॉपुलर्स के, वो ये चाहेंगे कि दोनों बैट्समैन कंटिन्यू करें तेज़ी के साथ। असद शाह जो है वो पहुंच गए हैं स्ट्राइक के लिए, उनके साथ फहद मियां चन्नू हैं। राना मोहसिन बॉलिंग करेंगे, काफ़ी डिसेप्टिव हैं, इतने ज़्यादा तेज़ नहीं हैं लेकिन चालाक ज़रूर हैं, और काफ़ी हद तक बल्लेबाजों को इन्होंने परेशान किया है। जी हाँ, चालाक होना बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मेट में आपको, क्योंकि अगर आपके अंदर वेरिएशंस नहीं होंगी, आप अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, फिर बड़ा मुश्किल है कि आप सरवाइव कर सकें एज बॉलर इस फॉर्मेट में और टेप बॉल क्रिकेट में। राना मोहसिन ने अब तक काफ़ी मुतासिर किया है, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। असद शाह स्ट्राइक पर हैं, पहली गेंद आने को है इस दूसरी इनिंग्स की। राना मोहसिन असद शाह के लिए, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर बीट हुए,
फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर विकेट कीपर के पीछे, वरना ये 6 रन होते, लेकिन 2 रन फिर भी हुए हैं। यकीनन इनके हाथ से छूट गई होगी ये बॉल, क्योंकि इस लाइन पर डालना कतन नहीं चाहते होंगे। मिस फायर किया है, बड़ी वाइड। जी हाँ, केले खाने में मसरूफ़ हैं पॉपुलर्स के खिलाड़ी, अपने आप को कुछ एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी इस इनिंग्स में उनको बैटिंग भी करनी है, फिर अगली इनिंग्स में फील्डिंग और बॉलिंग भी। इस गेंद का ड्राइव किया, बड़ा खूबसूरत ड्राइव, और गेंद दनदनाती हुई बाउंड्री से बाहर, 4 रन। लीजिए जी, कवर ड्राइव के साथ आगाज, और ये टेप बॉल है। आप केविन पीटरसन, विराट कोहली, जिससे मर्जी तशबीह दे लें, ये अलोंग द कारपेट बहुत तेज शॉट खेला है, प्लीजिंग ऑन द आईज। बिल्कुल इस बात में कोई शुबा नहीं कि गेंद घास के साथ रगड़ खाती हुई, बाकायदा एक लेदर बॉल का इसमें लुत्फ था इस स्ट्रोक में, और गेंद बाउंड्री से बाहर गई डीप कवर्स पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट असद का। लेग स्टंप से बाहर राना मोहसिन कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और ये दूसरी वाइड इस ओवर में, यानी 4 रन वाइड के कंसीड कर दिए, और एक बॉल जो लीगल हुई है उस पर उनको कवर ड्राइव पड़ा है चौके की सूरत में। जी हाँ, राना मोहसिन को ये भी पता है कि असद शाह के पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके अगेंस्ट बॉलिंग करने के लिए आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ेगा, और कभी कभार जब आप ये जहन में सोचते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ प्रेशर भी बढ़ता है। इस गेंद को ऑन साइड में हल्का सा वर्क किया है, स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास गेंद को फील्डर ने रोका। असद शाह टेक्निकली भी वेल इक्विप्ड हैं, इसका अंदाज़ा इस स्ट्रोक से भी हुआ और कवर ड्राइव से भी। हसन रज़ा बड़े हंसमुख हैं, हमेशा बड़े प्रेजेंट मूड में रहते हैं। यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने 14 साल और 227 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और अच्छा खेले पाकिस्तान के लिए। कोई 15 वनडे इंटरनेशनल्स और 7 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इन्होंने। एग्जैक्टली। राना फाहद को ये गेंद जो कि लेग स्टंप से एक बार फिर बाहर है, फिर वाइड के रन। ये अनलाइक राना मोहसिन बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अनलाइक हिमसेल्फ, क्योंकि जैसी बॉलिंग अभी तक इन्होंने की है, ये आप देख सकते हैं डग आउट क्लिफ्टन पॉपुलर्स का, हंसते मुस्कुराते चेहरे, क्योंकि इनके पास पेस नहीं है, कोई एक्सप्रेस बॉलर नहीं है, तो अपनी लाइन और लेंथ की वजह से बैट्समैनों को जो है वो काबू करते हैं, लेकिन अभी तक भटके हुए हैं। जी हाँ, ये अमूमन इस तरह की अप फ्रंट बॉलिंग करते नहीं हैं, इतने वेवर्ड नहीं रहते, इक्का दुक्का कोई हो जाती है वाइड बॉल, वो एक अलग बात है, मगर इसमें तो बड़े तसलसल के साथ कुल मिलाकर 2 गेंदें की हैं, उसमें से 3 वाइड्स की हैं। और इस गेंद को ओवर द टॉप ऑफ साइड में, फहद मियां चन्नू की वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स ये भी है कि ये ऑफ साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं, और गेंद को कवर्स और पॉइंट के दरमियानी पोजीशन पर 6 रन के लिए बाहर डिस्पैच कर दिया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, राना जब इन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया था शुरू के दिनों में, ये ऑफ साइड पर इतने स्ट्रांग नहीं थे। पिछले 2-3 सालों पर इन्होंने ऐसा वर्क किया है अपनी टेक्निक पर, और अपने बाजू खोल कर ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर अमेजिंग बैटिंग कर रहे हैं आजकल। बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हैं, और बड़ा अच्छा आगाज़ उनकी जानिब से इस इनिंग्स का, और इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ किसी टेस्ट बैट्समैन की तरह उन्होंने ड्राइव किया है, पुश आउट किया ड्राइव से ज़्यादा, मिड ऑफ पर कोई रन न बन सका। दोनों बैट्समैन की टेक्निक भी अच्छी है, दैट्स व्हाट आई एम असेसिंग। जी हाँ, और एक और चीज़ जो फहद के बारे में है, दराज कामत के मालिक हैं और अपनी हाइट को यूज़ करते हैं, इनकी रीच जो है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है इनकी रीच, और उसको भरपूर फ़ायदा भी लेते हैं। ये ऑलवेज ये एट टाइम्स फ़ायदेमंद होता है कि आपकी हाइट ज़्यादा हो। ऑफ साइड में गेंद को निकाल लिया है, बड़ा पोलाइटली खेले इस पर, दूसरे रन के ख्वाह तो है मगर एक ही रन बनेगा, लेकिन यकीनन दुनिया के क्रिकेट में जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो छोटे कद के भी हुए हैं, लेकिन ये कि बड़े कद के भी अच्छे बैट्समैन रहे हैं ऐसा नहीं है। तो बहरहाल एट टाइम हाइट आपको एडवांटेज भी देती है, एट टाइम्स डिसएडवांटेज भी देती है।
लेकिन फाहद यकीन, हाँ ये आप पे है कि आप उसको यूज़ किस तरह करते हैं. मोस्टली जो बड़ी हाइट के खिलाड़ी होते हैं वो शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए तैयार रहते हैं, उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होते हैं. इस ओवर में अभी तक हमने काफी ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स देखे हैं. इस गेंद को असद ने हल्का सा इनसाइड आउट खेला है. ऑफ साइड में दोनों बैट्समैन बड़ी खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं डीएचए स्पोर्ट्स में. और गेंद एक बार फिर बाउंड्री से बाहर, एक और चौका. ये किसी भी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन से स्लॉग नहीं था, बिल्कुल टाइम किया है. हल्का सा अपने बल्ले का मुंह खोला, प्लेस किया और इट कैरिड ऑल द वे. टाइमिंग वाज एक्सक्विजिट टू द बाउंड्री. वन बाउंस चौका. 22 रन बने, पहले ओवर का खेल मुकम्मल. सोच विचार में मसरूफ हैं ये साहिब, लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अब मैं कैच कर लिया गया हूँ कैमरे की आंख से, तो फिर उन्होंने हंसना जो है वो मुनासिब समझा, वरना मूड में नहीं थे हंसने के. हमारे लिए कि 70 रन चाहिए, 30 गेंदें बाकी हैं. 70 रन चाहिए पहली इनिंग्स के स्कोर को लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए. और अगर लीड लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि 70 से ज़्यादा बनाना चाहेंगे, लेकिन आगाज़ बड़ा अच्छा रहा है. वैसे बस औकात ऐसे होता है कि जब आप जान रहे होते हैं कि आपको कैमरा जो है वो कैप्चर कर रहा होता है, तो आप शर्मा भी जाते हैं. यूं आलम बनावे दिल में हजार बातां, जब सामने वो आए गुफ्तार भूल जावे. लेकिन जो है जिसे कहना चाहिए, जो शर्माहट है उसमें भी एक खूबसूरती है. सुहेल, आपको कुछ ना कुछ शायद होना ही चाहिए. ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ी खूबसूरत गेंद, एज हुआ और विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया. और सुहेल फहद मियां चन्नू की बड़ी विकेट लेने में कामयाब. गुड ओवर की बहुत अच्छी शुरुआत. ये बहुत अच्छी लेंथ और बहुत अच्छी लाइन पर गेंद डाली थी. टिपिकल लेफ्ट आर्मर्स डिसमिसल. अक्रॉस द लाइन राइट हैंडर बल्लेबाज अपने बल्ले का मुंह खोलने गए थे फहद, बाहरी किनारा लगा और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने. 7 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस फहद आलम. 22 पे 1. दोनों टीमों पर अगर नजर डाली जाए तो दोनों ही बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए. तो ये मुकाबला जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है. जो भी टीम पहली इनिंग्स में लीड हासिल करने में कामयाब होगी, यकीनन मोमेंटम उसी के साथ होगा. उमर बाजवा अब विकेट पे पहुंचे हैं और उमर बाजवा भी बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है. मगर सुहेल ने जो आगाज़ किया है वो नहायत शानदार है. ये गेंद जो कि मिडल और ऑफ स्टंप पर थी, उसे मोड़ दिया है डीप स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे. 1 रन हासिल किया उमर बाजवा ने. और जो गेंद सुहेल ने की फहद को, वो वाकईतन मैं समझता हूँ कोई भी बैट्समैन होता, टॉप क्लास बैट्समैन होता, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसे भी परेशानी होती उस बॉल को खेलने में. बहुत अच्छी गेंद थी वो. That would have done for most. बहुत अच्छी गेंद. न सिर्फ हाइट गेंद की, गेंद ने गिरी बहुत अच्छी जगह पे थी और बिल्कुल बैट्समैन के बैट के करीब पहुंचने के बाद दैट वन डिविएट अ बिट और दैट्स व्हाट प्रोड्यूस्ड द एज. इस गेंद को खेले, मिड ऑफ को बीट किया और गेंद गोली की तरह बाउंड्री से बाहर, चौका. ये स्ट्रोक सिर्फ 2 फीट मिड ऑफ के फील्डर के लेफ्ट पर था, लेकिन टाइमिंग इतनी कमाल की थी, पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई. बिलाशुबा गेंद ने बड़ा कम वक्त लिया, जैसे कहना चाहिए कि इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई गेंद लॉन्ग ऑफ से बाहर जा चुकी थी. 1-2 टप्पे खाकर फील्डर मिड ऑफ पे ज़रूर मौजूद थे, मगर उनके बाएं जानिब से गेंद जो है वो ड्रिल की गई. 65 रन अभी भी दरकार हैं पहली इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए. इनिंग्स की 27 गेंदें अभी बाकी हैं क्लिफ्टन की.
विकेट कीपर तो बीट हुए, मगर गेंद को गैदर किया गया है बिहाइंड द विकेट्स। 2 रन वाइड बॉल के मिलेंगे। ये खराब बॉलिंग है, अगर देखा जाए तो प्रेडोमिनेंटली ऑफ साइड फील्ड रखी हुई है, बैकवर्ड पॉइंट है, कवर्स में फील्डर मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर में मिड ऑफ भी लिया हुआ है, तो फिर अगर आप लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं तो यकीनन आप गलती पे हैं। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द बॉल फील्ड बॉल करना बहुत अहम चीज़ है, और ख़ास तौर पे जब आपने आगाज़ अच्छा किया हो। बड़ा खूबसूरत शॉट, ओहो शॉट यार, गेंद घास के साथ एक तरह से चिमट कर रह गई है और फिर रगड़ खाती हुई बाउंड्री से बाहर। 4 रन्स। भले ही आप ऑफ साइड जितनी पैक कर लें, अगर आपका सामना असद शाह 360 डिग्री से है तो वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेंगे। बड़ी मौसर बैटिंग, बड़ी मौसर बैटिंग असद शाह कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सबक है उन नौजवान टेप बॉल क्रिकेटर्स के लिए जो लेग साइड को ज़्यादा टारगेट करते हैं, कि ऑफ साइड में रन्स मौजूद हैं। ऑफ साइड में या कवर्स में ईएन बेल जैसे या बाबर आजम जैसे ड्राइव टेप बॉल में भी किए जा सकते हैं, ये बता रहे हैं असद शाह। इस मरतबा ऊंचा शॉट, वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जोरदार और शानदार छक्का, काफी बुलंदो वाला स्ट्रोक। जी हाँ, गेंद जमीन से घास से रगड़ खाए या हवा में जाए, जब बल्ला असद शाह का हो तो यकीनन रिजल्ट जो है वो बैटिंग साइड के लिए फ्रूटफुल ही होगा। 6 रन्स थे। ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार असद ने बड़ा स्ट्रोक ट्राई किया मगर नाकाम रहे। सोहेल का पहला ओवर मुकम्मल, मजमूई तौर पे 2 ओवर्स के बाद 39 पे 1। बहुत उम्दा बैटिंग करें असद। 7 गेंदों पर 23 रन पे हैं। बाजवा ने महज 1 रन बनाया है। फाहद मियां चन्नू आगाज़ अच्छा किया था उन्होंने, मगर एक बहुत अच्छी सोहेल की गेंद पे वो कॉट बिहाइंड आउट हुए। 53 रन अभी और चाहिए हैं कि इनिंग्स के स्कोर को बराबर करें लियारी लेजेंड्स के पॉपुलर्स। 4 ओवर्स उनके पास हैं, 9 विकेटें उनके पास हैं। अहमद को अब बॉल दी गई है। सबसे ज़्यादा खूबसूरती या जिस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया है इस इनिंग्स में राना, वो ये है कि मोस्टली जो रन्स हैं वो ऑफ साइड पर हासिल हुए हैं यहाँ पे इन बल्लेबाजों को, क्लिफ्टन पॉपुलर्स के। बिलाशुबा फाहद ने भी जो एक स्ट्रोक खेला था वो ऑफ साइड पे था, और असद शाह ने अपने बल्क ऑफ द स्ट्रोक्स जो हैं वो ऑफ साइड में खेले। और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके लिए दोनों साइड्स ओपन हों, और फिर बॉलर के लिए मसला है कि अब आपको कहाँ बॉल करें, क्योंकि लेग साइड पे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप डिस्पैच होंगे जहाँ तक बॉलर का नुक्ते निगाह है। और अगर कोई बैट्समैन ऑफ साइड में अच्छा खेल पाता है तो फिर जाहिर है कि जैसे कहना चाहिए आइसिंग ऑन द केक है किसी बैट्समैन के लिए। और अब सामना करेंगे उमर अहमद कुल्फ़ी, ये एक और निकनेम है, और ये बॉल करने के लिए तैयार हैं फार एंड की जानिब से, या हम कह सकते हैं उसको सीवीओ एंड की जानिब से, स्कोश कॉट एंड भी कह सकते हैं, काफ़ी नाम दिए जा सकते हैं इस एंड को। और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ पे लॉफ्ट किया, फील्डर ने हवा में जंप किया और कैच करने में कामयाब। अहमद विकेट लेने में कामयाब हुए उमर की, और 39 रन पर दूसरी कामयाबी। यहाँ पे बदकिस्मत रहे हैं उमर, स्लॉट में थी, फुल टॉस थी जूसी, लेकिन उसको बाहर फेंकने में नाकाम रहे। लेकिन कैच की जितनी तारीफ की जाए कम, ये बॉल ट्रेवल कर रही थी। ये हालांकि फील्डर कुछ कदम आगे थे, टेक्निकली वो ठीक पोजीशन पे नहीं थे, मगर उन्होंने जंप करके कैच को जो है वो पकड़ लिया। बाजवा 1 रन बनाकर आउट हुए। 39 for 2।
अभी भी 53 रन्स की मजीद ज़रूरत है पहली इनिंग्स के स्कोर को बराबर करने के लिए। ताहिर पिंडी नए आने वाले बल्लेबाज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्राइक लेने की जानिब बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ताहिर पिंडी भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, लेकिन मुकाबला अब तक मैं समझता हूँ कि वेल बैलेंस है एक तरह से। लेकिन असद अगर खेल पाते हैं 2-3 ओवर मजीद या 4 ओवर, फिर बड़े इम्कानात हैं कि यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर लीड लेने में कामयाब होंगे, क्योंकि असद को आप बहुत ज़्यादा खामोश रख नहीं सकते। पिंडी ने इस गेंद को खेल दिया है स्ट्रेट। फील्डर मौजूद हैं जिन्होंने अभी भी बड़ा अच्छा कैच भी किया था। 1 रन मिलेगा ताहिर पिंडी को। पिंडी ने खेल दिया इस गेंद को कराची में। जी हाँ, इसमें मैं आपको बड़ा अच्छा वाकया सुना सकता हूँ कि रहीम होते थे एक हमारे हॉकी के प्लेयर, और SM नकी साहब और फारूक मज़हर कमेंट्री कर रहे थे। ये ओलंपिक की बात है। उन्होंने कहा कि अब गेंद जो है वो रहीम यार खान के पास है, और दूसरे दिन जंग में जो है वो खबर छपी हुई थी कि गेंद रहीम यार खान के पास, गोल दायरा बना हुआ था। यहाँ खिलाड़ियों के नाम कुल्फ़ी पिंडी हैं, तो पिंडी भी जो है वो खेल रहे हैं गेंद को। ऑन साइड में गेंद आई, 1 रन का इजाफा। एक तारक रहीम भी थे कमेंटेटर हैं माशाल्लाह। तारिक रहीम हमारे अंग्रेज़ी के बड़े लेजेंडरी कमेंटेटर हैं, लाहौर में होते हैं, और मुझे काफ़ी इत्तेफाक है उनके साथ रेडियो टेलीविज़न दोनों पे कमेंट्री करने का। वेरी नाइस फेलो एंड ही इज़ एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन, गुड मैन, थॉरो जेंटलमैन। इस गेंद को ड्राइव करने गए, बीट हुए। यहाँ भी फुटवर्क की कमी थी। ये गेंद भी खेली जा सकती थी ऑफ साइड पर अगर अपने फ्रंट फुट को प्लांट करते टुवर्ड्स द पिच ऑफ द बॉल, लेकिन टेक्निक आपको चाहिए होती है बड़े हिट्स लगाने के लिए। जी हाँ, एट टाइम्स टेक्निक बड़ा मैटर करती है। एट टाइम्स जब आपका अच्छा पेच चल रहा होता है, अच्छा पैच चल रहा है, तो फिर चल जाते हैं आप बॉडी से दूर भी, हर चीज़ आपके हक में वर्क करती है। मगर जब आप कुछ अच्छा फॉर्म ना हो तो फिर हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट करनी पड़ती है आपको। इस मरतबा भी पुरएतमाद अंदाज नहीं है खेलने का। बाहर कैफ 1 रन मिलेगा। अब ये मैं ये कहूँ ताहिर पिंडी को 1 रन मिलेगा, ऐसा नहीं को पिंडी को 1 रन मिलेगा। फोर्स करने गए थे इस बॉल को भी। समवे इट लुक्स एज इफ ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, अच्छी शेप में नहीं है। फोर्सिंग द इशू व्हेन यू आर इन गुड फॉर्म, जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो देन यू डोंट हैव टू फोर्स द इशू, थिंग्स कम इन योर वे। 50 रन अभी भी चाहिए। ये ओवर बड़ा अच्छा है जिसमें महज 2 रन बने हैं, और क्रिकेट में थिंग्स वैसी बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं, और 6 ओवर के फॉर्मेट में तो और भी तेज़ी से होती हैं। इस गेंद को घुटने का बेंड करके ऊंचा खेले, 2 फील्डर आए मगर गेंद दोनों के ऊपर से बाउंड्री से बाहर, छक्का। जी हाँ, जब ये कांटेक्ट किया था यहाँ पे असद शाह ने, दोनों फील्डर्स ये समझ रहे थे कि देवर इन बिजनेस, लेकिन आखिर पर गेंद उनके सर के ऊपर से गुजर गई 6 रन्स के लिए। बहुत ही उम्दा टाइमिंग, लाजवाब, शोइंग द मेकर्स नेम, फुल फेस ऑफ द बैट, सीधे बल्ले के साथ, टेक्निकली करेक्ट शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पे असद शाह का। 3 ओवर्स के इख्तिताम पर 2 विकेट के नुकसान पर क्लिफ्टन पॉपुलर्स का मजमुआ पहुंचा है 48 पर, और यहाँ पे कमेंट्री में तब्दीली होगी। कायनात इम्तियाज और फरख रियाज आपका साथ देंगे। Thank you very much, Falak Sher and Rana Shwak. Plenty of support for Clifton Popular. A very popular side of this competition. They are still 44 behind. Plenty of work to be done in the remaining 3 overs. With Tahir Pindi is out there. He has just come out of the middle. Very good player, very good striker of the cricket ball, along with very prominent name of table cricket, Asad Shah.
So in the comm box, I've been joined by Kainat. Good evening. Good evening, Zishan. And we have Abdul Salam, the bowler from Lyari Legends. So far, they have been doing good and have managed to restrict Clifton Populars to 48 with the loss of 2 wickets. They try to smash it through the offside. Came off the inside part of the bat. The high pindi. So idea was right to go with the line over covers. Well, it's always hard to hit the slinging actions because the ball is always skidding towards the offside of the wicket. But again, let's see what Salman has to offer more in this over. Asad Shah is batting with a strike rate of over 300. Entertainment is always on when he stays in the crease. Some changes in the field. The deep backward square legs coming towards inside the ring. And there is long on and long off. Once again, wicketkeeper making some changes here. Asking the fielder to get straighter a little bit. Big full toss, big strike. Somebody wants it. Not the best of timings. And he made a mess of it. 2 men were converging. And it was a tough one, really. The fielder was running back, kept his eye on the ball. In the end, lost his balance. And Asad Shah survives. The lady seemed happy with the drop catch. And another opportunity missed. And we'll have to see if this was a no ball or not. But this was not actually the fault of the fielder as his feet slipped a little bit. Yes, kind of we saw the 2 factors come into play. And it was really a tough one because the fielder had to run back and he had to keep the focus alive. And Asad Shah was aware of the fact that it would be a really tough catch for the fielder. He is into the 30s now. Well bowled. Wide York outside the off stump. Asad Shah had to reach for it and they are going for 1. So it's a good call from Tahir Pindi. He convinced Asad Shah to go for a run. Well, every run counts as Clifton Populars still need 40 runs. And he was easily in. It's a good thing that Lyari Legends had a backup already ready for that throw. Didn't give any extra runs. And again, we have the laser light on the batters. Someone surely enjoys that. Outside edge, gone! Tahir Pindi goes once again outside the off stump. He chased it. Massive outside edge, big deflection and good take behind the stumps. So brief innings is over of Tahir Pindi. As I said, slinging actions are always difficult to pick. And at the end, an easy catch to the wicket keeper. And Salman must be really happy with the bowling effort. Tahir Pindi went for 3 runs on 5 deliveries. Clifton Populars 52 for 3. They are in a spot of bother, Clifton Popular. 3 top players have gone back to the pavilion. Tahir Pindi is the latest victim
delivered outside the off stump, a very full ball, and it worked in the favor of Salam and Lyari legends. Haq Nawaz is the next man in. Will he try to bowl once again a wide Yorker to a new batsman? He takes 3 seconds at least to set off for a run-up. Missed the radar by a long way on this occasion. Well, I don't approve that the fact that fast bowlers are taking so much time before bowling, because you still have to have that specific time limit to complete your over, and it shouldn't be allowed, I think. That's quite right. As long as you are completing overs within the time limit, there is no harm if you are taking a little bit extra time to set off, or if your run-up is even longer. What is the time limit, Zishan? I think in international cricket, 3.5 hours for 50 overs. I'm not too sure about it. I'm only talking about tape ball cricket. I know what happens in a hardball game. Yeah. He has to reload. Salam, after picking up a wicket on both occasions, he delivered way outside the off stump. As a fast bowler, you got to feel. So he has to get his energy back. Maybe there is a problem with the ball, and umpire once again gave the ball to the bowler after examining it. Well, we do have a lot of time to talk in between the run-up. Let's talk about something interesting. Full toss on leg stump, missed by Haq Nawaz, beaten for pace. It's got its line right and getting appreciation from Syed Nasir behind the stumps. Last ball left for Salman to bowl. I saw again umpire examined the ball and took the ball from the bowler. So 3 to 4 times umpire examined the ball. So what was he looking at? Also, I think the factor of dew is there as well, and Salman is continuously trying to get that dew away from his shoes. Of course, it's disturbing when there's a lot of dew and you cannot find that stability when you're bowling. Outside the off stump, he lifted. Is it long enough? Just enough. Wide outside the off stump, and Asad Shah chased it beautifully. And what a finish of the over. A good shot towards the extra cover boundary. And yes, indeed, it was a great shot. Extending his arm towards the extra cover boundary. One of the greatest shots in cricket. 63 for 3. Finally, a long over from Salam has come to an end, and it came to an end in a grand fashion, courtesy of Asad Shah's brilliance.
The idea was right to bowl outside the off stump, but if Asad Shah had left it, that would have been wide. But really, great extension of arms, and he put fair amount of bat to travel the ball over the cover boundary. Lovely to watch. Beautifully played by Asad Shah, and Tahipindi got out in similar fashion when he was chasing the ball. And as a result of outside edge, he had to walk back. But Asad Shah gave plenty of bat on that. Ahmed will bowl. Impressive figure so far, 1 for 8 in a solitary over so far. Wide open his spaces to the onside, but Clifton Popular will try to pick the boundaries. Change of pace, going for the run, could be tight. Oh, gone, certainly gone. And but wicketkeeper is not happy at all. He wanted him to throw to the batting end. The wicket falls here. Asad Shah wanted to strike back, and Haq Nawaz had to sacrifice his wicket. Well, the bowler tried his best to have a competition with the batter who runs first, but in the end, the marbles counted, and an excellent shy towards the wicket. A complete run out. Great show by Lyari legend so far. He goes for none, 4 for 63 on the board. Haq Nawaz is the latest victim who got out, run out. It's a very good piece of work from Ahmed, although his captain wasn't happy behind the stumps, because Asad Shah is always a key wicket at any stage of the innings. So new over begins with a wicket here. Kamran has come out to the centre. Quite a few captains here for Lyari legends. Kamran lefty. Full toss, catch it as a cry. There's the protection out there. Asad Shah wants to, no, settle with one. The throw wasn't good enough, so that was the opportunity to come back for 2. Well, yes, but it was going right towards the fielder. A single run is completely fine. And Lyari legends are trying to restrict Clifton Populars within those 28 runs. There is a possibility that they can do that. As long as Asad Shah is out there, there is a certain possibility Clifton Popular takes a lead. So many changes they are making after every ball. Even the both fielders behind the wicket keepers, they swap their positions. Zohair Nazir has once again is at short third. Now the lefty, Kamran lefty, will face his first delivery. Change of pace outside the off stump. Not picked up by Kamran, although he is off the mark now. Lyari legends must keep in mind that they also have to have a good run rate. And so far they're doing good when it comes to the run rate and restricting the team to 65 for 4 in 4.3 overs only. Outside the off stump. Dot ball, precious dot ball. Wide given. That is interesting.
Was that the pressure of the batter on the crease? It shouldn't be like that. But he did try to hit a full-bladed shot. A good swing of the bat. Pretty much close to the tram line. Initially, Lyari Legends fielders behind the stump, they were not convinced, but they have to go with the umpire. A couple of wides conceded in the last over by Salam, and now Ahmed, who's also got the long run up. Well bowled, full, very pacey. Appreciated by his teammates. Asad Shah completely caught beaten. A lot of appreciation for Ahmed for bowling this delivery by the teammates. And yes, it was indeed a pacey delivery. And it just went by the batsman. Swinged a little bit. And this is the Osaka Crico tape that is specially designed for the tape ball cricket. And so far they have been quite good. And with it is the trophy that all the teams are fighting for. The beautiful trophy of KTPL Season 3. Let's see who wins this one on 16th. He goes for it. Has it lofted beautifully. Over long off. Not quite. He's gone. Good catch. He is yard short, Asad Shah. He tried his best to clear the long off boundary. Well picked up by the fielder, and Ahmed has got the breakthrough. It's a big one. It is a big one indeed. And Asad is out back to the pavilion. And Lyari Legends are celebrating as this victory means a lot to them. They're still far away from victory, but as you see, it's a really good catch. And almost went for a 6. A great effort by the fielder. Well taken. Excellent take indeed. We have seen quite a few blinders at the edge of the boundary. This is one of them. Two fielders are converging. And he kept his eye on the ball. And he was cool as an ice. And Asad Shah goes. Very good 39. Very watchable 39. 5 for 67 on the board. Clifton Popular. I wouldn't want to talk about the technique there, but yes, it was indeed a very good catch in the end. Now we have Mansoor on the crease. Pressure was building up because of 2 consecutive dot balls. And he lofted well, but certainly it wasn't a good enough connection to beat the fielder at long off. It's a VIP gallery. Plenty of attention here for UB Lameen KTPL Season 3. Arbaz is the next man in, so 2 fresh pair of legs are out there. And Asad Shah's absence will certainly help Lyari Legends there. But both batsmen are capable, and they will try to swing their bat to pick up boundaries and sixes. Not many balls are left. 7 legal balls to be bowled. Ahmed is impressive once again. Just 4 runs he conceded with a wicket. He goes for it. Has it struck it well enough? Fielder coming up. I think it goes for 6. Just enough good connection from Arbaz, who came to the crease, timed it well, and cleared the boundary. Well, spectators are enjoying Clifton Popular's batting. Arbaz is one good batter. And again, the first ball he faced, he pulled it away towards the mid-wicket boundary. Seven 3 for 5, Clifton Populars. Choradon once again watching the contest very closely. Plenty of support for both sides. It's Jawans guys who played just a while ago, a couple of hours ago. They lost to DHA Dabanggs, and they haven't won any game. Quite a few good players they have, but they could not step up to beat any side in the entire span of this UB Lameen KTPL Season 3.
They also got beaten by Karachi Knights, who are at second last position. Johar Jawans at the bottom. So Salam will bowl the last over. Last over of the innings. The Kamran lefty will be on strike. Arbaz started off very well. He got off the mark in a grand fashion. He goes for it. Chance or six? Forget about chance. It's a huge one. Lovely connection right off the middle of the bat. Length ball put away by Kamran. Again, they're trying their level best to chase that 19 runs. And again, a full-bladed shot towards the mid-wicket long on boundary. Not the ideal start for the bowler. Salam was quite impressive in the previous over. He bowled a couple of wides, but Kamran lefty is absolutely ready to take him on. They need boundaries here. They are just still behind. They are 13 runs behind. And Lyari Legends has a great chance to keep them away from their first innings score. Salam once again. He goes for it to the offside. Is it long or is that catch landed safely? Kari Hamidullah was down there, wasn't quick enough. It's turned out to be coupled to Clifton Popular. Well, could have been a front diving catch, forward diving catch, but it's okay to say to be okay with 2 runs given to the batter. They still have 11 runs to make in 4 deliveries, and Lyari Legends do still have a chance to stop them from making those runs. It was wide outside the off stump delivered by Salam, and wasn't timed well enough by Kamran lefty. You really had to chase it. I can see so many of the Clifton Populars spectators and supporters today on the ground. Missed it. It's a good one from Salam within the stumps. Beaten by pace. If they go on with this pace and this kind of body language, Lyari Legends, they do have a very good chance. He's the owner of Johar Jawan. Nine of the over so far. Will Salam finish on a high note here? It's a challenge for him. Arbaz, who opened his account with a big 6. Got him! Hit the timber. Beautifully bowled. Lovely line, lovely length. And Arbaz has to walk back. Well, taking all the time before the run-up. Shows off now. Salman hitting the stumps. And a great Yorker. A swinging Yorker by Salman. A great bowling effort. Arbaz goes 6 of 2. 6 for 82. Spectators turning out to be on a good number. It's a good comeback by Salam after conceding a maximum in the first ball of the last over. It is turning out to be a
good decent finish from Lyari Legends. They are still 10 runs ahead. So Farhad Abdali, who is known for his bowling, especially a number of catches has been dropped in the bowling of Farhad, and quite a few times we saw he was so frustrated. So really frustrate the bowlers of Lyari Legends. Couple of balls are left, and he's a left armer but a right hand batter. Big full toss. We have to wait for the signal of umpire. Could be run out. He missed it. No ball given by the square leg umpire. Coming back for 2. So free hit will be awarded here as a bonus for Clifton Popular. And they have every chance now to take the lead. A fair chance for Lyari Legends to win this game. But unfortunately, a free hit will be given to Clifton Populars. They still have 6 runs to make before they get the lead, and 2 balls remaining. Once again, another evidence of the bounce of the wicket, because throw wasn't on the full and it went over the stumps. They should try to hit the stumps on the full, because the bounce can take the ball away. It's a bonus. Farhad Abdali will face a free hit. Goes for the big shot, hard and flat, should be cut off. No, in the gap, it's a boundary. Great placement from Farhad Abdali. Length ball put away beautifully. Well, making the full of use of these 2 last deliveries to get a little bit of lead before the next innings. And yes, the ball didn't bounce that much. It was a little bit of shorter delivery, but didn't bounce. Yes, and went out of the park. Last ball coming up. So what is your guess? Where will they finish? They will take the lead or they will stay behind? I think it can get even. They'll take 2 runs. But we won't have a super over because 4 innings based game here. So they are 2 away. Last ball, 2 for 30 Salam. Good one. Very full. Plenty of pace behind the ball. He's coming back for 2. And comfortably taken. Now scores are absolutely even. You are spot on, Kainat. So 90 for 6 exactly after 6 overs. There is no lead. Nobody's ahead, nobody's behind. The smile back on Clifton Popular's faces. They 92 for 6, and they are pretty happy the way they bounced back. Asad Shah got out in the middle of the innings, but they played well enough to score 92. The score exactly posted by Lyari Legends in the first innings. Kamran remained not out on 9. Farhad Abdali, a little cameo, 8 of 3. A fair chance for Lyari Legends to start this inning with a great bang and hit all those 6s around the ground. And I think it's a great opportunity for Lyari Legends to bounce back as Clifton Populars. They don't seem to be in that form like they have been in the previous innings. That's the highlight of the Shah. Again in style, lovely shot through the covers, along the carpet, smashed by 6 by Fahad, beautifully lofted, up and over the boundary. That was a soft dismissal outside edge, picked up by keeper. Lovely shot again along the carpet, pretty much. Picked the gap beautifully again, through the covers. Lovely shots he played through the offside. Lofted beautifully for 6 through the offside. Full toss, gift, and taken. Marbajwa. And then Asad Shah continued in his merry way. Outside edge, Tahir Pindi got out. Massive deflection. Salam picked up his first. And Asad Shah played an unbelievable shot over cover. Chased it from outside the off stump for 6. And then run out happened. Haq Nawaz got out, run out. He was not even in the frame. And then Asad Shah got out lofted, but it wasn't a good enough loft. Well taken just inside the boundary. Haq Nawaz smashed the 6, well-timed shot. And Kamran lefty joined the party.
struck it beautifully. Cleaned up by Salam. Lovely delivery. Stumps rattled. And that is how the boundary picked up by Farhad Abdali. In the end, he remained not out of 8 of 3 deliveries. So that's the scorecard we have. 39 for Asad Shah. Fahad got out early. 7 to his name. 1 for Umar. 3 for Tahir. Tuck for Haq Nawaz. 9 not out for Kamran. 6 for Arbaz. And 8 of 3 for Farhad Abdali. 19 extras. 92 for 6. So it's the bowling card we have. 1 for 17 for Sohail. 2 for 18 for Ahmad. And 2 for 32 for Salam. Whereas Rana Mohsen remained wicketless. So it's time for a break, and after the break, we will come back with the third innings of the match.
Good evening and welcome back to all of you folks wherever you are across the globe. We welcome you once again from the DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where the second match of the night is off and running. First innings is done and dusted. There you see the umpires making their way to the middle, showing that white new cherry with a beautiful tape on it. And the first innings, both of the sides couldn't separate each other. Went neck to neck in the first innings, and now it's going to be the turn of Lyari legends to hold the sticks and do some serious bit of damage with the bat to get themselves in a good position in this match. There you see the players of Clifton Populars making their way to the middle, and with me is Zishan Khalid. A very good hello to you, Zishan. Hello to you, Falak, and hello to all our viewers who are watching this telecast live. We are entering into the crunch moments of this tournament, and that's why you were absolutely right. There were nothing to separate these two sides from the first innings. Both of them scoring identically 92 runs in their allotted 6 overs. So it's going to be a start from the scratch for Lyari Legends. So the scores are level. Whatever runs they are going to put on from here on is going to be the lead that they're going to be putting. Well, we have had everything happening. This thing was missing, and we have got a score level as well. So something very special to witness in this UBL Amin presents KTPL Season 3. And looks as if they've made a little bit of change in the opening department, have Lyari Legends. Hamidullah earlier opened the batting in the first innings, and now it's going to be Hassan Painda, who has joined the team all the way from Lahore. He will be holding his stick and will be looking to make it talk as well. Yeah, just before the start of this innings, I was hearing about stories about Hassan Painda, how destructive he is with the bat. He has joined this team now, Lyari Legends, but they still have time to create impact as ABC, the another opening batter, Nizar Ali, the left-handed batter, is going to be opening the batting. They still have time to create an impact and qualify for the semi-finals, Lyari Legends. And they put up a magnificent show with the ball by not allowing Clifton Popular to get any sort of lead whatsoever. And back to normal are Clifton Populars as well, as we see Irfan Nana has been given the ball. He will start the proceedings. Third innings, second of Lyari Legends, third of the match. Left arm bowling award. Now let's play. Let's play, boys. Outside the off stump. Will be given as a wide. Yeah, not a good start this from Irfan. The angle taking the ball across the right-hander starts off with a wide. 2 extra runs have been given already. The owner of DHA Dabanggs having a word with Zohair Nasir, the chairman of Karachi Table Premier League Season 3. Well, he must be very happy with the effort of his boys so far. Oh, playing a miss again. This time he gets away with it. Nana, it was good length. That's why he was beaten. Yeah, hitting the deck hard, Irfan Nana, on that occasion. Once again, the ball was going across the right-hander. He was expecting the umpire to call it as another wide, but it was not given. And they have a very good opportunity, Lyari Legends, to upset a very strong Clifton Popular side tonight. Leaves that safely alone. Another good delivery here. So good comeback by Irfan Nana, staying away from the reach of Painda, and he knows that if he gets a little closer to Painda, he's going to hit him. He's one of those players very destructive at the top of the order. Yeah, he's aware about the reputation and the abilities of Hassan Painda. He cannot afford to pitch the ball up. Cannot afford to drop it in the zone. Inside edge, wants to stay there, wants to face himself. Painda. Yeah, he's a type of batter, even if he faces 2 or 3 dot deliveries, he can come back well and then start hitting big. Just like I mentioned, I've been hearing stories about him. He has been really destructive and scintillating. And it's good that Lyari Legends have promoted him up the order to give him extra time so that he can adjust himself and announce his arrival at this big stage. Oh, went for that big heave. Didn't entirely connect it as he would have liked. And there you see some sort of frustration building up on his face. When you don't get out of the middle of the bat and you feel that you're not in a good shape,
This is the thing which can get better of you at times. And this is why I think Nizar Ali, the batter who has done bulk of the batting so far for them, needs to have a word with him that we can have an over like this where we cannot score runs freely, but we can always make a comeback. And here goes Penda announcing his arrival with his first maximum, and it's a big one, over long on. This is Penda, we all know. Yeah, that's the delivery he was waiting for. It was pitched up, there was no movement whatsoever from Irfan. Hitting the bullseye, hitting it as hard and as high as possible and getting a maximum over long on. Tell you what, when he hits them, they stay hit. He's a big fellow. Still not happy with himself, my word. What was he wanting of that shot? There you go, he goes down the ground this time. And it will be cut it off. Fielder does well, had to cover a little bit of territory. But not before the batters cross over for 2 runs. So, couple to end the over. It's 10 with Al-Asal wicket. A good over by Irfan, nevertheless. Well, what you make of the progress of the both sides, Zishan, having a good look at the first innings. They've been neck to neck. Well, I'm really surprised by the way the strong sides have played in the latter stages of the tournament. If we talk about Maleen Malangs, they were simply unbeaten for the first 5 games, and they end up losing their next 2. Clifton Popular also not putting up a performance that they were expected to in the first innings. They could have easily ended up with a lead, but they couldn't do so. So these sides really need to realize that these are the latter stages of the tournament. If we want to win them, we need to continue with the momentum. Playing a miss. Yeah, this is the beauty, I would say, of this type ball, and especially this KTPL Season 3 UBLMA, because there is a contest between bat and ball, and you can always expect a lot happening in the middle, because when you go one-dimensional, the taste and the beauty of the game just vanishes somewhat. So it's always good. Full toss, missed out. Well, he's been in good touch, but he's missing out. Unlike left-hander Nizar, normally he's very good at those. And not only Nizar is being unlucky, but Farhad Abdali has also been very unlucky in this tournament. As you see, Osaka PVC tapes are being used to wrap around these balls for Karachi Table Premier League. Specially designed tapes, specially designed balls that are being used in this tournament. One of the leading brands when it comes to electric tapes, Osaka. Have a look at that, altering his length. Clever bowling by Farhad Abdali. This is good. He bowled a couple of full tosses and then altered his length and nicely beaten. Yeah, the fact that it's 8 teams that are participating in this tournament and they get to play 7 games each. So now they have been able to understand the nature of the pitch, the conditions. Pretty hard job to wrap tape around the ball. You have to make sure that the ball does not get oval shaped. You're right, but this guy seems to be a master in doing that. And he's a master if you bowl him there. That's a biggie. That's all right in the stands. That's Nizar, we all know, his first 6 of this innings. Yeah, Farhad Abdali got away with the full toss. He got away with a slower delivery. This time getting the pace and the length right for the patter. And Nizar Ali just picking it off his length and hitting it into the crowd. Mostly the left-handers like the ball on their legs. Not there too. This is good. Good intelligent bowling by Farhad. He went for 6, but came back immediately with his line and length. Yeah, he kept it slightly wider outside the off-stump so that Nizar could not hit it on the leg side. But again, the length was there, and if he would have tried to hit it over extra cover, the region that is usually stays unprotected, could have got few runs as well. There we see the owner of DH Dabanggs and Clifton Popular standing next to each other. Oh, that's wrong line, wrong length, and pays the price with a boundary. That's Farhad Abdali. So a boundary to finish that over. 2 done, it's 20 for none. Another slower delivery attempted, but he got the length. It was shorter.
He had no hesitation in keeping the ball down and hitting it comfortably past fine leg for yet another boundary. Well, they've got 20 of the first two, and what should they be eyeing at? In my opinion, they got to get somewhere along, closer to that 100 mark, to three-figure mark, to make a match of it. Yeah, they definitely need to, because we saw Fahad Mia Chunnu not putting up score in the first innings, but you cannot expect Fahad Mia Chunnu to fail every time. Now he knows that if they're going to be chasing down a big target, he'll have to come out all guns blazing. And to create that psychological pressure on a side that is as strong as Clifton Popular, you need to score at least somewhere between 90 and 110, so that even your bowlers will have something to play with. They can try those variations, and the batting side will also have this thing in mind, that we cannot afford to play a over where we can just go 5 or 6 runs. Yeah, that's right. But at the moment, it's a responsibility on their batters to get those runs first. Hassan Painda seems to be a little off color, has just joined the team, but he has hit a maximum. Let's see if his confidence came back or not. Yeah, hit a 6 against Irfan in the first over. Can he do that again? He needs to do that though. He miscues one that is in the air, and it's been accepted. Easy one for the fielder at backward point, and Painda is gone. Yeah, just trying to hit it a little too hard. Once again, the ball was going across the right-hander. He was trying to manufacture a shot out of nowhere, trying to hit that straighter towards long on region. Got the outside half of the bat, and a regulation chance for the fielder at point. So a big wicket goes down for Lyari Legends. Well, technique again comes into play with those type of shots. He gone for 8. He was trying to go across the line, was dragging it from way outside the off stump. Not many can do that. Would have been better targeting the offside field by opening the face of the blade. I'm afraid it's a little too late now, because he has been sent back to the dugout. And in walks Daud. I'm saying if he would have tried, but he's gone. That is history. Let's focus on Daud, the new coming batter. He's got a job to do as well. And he's in good form. Let's see if he can let his bat do the talking tonight, especially in this innings. Still believe one of these batters, one of these top order batters needs to get a big score, because when usually that happens, the overall team usually ends up getting a big score. And for that, it's important for Nizar Ali, the left-handed batters, to stay out there. Oh, big swing. Had that been connected, that would have been somewhere in the sea. There is a sea in that direction next to the ground. Could have easily gone an inside edge as well, because that was not that far away from the off stump. Good first delivery this from Irfan. This has been a really good spell. We can only imagine if the contact is not made. Have a look at that, altering his length. But we'll have to re-bowl that. It was down the leg side. Yeah, straight away, as soon as he missed that ball, he straight away looked at the leg umpire just to check the height, the bounce on that ball. It was given as a wide by the on-field umpire. Nizar Ali is now having a word with the right-hander. I think it's important that Nizar Ali gets as much strike as possible, because he has played all the game for Lyari Legends. And as a left-hander, you get an advantage whenever you are facing a left-arm seamer. Yeah, but all eyes will be on Daud, who is the man facing. Play and a miss. Some pace as well. Good to see. He's working up some serious pace, I can tell you. And since he's trying to bowl it as fast as possible, he's getting some movement as well. You could see that ball moving in after it went past the batter. That's why the wicketkeeper could not gather it. Well, when you see them facing the lesser paced bowlers, they altogether seem to be different players. But all of a sudden, when you see somebody like Arfan Nona, somebody like Zahir Ahmed, the quick bowlers, have a look at that. It just changes the complexion of the game, the style of the play. It becomes different level. Yeah, you're right. As soon as Zahir Kalia and Abdul Qadir has walked in the squad of DH at Dabanggs, I think the other bowlers have got
much more competition now, and they are trying to replicate their performances as well. And they know if a bowler bowls well, they can easily restrict the opposition to a well below par score, just like the way DHA Dabanggs did earlier today. They only allowed Johar Jawans to score 49 runs in their 6 overs. Playing a miss this time. Will get away with it as well. It's a dot delivery. Well, I've heard from cricket experts, Zishan, that bowlers always win you tournaments. Batters can win you games, matches, certain matches, but these are the bowlers who are going to win you the tournaments. Just like the way legendary South African fast bowler Dale Steyn once said, the batters entertain the crowd, but the bowlers win you tournaments. Flicked away. The timing is exquisite and result is even good. It's gone for 4. Yeah, it was turning out to be a phenomenal over from Irfan until that point where he was looking to target the pads of the left-hander and ended up paying the price for it. Could have easily carried all the way for 6 as well, but since it was the longest region of the ground, the ball just bounced once before it trickled past the boundary ropes. So 4 to end the over with, 3 done. Lyari Legends are now 27 for 1. It's time for a change in the commentary box. I would like to invite Yahya Hussaini alongside Raja Ali Hasnain. शुक्रिया ज़ीशान खालिद। इनिंग का यहाँ पर चौथे ओवर का आगाज हुआ चाहता है। फरहाद आलम अब्दाली आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ को जीती हुई ये बॉल इस वक्त है बाउंड्री लाइन से बाहर। दाऊद मोहम्मद सुलेमान की जानिब से दिलकश स्ट्रोक है और वाइडिश लॉन्ग ऑफ को ये बॉल जीता हुआ बाउंड्री लाइन से बाहर। वेलकम किया है फरहाद आलम अब्दाली का शानदार चौके के साथ। मोस्ट वेलकम याहिया हुसैनी। बहुत शुक्रिया। और DHA मोइन खान क्रिकेट स्टेडियम में एक और बड़ा उम्दा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है छक्के के लिए। लियारी लेजेंड बनाम क्लिफ्टन पॉपुलर। और एक बार फिर उठाकर खेले हैं। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन को तो क्रॉस कर नहीं पाएगी, लेकिन दूसरा रन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ मुकम्मल किया। तो रन बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी नज़ीर ने अपने कंधों पर रखी हुई है, लेकिन इस ओवर में दाऊद एक्शन में है। 39 एक विकेट के नुकसान पर लियारी लेजेंड इस ओवर में अब तक 12 रन हासिल हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, फरहाद आलम अब्दाली बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर का आगाज है, एक बार फिर से तैयार हैं फरहाद अब्दाली। और इस बार भी ज़्यादा क़ुव्वत वाला स्ट्रोक नहीं था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर पोस्ट हैं क्लिफ्टन पॉपुलर के, जिन्होंने गेंद को फील किया एक रन चहलकदमी के अंदाज में। तो ये चौथे ओवर का खेल है और ये डग आउट है क्लिफ्टन पॉपुलर का। और यहाँ पर चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि चौथे ओवर का खेल है, 2 गेंदें बाकी हैं। 40 रन लियारी लेजेंड का स्कोर है और 40 रन की उनकी बरतरी है। जी हाँ बिल्कुल। और इस वक्त दोनों बल्लेबाज निज़ार लफ्टी और दाऊद मोहम्मद सुलेमान दोनों का ताल्लुक KPK से है और जो बॉलर हैं फरहाद आलम अब्दाली वो भी KPK से हैं। तो ये KPK के माबेन ये इस वक्त कॉन्टेस्ट है। और निज़ार लफ्टी विकेट पे मौजूद हैं। फरहाद आलम अब्दाली इस वक्त ओवर डिलीवर करते हुए ओवर द स्टंप जाएंगे निज़ार लफ्टी के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, अंपायर ने बगौर देखने के बाद ये फैसला किया कि ये वाइट बॉल के 2 रन लियारी लेजेंड के स्कोर में अगर ऐड कर दिए जाएं तो कोई बुरी बात नहीं होगी।
और जी हाँ, बिल्कुल अगर स्टैट्स के ऊपर देखा जाए तो इस पूरे इवेंट में अब तक के ऑलमोस्ट 850 से ज़ायद और ये हसन रजा क्लिफ्टन पॉपुलर के डग आउट में बतौर कोच जिम्मेदारियां अदा करते हुए पाकिस्तान के कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर होने का एजाज इनके पास। और इस बार फरहाद की अच्छी गेंद जिस पर नजर बीट हुए। बड़ी शानदार गेंदबाजी जारी है। दूसरा ओवर अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है फरहाद आलम अब्दाली की जानिब से, और अभी तक महज 25 रन लीक किए गए हैं फरहाद अब्दाली की जानिब से। बड़ा शानदार ओवर डिलीवर किया जा रहा है अब्दाली की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रन बनाने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता खरामे आगे बढ़ती हुई। इस ओवर के बाद 2 ओवर और 12 गेंदों का खेल बाकी रह जाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद और फरहाद की इस गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर उनकी हिम्मत जो है बढ़ गई और उन्होंने अपने कदमों से गेंद को रोकने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए। इसी अवस्था में दोनों बैट्समैनों ने क्रीज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गालिबन यहां पर ये रन आउट की अपील की जा रही है। आउटसाइड द ऑफ स्टंप फरहाद आलम अब्दाली का ये बॉल था और बड़ी खूबसूरती से खेले थे निज़ार लेफ्टी। और गालिबन यहाँ पर दाऊद को लियारी लेजेंड के वापस जाना होगा। बिल्कुल फ्रेम में भी नहीं थे यहाँ पर ये, और इनकी कुछ बहस व तकरार हुई है निज़ार लेफ्टी के साथ, और वो शायद इनसे यही कह रहे हैं कि यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो दाऊद सुलेमान 7 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के के साथ 13 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए। चौथे ओवर का इख्तिताम हुआ। इट्स 44 इज ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स। तमाशाइयों की अच्छी तादाद इस मैच से लुत्फानंदोज होती हुई डीएचए मोइन खान क्रिकेट एकेडमी, जहां पर KTPL सीजन 3 2023 का ये मुकाबला क्लिफ्टन पॉपुलर और लियारी लेजेंड्स की टीमों के दरमियान जारी है। 4 ओवर के बाद लियारी लेजेंड का स्कोर 44, 2 विकेटों के नुकसान पर। अशरफ अब दाखिल हुए हैं, नए आने वाले बैट्समैन निज़ार लेफ्टी का वो साथ देंगे, और आखिरी 12 गेंदों पर लियारी लेजेंड की टीम अपने स्कोर में किस हद तक इजाफे में कामयाब होती है ये देखना होगा, क्योंकि ये टारगेट सेट कर रहे हैं इस वक्त क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए, और आखिरी 2 ओवर में कम से कम 30 रन्स का इजाफा मुनासिब होगा। इससे कम रन जो हैं वो लियारी लेजेंड के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 30 रन यहाँ पर स्कोर कर जाती है टीम लियारी लेजेंड्स तो एक अच्छा टोटल है बोर्ड के ऊपर होगा। क्लिफ्टन पॉपुलर के पास स्ट्रेंथ मौजूद है इस मुकाबले को चेस डाउन करने की, और यहाँ पर बॉलिंग के लिए थमा दिया गया है। बारी का इस वक्त है 5वां ओवर। उमर बाजवा, तो उमर बाजवा एक मुश्किल ओवर करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है लियारी लेजेंड्स के लिए। 44 रन की उनकी बढ़तरी है, 2 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। मैटर नहीं करता कि विकेटें कितनी गिरी हैं। अशरफ पठान जो कि कप्तान हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं, और उनके साथ निज़ार लेफ्टी सामना करेंगे उमर का। उमर बाजवा इस ओवर में पहली मर्तबा आए गेंद की, और इस गेंद को उठाकर खेले हैं, और फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। यहाँ बड़ा शानदार शॉट है निज़ार लेफ्टी की जानिब से। बड़ी शानदार फॉर्म में है और इस इवेंट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं अब तक निज़ार लेफ्टी की जानिब से। जस्ट लुक एट दिस वन, राइट ओवर एक्स्ट्रा कवर। कमाल का शॉट है यहाँ पर निज़ार लेफ्टी की जानिब से। अच्छी शुरुआत इस ओवर की, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हुए अपनी दूसरी इनिंग में लियारी लेजेंड्स के, और उनकी बढ़तरी भी 50 रन की। कुछ कंफ्यूजन है गालिबन अंपायर को, और वो इस बात की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि आया ये छक्का है या फिर चौका। एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क, किसी शक व शुबे के बगैर ये 4 रन होंगे। जी हाँ, यहाँ पर डिसीजन रिवर्स और 4 रन का इशारा दिया गया है अंपायर की जानिब से। सो वेलकम किया है यहाँ पर उमर बाजवा का इस शानदार चौके के साथ निज़ार लेफ्टी, ताल्लुक 4 सदा KPK से।
और इस बार गेंद उनकी पहुंच से दूर और अंपायर का इशारा कि ये 2 रन वाइड के, तो वो जो 2 रन मिन्हा हुए थे पिछली गेंद पर वो वापस आ गए हैं, तो बात वहीं आकर रुक गई है जहां खत्म हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 मजीद रन का इजाफा है और उमर बाजवा के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होगा। उनकी जानिब टीम मैनेजमेंट की जानिब से और टीम कप्तान की जानिब से उमर बाजवा के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया गया है। और निज़ार लेफ्टी इस गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। इरफान पठान 2-4 कदम आगे आ गए थे, लेकिन निज़ार लेफ्टी अपने इस शॉट से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, जिसको कहते हैं कि गलती कर गए थे बाजवा। जी हाँ, बिल्कुल स्लोअर वन था उमर बाजवा की जानिब से। वेट किया, खासा लंबा वेट करना पड़ा यहाँ पर निज़ार लेफ्टी को। बिलाखिर ये बॉल उनके कंधे को किस करता हुआ इस वक्त फील्ड कर लिया गया है। रन देने का मौका नहीं है। बारी का इस वक्त 5वां ओवर डिलीवर किया जा रहा है उमर बाजवा की जानिब से और सबकत इस वक्त लियारी लेजेंड्स के लिए 50 रन की। और इस बार उठाकर खेले हैं, गेंद हवा में और तैरती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। यहाँ बड़ा शानदार स्ट्रोक, एक बार फिर से नज़ार लेफ्टी की जानिब से, एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया और एक और ऑन द स्ट्रोक अपने नाम करने में कामयाब हुए। कमाल की बल्लेबाजी जारी है नज़ार लेफ्टी की जानिब से और यहाँ जांच करना शुरू किया अगेंस्ट उमर बाजवा। 12 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं निज़ार लेफ्टी, इसमें से 10 रन हासिल करने में कामयाब रहे हैं। 2 वाइड के रन थे और 3 गेंदें इस ओवर की बाकी। उमर बाजवा एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस बार गेंद को कनेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी है और ये गालिबन इस ओवर का दूसरा छक्का होगा। जी हाँ, एक बार फिर से यहाँ स्लोअर वन था उमर बाजवा की जानिब से, लॉफ्ट किया गया। नज़ार लेफ्टी फ्रॉम चारसदा की जानिब से लॉन्ग लेग रीजन को टारगेट किया गया है। नज़ार लेफ्टी की जानिब से एक और शानदार बुलेट। एक बार बच गए थे बाजवा, लेकिन इस बार उनकी इस लूज बॉल को बाउंड्री लाइन के पहुंचाकर ही दम लिया निज़ार लेफ्टी ने, जो अब खरामे 14 गेंदों पर 32 रन तक जा पहुंचे हैं। और इस बार सुख का सांस लिया होगा बाजवा ने, क्योंकि गेंद को खेले जरूर हैं लेकिन बात 2 रन से आगे बढ़ नहीं पाएगी। 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में और 5 गेंदों पर अब तक उमर बाजवा 20 रन दे चुके हैं। 64 2 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स। किसी हद तक सुख का सांस लिया होगा लियारी लेजेंड्स ने। यहाँ बिल्कुल 64 रन की बर्तरी ले चुकी है टीम लियारी लेजेंड्स और इनफॉर्म बैटर निज़ार लेफ्टी विकेट पर मौजूद है उमर बाजवा। और ये वाइड बॉल होगी। इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये जो आखिरी ओवर के रन होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। 22 रन अब तक दे चुके हैं और इन 22 रन में 4 वाइड बॉल के रन इन्होंने दिए हैं। 2 वाइड बॉल इस ओवर में कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो अपना ओवर मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने 2 वाइड बॉलें की हैं, 7 गेंदें इस ओवर में ये डाल चुके हैं। और ये भी वाइड बॉल होनी चाहिए, बिल्कुल किसी शक को शुबे के बगैर। वेरी कॉस्टली। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना उमर बाजवा के लिए बड़ा ज़रूरी है। 68 रन की सबकत ले चुकी है टीम लियारी लेजेंड्स और खतरात के बादल ज़रूर मंडलाएंगे अपोजिशन के खेमे में। बड़ा महंगा ओवर है। 24 रन इस ओवर में अब तक दे चुके हैं और एक्स्ट्रा 13, जिसमें 6 वाइड और यहाँ आपको याद रखना होगा कि 1 वाइड बॉल पर 2 रन हैं। आखिरी बॉल उमर बाजवा की। क्या इस ओवर का अख्ताम बाउंड्री के साथ होगा? लकी रहे बाजवा, अनलकी रहे निज़ार लेफ्टी। उमर बाजवा का महंगा ओवर, जिसमें उन्होंने 24 रन दिए और लियारी लेजेंड 5 ओवर के बाद 68 2 विकेटों के नुकसान पर।
छठे ओवर का यहाँ आगाज हुआ चाहता है और पारी का इस वक्त छठा ओवर डिलीवर करने के लिए चकवाल से ताल्लुक है। इमरान मेहरू को लाया गया है। इस वक्त कप्तान की जानिब से एतमाद का इजहार किया गया है इमरान मेहरू के ऊपर। बड़ी शानदार गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं इमरान मेहरू। ब्रेक करना जानते हैं बॉल को इमरान मेहरू, ताल्लुक चकवाल से। तो इमरान मेहरू यहाँ कितने कामयाब होंगे, इस बात का जवाब 6 गेंदों के बाद मिल पाएगा। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं अशरफ पठान 6 रन के लिए। यहाँ बिल्कुल कमाल का शॉट था अशरफ पठान की जानिब से, सलाट में दिया हुआ ये बॉल था। इमरान मेहरू की जानिब से लफ्ट किया गया ओवर है डीप बैक स्क्वायर लेग फॉर द मैक्सिमम। इमरान ने जिस तरह बॉल डाला है, अगर अशरफ पठान फुल फॉर्म में रहे तो इस ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के मुझे मुश्किल दिखाई दे नहीं रहे। लेकिन इस बार अशरफ पठान ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी है जबरदस्ती। और साथ ही वाइड बॉल का इशारा भी है अंपायर की जानिब से। 2 रन का तो ऑलरेडी इजाफा है, लेकिन यहां अशरफ पठान आउट होकर पवेलियन वापस लौटेंगे। और गालिबन वो यही कह रहे हैं निज़ार लेफ्टी से कि यार क्या ज़रूरत थी भागने की। और ये इनका गुस्सा, ये इनके एहसासात, ये इनके जज्बात। 2 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद डिपार्चर अशरफ पठान का। पांच गेंदों का खेल बाकी है और अब देखना यह है कि निज़ार लेफ्टी जिन्होंने अपना स्ट्राइक चेंज किया है वो अब किस हद तक इस ओवर में रन्स बटोरने में कामयाब रहते हैं। हमीदुल्लाह नए आने वाले बल्लेबाज लियारी लेजेंड्स के लिए, लेकिन स्ट्राइक इस वक्त निज़ार लेफ्टी के पास। 76 फॉर 3 लियारी लेजेंड्स की बढ़तरी 76 रन की। बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाजी जारी रखेंगे इमरान मेहरू। सामने मौजूद होंगे निज़ार लेफ्टी, बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं और अब तक 34 रन स्कोर कर चुके हैं। इनफरादी इनिंग में 16 गेंदों का सामना किया है इमरान मेहरू। और ये भी वाइड होनी चाहिए, बिल्कुल बैक टू बैक वाइड। एक गेंद है और 10 रन हो चुका है बोर्ड के ऊपर, जिसमें से 4 वाइड के रन हैं। एग्जैक्टली। इमरान मेहरू एक बार फिर से तैयार हैं। सामने मौजूद है निज़ार लेफ्टी। इस बार निज़ार लेफ्टी की जानिब से चार्ज किया गया है, कोई मौका नहीं यहाँ पर फरहाद आलम अब्दाली के पास टिप मिड विकेट के ऊपर। क्लिफ्टन पॉपुलर का ये बिल्कुल भी पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा इमरान को बॉल देने का, क्योंकि इमरान जिस तरह बॉल गिरा रहे हैं, जितने इस ओवर में रन बने वो कम। हाँ बिल्कुल, और जिस तरह की फॉर्म चल रही है निज़ार लेफ्टी की, तो ऐसे छोटे बॉल को डिमोलिश करना जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। छोटा बॉल था और बड़ी खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट को क्लियर करने में कामयाब हुए निज़ार लेफ्टी। 84 रन की सबकत ले चुकी है टीम लियारी लेजेंड्स। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 रन की बेहतरीन इनिंग खेल चुके हैं निज़ार लेफ्टी। और एक बार फिर से सामने मौजूद होंगे इमरान मेहरू। इमरान मेहरू चकवाल से जिनका ताल्लुक है, जिस तरह बॉल डाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि निज़ार लेफ्टी को यहाँ पर अपने 50 रन मुकम्मल करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और एक और वाइड बॉल, या तो शॉट खा रहे हैं बाउंड्री से बाहर, और ये इस ओवर में उनका गालिबन चौथा वाइड बॉल है। वेरी कॉस्टली, तीसरा, सॉरी 3 वाइड बॉल, 6 रन दे चुके हैं, 2 छक्के खा चुके हैं। और इस बार लकी रहे निज़ार लेफ्टी, इसको कहते हैं किस्मत। जी हाँ बिल्कुल। और इमरान मेहरू बॉल को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। ब्रेकर ट्रिप बॉल में उनको माना जाता है इमरान मेहरू को। बड़ी शानदार गेंदबाजी करने की उमूमी तौर पर सलाहियत रखते हैं, लेकिन यहाँ पर निज़ार लेफ्टी आड़े हाथू लिए हुए। और इमरान मेहरू को खेलने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप पिछले कदम पर जाकर इनको उठाकर खेलने की कोशिश करें, क्योंकि आगे इनको जाकर खेलना इतना आसान होगा नहीं, और वही कोशिश कर रहे हैं निज़ार लेफ्टी।
इस ओवर में चौथी मर्तबा, और इस बार बीट हुए और अंपायर ने कहा कि नहीं, ये लीगल डिलीवरी नहीं होगी, एक और वाइड। जी हाँ बिल्कुल, इन 2 रन्स के साथ 88 रन्स की यहाँ पर सबकत ले चुकी है टीम लियारी लेजेंड्स। और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, ये लेग बाय रन होंगे, और चूंकि अब क्रॉसिंग हो चुकी है तो अब निज़ार लेफ्टी 50 रन अपने शायद मुकम्मल ना कर पाए। वेरी अनलकी फॉर निज़ार लेफ्टी। और यहाँ स्ट्राइकर बल्लेबाज बेहतरीन टाइम करना जानते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं कारी हमीदुल्ला, बड़े शानदार बल्लेबाज हैं, और इस सीज़न में जो कैंपेन रही है कारी हमीदुल्ला की वो बहुत शानदार रही है। पहली बार सामना करेंगे इमरान का कारी हमीदुल्ला, और ये गालिबन एक और वाइड बॉल होगी। बड़ी बदकिस्मती है इमरान की, जिस गेंद को वो बीट करते हैं अंपायर उसे वाइड बॉल का इशारा दे देते हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करूं मैं। जी हाँ बिल्कुल, पहली 4 गेंदें और 23 रन लीक कर चुके हैं इमरान मेहरू, और एक्स्ट्रास के बहुत ज्यादा रन लीक कर चुके हैं। बॉलिंग जारी रखेंगे, सामने मौजूद हैं कारी हमीदुल्ला। और इस बार लकी रहे हैं, और ये फील्डर ने गेंद को मिस किया। इसको कहते हैं कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी कुछ मरने का शौक था। जहां 1 रन था वहां 2 रन बन रहे हैं। 91 for 3 लियारी लेजेंड्स, और उनकी बढ़तरी जो है 93 रन की हो चुकी है, और एक मरहले पर लियारी लेजेंड्स दिक्कत की सूरत हाल से 2-4 थी, लेकिन अब उन्होंने स्कोर बोर्ड पर वो रन हासिल कर लिए हैं जो क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए मुश्किल जरूर होंगे। और इस बार भी अंपायर इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा देंगे। बिल्कुल जी हाँ, बड़ा एक्सपेंसिव ओवर है इमरान मेहरू की जानिब से। 27 रन लीक कर चुके हैं इस ओवर में, जो कि अब तक आज के इस मुकाबले का सबसे महंगा तरीन ओवर है। इस ओवर में आखिरी मर्तबा, और इस बार जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे विकेट कीपर गेंद के नीचे, और उन्होंने गेंद को कैच किया। 96 रन का अब हदफ मिला है इस मैच को जीतने के लिए क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को। 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स ने बनाए हैं, और आखिरी 12 गेंदों पर 47 रन बने हैं। जी हाँ बिल्कुल, 96 रन का हदफ है क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में नहीं होगी क्लिफ्टन पॉपुलर। और ये देखिए हवा में खेले थे कारी हमीदुल्ला, और स्ट्रेट अवे कैच लिया गया उमर बाजवा की जानिब से। निज़ार लेफ्टी शानदार बारी खेली है, 41 रन नॉट आउट की बारी खेलकर इस वक्त अपने पवेलियन की राह देख रहे हैं। लियारी लेजेंड्स का डगआउट, और यहाँ पर हाइलाइट्स हसन पेंडा चार्ज किया था। निज़ार लेफ्टी बड़ी खूबसूरत शॉट निज़ार लेफ्टी की जानिब से बड़ी खूबसूरती से पुल किया था। यहाँ हसन पेंडा अनलकी साबित हुए और शिकार किया गया उनको इरफान नोना की जानिब से। हिट किया गया निज़ार लेफ्टी की जानिब से। यहाँ ज़बरदस्त है मुज़ाहमती दाऊद मोहम्मद सुलेमान की तरफ से एक और बेहतरीन दिलकश स्ट्रोक। निज़ार लेफ्टी थ्रू द स्क्वायर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खेलते हैं, और यहाँ रन आउट हुए थे दाऊद मोहम्मद सुलेमान। निज़ार लेफ्टी फिर से एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया था। एक और दिलकश स्ट्रोक है निज़ार लेफ्टी फ्रॉम चरसदर की जानिब से। की बार भी इस शॉट को लॉक किया था टू डीप बैक विद क्विल। यहाँ अनलकी साबित हुए थे अशरफ पठान कैप्टन, चल किया था उनको पवेलियन वापस। अनदर 6 इस टाइम कारी हमीदुल्ला आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह देखी, इमरान मेहरू ने शिकार किया। स्कोरबोर्ड 8 रन की बारी खेली हसन पेंडा ने। निज़ार लेफ्टी 41 रन शानदार रहे। दाऊद मोहम्मद सुलेमान 13 रन।
अशरफ पठान सिर्फ 6 रन स्कोर कर सके। काही हमीदुल्ला 2 रन स्कोर किए हैं। और यहाँ पर इरफान नोना बड़े कामयाब रहे, 2 ओवर 16 रन देकर 1 विकेट को अपने नाम किया है। इमरान महरू 1 विकेट अपने नाम किया है। विकेट एक्सपेंसिव 27, 27 रन फरहाद आलम अब्दाली और उमर बाजवा की जानिब से 24 रन। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है कॉम्बॉक्स में तब्दीली का। नेक्स्ट इनिंग में ज्वाइन करेंगे राना अशफाक अलोंगसाइड जीशान खालिद। थैंक यू। Thank you very much, Raja Ali Hasnan and Yahya Hussaini. The last innings of this match is coming up, and it looks like it's going to be an entertaining innings. Welcome, Zishan Khalid. Thank you so much, Rana Ashfaq. Yes, you were right. It's going to be entertaining stuff. Well, the whole Karachi Table Premier League Season 3 has been nothing short of entertainment for all the viewers who are watching this table tournament across the globe. And we are in for an exciting run chase. Now, I would like to mention a very important point as we see the two openers making their way out there at the center. Asad Shah, Mr. 360, alongside Fahad Miyachino, who needs no introduction. Lyari legends, after 4 overs of 44 for 4, that's where Irfan Nana and Farhad Abdali were bowling so well. And they managed to score 50 plus runs in the last 2 overs, because of which Lyari legends have now put up a decent total. Clifton Popular now need 96. That means they leaked 51 runs in the last 2. Yes, you're quite right. That's when they lost the bit of momentum and lost the bit of rhythm. And they not only they got spanked for a few sixes, but also they bowled too many wides ball, I reckon, particularly in the final over. But still gettable target as far as target goes. Gettable, and particularly Fahad Miyachino and Asad Shah are the two. They can do the damage in first couple of overs. Yeah, it is pretty gettable because these two gentlemen have batted really well so far in the tournament. In fact, I still remember they won a game by 10 wickets. They weren't even dismissed. And in one game, in both the innings, just one time they lost 1 wicket and they scored more than 140. So the capability is there, but the fact that it's a crunch game, because Lyari legends will be coming out all guns blazing because they want to secure that spot in the semi-final, and they will be making sure that not only they get these batters out, but they also restrict Clifton Popular so that they cannot chase down a target. And they're also performing very frequently as well, because they started off with a couple of defeats, but then they've got 3 consecutive victories under their belt. So it's going to be a very good contest between ball and bat, but let's see who will be the victorious. Fahad Miyachino, his full name is Fahad Alam, and a very fine cricketer, no doubt about that. He plays well, not only through the onside but also through the offside. So is Asad Shah. He does play either sides of the wicket pretty nicely, and he's a very talented and a very good bowler as far as Rana Mohsin is concerned, who will start the proceedings. Talking about Asad Shah, he's known as Mr. 360. He has got all the shots up his books, and he'll have to utilize all of them. Both these partners will have to keep on talking to each other. They can afford to play a silent over, but they can score just 8 or 10 runs, because 8 or 10 runs in table cricket is considered to be very good from the bowling's point of view, but they have the ability of coming back. And they can easily target any one particular bowler. Like if you can target a bowler in which you can score 30 odd runs in there too, then the job gets even simpler. Yeah, no doubt about that. They can get 60, 70 runs out of 3 overs. They can even afford to play 2 or 3 overs like 8 runs and 10 runs, because they are very much capable to hit out 30, even more runs in 1 over. And there you see, Zohair Nasir is very active, talking with his bowler about the fielding settings. Yeah, he has been very active and very vocal, Zohair Nasir, with his team. He hasn't had much of the time with the bat so far in this tournament, but he has taken some excellent catches, and he has been very proactive whenever it comes to communication with the fielders and with the bowlers. Absolutely, he took a few blinders behind the stumps in a slip.
Rana Mohsin, after making some adjustments in the field, now looks pretty much ready. And if you talk about the catches that he have taken, sometimes it becomes so difficult, especially when you've got a wicket keeper and a fielder at short, fine leg who are pretty close to the ball. And we have seen the communication error so far between the two fielders. But the way he has taken those catches while diving forwards and judging the ball by keeping the eye on the ball, I mean, he has played his part, Zohair Nasir, not only in organizing this Karachi Tape Ball Premier League, but also a vital member of Lyari Legends. Probably that's why fielder don't try to get close to him. After all, he's the chairman. I'm just kidding. Come on, Zohair. Here's the first ball. And here's the first big shot. It's into the gap. That's going to run away for 4. Typical for Halmia Chunnu start this. It was a shorter lane delivery, but once again, since he's a tall batter, he got easily on top of the bounce. Indeed, he's a tall lad and he pulled that one away with authority. Oh, quick reflexes as well. This is what Fahad Mia Channo is all about. He doesn't care who's bowling to him and what kind of a surface he's playing on. He knows one way, and that is to play his strokes. It's up in the air. He hasn't timed it. There is a fielder at long off who is trying to get underneath that, and he has taken it. Wow, what a comeback this is from Rana Mohsin. The revenge has been sought. Fahad Mia Channu dismissed. I can tell you that this match has already entered in an interesting phase. Fahad Mia Channu started off with a boundary, but then that happened. That wasn't a very good shot at all. Particularly when you just had hit a boundary. I think it didn't need to play a stroke like that. But that's what happens in cricket. He goes for 4 and it's 1 down for 4 now. The Clifton Populars have just lost their star batter, Fahad Mia Channu. Got a boundary of the very first ball, was holed out in the deep of the next. And they're still not out of trouble because in walks Umar Baja. Now he's having a horrible time in this tournament with the bat. He hasn't contributed at all in the tournament, Umar Bajwa. And he must be very short of confidence as well, because when he came on to bowl the 5th over, he was the one who allowed Lyari Legends to come back in the game, because he bowled few wide deliveries and gave away 20 odd runs in that 5th over, from where Lyari Legends gained that momentum. Yes, he's having a almost nightmare. But let's see if he can compensate here with the bat. He's got a good chance. Can he deliver? Clifton Popular needs him. It's important that his captain Asad Shah regularly have a word with him. Rana Mohsin once again amongst the wickets. Good delivery, really good delivery. Once again a nothing shot in the end. It was a length ball and his feet were stuck. And he was just looking to force that ball towards long on region, and they have already have a position, field a position perfectly for that sort of a stroke. Yeah, the batsman was in some sort of an awkward position while he was playing that stroke. Fahad Mia Channu explaining his companions that that wasn't his fault that he got out. That's what the most batsmen do. Slower delivery, leading edge, and he's so lucky. There is a throw at the bowler's end and he misses as well. They are living dangerously right now, Clifton Populars. Once Kamran Akmal edged a ball to the boundary for 4 at domestic National T20 Cup. We were commentating. I asked him, why you edged that one? He said, no, Rana Sahib, I guided that one. I didn't edge that one at all. So, usually batsmen don't accept their fault easily. Just think about the pressure Asad Shah must be feeling right now. He has lost his opening partner. He has got so much understanding with someone like Fahad Mia Channu, but he has been dismissed. He has got a batter at the other end who is struggling. So responsibility gets even more bigger on the captain. Their strategy now should be very simple. Asad should try to play out all the 5 or 6 overs
and other batting should be revolved around him. I think they still can win this match quite easily if Asad Shah stays till end. Change of angle around the wicket. It's a wide down the leg side, so they're going to get 2 more runs to the total. Yeah, with those wides, I think if Asad Shah stays and other batsmen revolved around him, I think there shouldn't be any problem. But to me, I think this match is going to see a lot of ifs and buts and a lot of ups and downs. Rightly pointed out, Rana Saab. Asad, the captain, yet to get off the mark. Rana Asad on top of his game. Such a good feeling when you get a wicket early in the innings. That too of a batter like Fahad Mia Chunnu. Pitched up. Hit away down the ground. There is a fielder out there at long gone, but the ball has gone past him. Asad have got a lot to like about him, but this is one thing I like about him most. Not only he goes for the sixes, but he knows exactly where the fielders are. At times he dissects the field as well, and at times he maneuvers the field well. He knew exactly where the fielder was. He knew the mid-wicket was inside the circle. That's why he got that one over the top of mid-wicket and picked up a 4. Yeah, he has been regularly opening the batting, so he is aware about the rules that just 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle in the first 2 overs. He goes again, this time getting the elevation and the distance, the captain. And that ball has landed over the roof. That was some hit. Wow, short yard. He banished that one from that presence. Look at that. He just pivoted a bit and sent that one long, long way. That was enormous hit. Wow. Good way to end the over with 17 for 1 after the first over. They just played out 1 over and they look very thirsty. The golden, the reserve player with a bottle of water. I don't understand. Come on, Rana Saab, you have done enough commentary to understand that with the bottle of water, there comes a message. Why do they need to send a message while Asad Shah is playing well? And just 1 over has been finished. They should know that, Zishan Khalid, but I just don't understand. Well, In fact, I don't want to understand. Well, the message must have been simple. The captain, you stay out there. You are the leader of the ship. We all are depending on you. So far you have done it. You need to do it 1 more time. So somebody who came with the message, something bigger than the captain. From the owner, maybe? Right. Sohail left, he starts off with a no ball. And Umar once again missed out. Well, at least now he can hit the ball out of the park, Umar Bajwa. Yeah. License is given to him now because he cannot be dismissed on a free hit apart from getting run out or obstructing the field. Fair call from the umpire. He overstepped by a good margin. It's a free hit. He cannot be dismissed. They cannot afford to change the field. Lyari legends. Another swing and a miss. Well, Rana Saab, you are more experienced than me. I'm pretty sure he's not the first Bajwa who has disappointed. I am not more experienced than you at all. I am very humble. I am very new in this business. Slower one. Picked up. It's up in the air. He hasn't timed it. Fielder getting underneath that. And he has taken it in the, well, 6th or 7th attempt, finally. And once again, it's Umar Bajwa who disappoints. Absolutely. Fielder almost juggled with that one. There you see. He did try to hit that one over mid-wicket. It got the elevations but didn't get the distance. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, he almost enjoying there with the ball. Bajwa goes for 1, 19 for 2.
Good to see the crowd has turned out in numbers to witness this all-important clash between Clifton Popular and Lyari legends. The Clifton Popular have just lost their second wicket. Rana Mohsin involved in both the dismissals, got a wicket of his first over and then took a really good catch to get rid of Umar Bajwa. Yes, Mohsin is instrumental in both the dismissals. First he bowled a good over in which he picked up a wicket as well, and that was of Fahad Mia Channu, and then he took a very good juggling catch. Kamran Lefty is the new batter in at number 4. And look at the captain. He's just enjoying himself. Yeah, chewing the chewing gum. What should it be called? Or doing something else with the chewing gum? Facial exercise. Changing his angle, coming around the wicket, right into the block hole. Just a single to get off the mark with. In our childhood period, we used to take a lot of ding-dongs. Not quite sure whether ding-dongs exist nowadays or not. And we ate a lot of copra trophies, black trophies, and many others. Although I'm not as old as you are you thinking. We still have it. We still have them. That's good. Not much of a difference between our age, Rana Saab, I believe. My first kid is now 13 or 14 years old. Good to hear about that, Rana Saab. Meanwhile, Sohail is continuing. Powerfully struck on the offside. Look at how fast that ball has travelled across the boundary ropes. Well, that travelled like a bullet. Absolutely spot on. He struck that one pretty hard. And some disdain. Oh, look at that. He looked brutal. Come on, boy. That was some hit. Even the batter at the non-striker's end, Kamran Lefty, enjoyed that. Asad Shah so far is on a roll. He has had 2 boundaries and a maximum. Sohail Lefty is going to once again come over the wicket. So far so good, just 7 runs conceded and a wicket has been taken by the left arm seamer. There you see the wicket keeper and Sohail Nasir adjusting the field. They're just asking the fielder at long on to move a little straighter. No matter how many changes you can do in the field, if you've got a batter like Asad Shah who can play all across the ground, there's no one stopping him. Yeah, the fielder who was at mid-off also called the bowler in and whispered some wisdom words from a little distance. Full toss. It's up in the air. Rana Mohsin will just watch that ball sail over his head. And you also could ask from the fielder, that's what you told me? Oh my God. A fielder can ask him. Look at that. That was a rank bad full toss and batsmen took full advantage of that. There is a bit of flamboyance whenever he is looking to play those big shots. His body weight was going backwards when he was looking to play it straight down the ground. And he's not that bulky. We talk about Asad Shah. Special player. Scored it past that fielder at mid-off. It's running down. There is a fielder at long on. Rana Mohsin cutting that one off. A single to the captain. Yeah, he's as slim as anyone. And he got a good elasticity in his body. 2 overs have been thinned down. 2 down for 31. 65 required of 24 balls. Whenever somebody talks about slim or fit boys or lads, I take a look at myself. And it happens naturally. Yes, indeed, you are a very attractive person, Rana Saab.
I think you are standing in a ceremony, and it is your majesty, by the way. Well, I want an extend in the commentary box as well. That's why maybe. It is again. It is your greatness. I'll take it. So let's bring focus back into this game. Pretty even Stevens so far from Clifton Popular's point of view. Although they would have loved someone like Fahad Mia Chunnu to stay out for a bit longer. That wasn't the case. He was dismissed in the very first over. Ahmed Kulfi, the new bowler in, will be bowling the third over of the innings. Now I'm really surprised why Rana Mohsin didn't continue for the third over. He could have easily put the pressure back on the new batter, Kamran lefty. Yes, agreed. I think the way he was bowling in the first over, he should have been given the second over as well. And they could have tried to get Asad Shah out through Rana Mohsin. But let's see if Ahmed can come up with some good work for his team. So you can say it's a gamble that has been taken by the fielding side. They will be hoping that it pays off. They might be protecting one more over of Rana Mohsin for the latter stages of the innings. Starts off with a slower one that has been given as a wide. Might have been a leg cutter attempted. Went way outside the off stump. This is where the bowlers got to be very careful. They got to bowl well within the guideline if they are bowling outside the off stump. And they need to practice a lot. But since he's a new bowler, Asad Shah will be looking to target him. He has targeted some really good bowlers so far in this tournament, so sure it was wide, it was there to be hit. Just trying to hit that a little too hard maybe. Yeah, I think he did try to hit that one very hard. That's why he did not able to time that one at all. Match is still, I think, nicely poised. 63 to be made of 23 balls with 8 wickets in hand. I think Asad Shah is the biggest problem which fielding side is having at the moment. Otherwise they can think, they can fancy their chances a bit more than the batting side. It all comes down to one main wicket. Low full toss once again, couldn't time it well enough. He's disappointed there. Asad Shah will just get a single towards long off. After having bowled a wide ball, I think Ahmed bowled a couple of good balls. And he need to bowl 4 good balls more, which is difficult, I know, I can understand. But if he can able to finish his over up to 12 or 14 runs, I think it will be good for him and also for his team. Yeah, in table cricket, you need to keep your attention and concentration on almost every delivery of the over. It's not the case that you have picked up a wicket or 2 in the first 4 balls and you can still go for 2 maximum in the last 2 balls. We have seen bowlers on hat-trick not given any sort of respect. Fuller delivery once again, couldn't time it well enough, will just get a single Kamran lefty. On so many occasions we have seen the new batter coming in facing a hat-trick delivery and they have dispatched it over the boundary ropes for a maximum. Absolutely right. It simply means you can't get complacent at all. If you get complacent, you can be punished by any batter, by any stage of the game. And anyone can go mad in this ball cricket. In the first game between DHA Dabanggs and Johar Jawans, it was Umri Pacer who was on a hat-trick and the new batter came in. Hit him over long gone for a maximum. Yeah, I was commentating that. I enjoyed that. Shot! Wow, that was some hit from Asad Shah. Once again, the ball has landed on the roof. Well, his name should be printed on that roof because that's how many times he has hit that. Absolutely. The moment it hit the bat, the 6 was written all over it. Beautiful shot. That was a 6 from the moment it left the bat. What a magnificent shot. Just look at the bat swing. Speed of the hands. Finally, he looked a little satisfied, Asad Shah, with the connection that he got. Just when we were mentioning you cannot afford to relax even if you have bowled 3 really good deliveries at the start of the over. Follows up with a good one. A
fuller delivery, which was just hit towards long off for a single. Still, I think Ahmed has done a marvelous job. Osaka Crico Tape, one of our sponsors. And these balls are being taped through Osaka Crico Tape. Bundles of them, dozens of them. Wow. You see, I think one of our DJs, oh no, scorer and the reserve umpire. They've got plenty of tapes there. Full toss. He has hit that up in the air. He hasn't timed it well enough. There is a fielder who is trying to get underneath that, and Dawood Suleiman takes a really good catch. In fact, that has been signaled as a no ball. Wow, that is interesting. Oh dear. Another twist in the tail. Would you believe that? Ahmed thought he had caught his man. Fielder paddled back a bit. Took a very good catch. Watch that again. And I think umpire made a fair call. That was above waist height to me at least. Yeah, it was definitely over waist height. But since because of the angle, the ball was going across the left hander, to the naked eye, it looked like it was a juicy full toss. But it's such a harsh game for a bowler, modern day cricket. Absolutely. I can go on and on for the bowlers, but I don't have much time. I believe you were a bowler back in your playing days. Never been. Slower delivery, thumped down the ground, one bounce straight to the fielder at long off, who fumbles up a bit, but they are just going to get a single. Zishan, I neither was a batter nor was a bowler. I was the captain of the side. That's why I always opened. That means you used to own the bat and ball. Meanwhile, 3 overs are now done. Clifton Populars are 46 for 2. And to take you till the end of the innings, it's going to be Falak Sher alongside Farooq Riaz. Thank you very much, Dishan Khalid and Ruan Ashfaq. The action continues. They need 50 runs, Clifton Popular, to win this contest, and they have 18 balls to go. And the match is evenly poised to me. And I've been joined by Falak Sher in the comm box. Good evening once again. Thank you, Farooq. Yeah, you said evenly poised until Asad stays there at the wicket. A lot depends on him from now on. They've got 46 of the first 3, and let's see if they can get the remaining 50 of the last 3. And Abdul Salam has got the ball in his hands, who is in very good bowling form at the moment. Yes, he's in good form, and he's the kind of bowler who takes 2 to 3 seconds before setting off for a run-up, and that sometimes impatience the batsman as well. So Asad Shah on 30, playing with a strike rate of exactly 300. He's a vital man for Clifton Popular at the moment. Missed it. Try to heave it to the onside in his typical Asad Shah's manner. Starts with the dot ball, Salam. Well, I was having a look at the bowler Salam. He takes all the time in the world before he bowls his delivery. Maybe taking over that from great Zahir Ahmed, who's representing DHA Dabanggs. Takes all the time in the world before he bowls. And Kainat was doing commentary in the last stint. She was raising a question that, is it allowed officially by the umpires that you can take all the time in the world to deliver your over? But there should be a timing criteria as well, as we have in cricket ball, in T20s and ODIs. In table, I don't know. The umpires know better, but there should be. Yes, umpires always take action when any player takes unnecessary time, either batsman or bowler. Flicked away. Not the best of timing. Has it got the placement right? Yes, it goes for 4.
Actually, he's got one right inside half of the bat, but flick of the wrist, bottom hand coming into play. And timing was good enough to take that ball into that fine leg boundary for 4. Use all the pace offered by bowler Salam. Just a flick of the wrist, and there's a change in the fielding position. 2 players are swiping the air. One man goes to deep fine leg and one at square leg next to umpire. So 50 comes up for Clifton Capulars with that boundary. Talking to himself, taking all the time. Salam the bowler. You just can't do that. He has taken already a time of a couple of deliveries and still he loses his run-up. Oh my word, you got to be kidding me. That's not acceptable. What is he doing? That reminds me of somebody like Hardik Pandya when he was bowling to have a look at that. One of the Pakistan batters and he got the wicket. Or was it Imam ul Haq if I'm not wrong? Yes, in the World Cup. Flicked away, high in the air, somebody wants it. Should be taken, gone! Asad Shah goes. Salam has got the breakthrough, exactly what his captain wanted, and it's a big one. I wonder if that is going to be the theory from the bowlers. Take all the time in the ball and do something magical on your bowling mark and then get a wicket for yourself. Oh my word. Pandya removed the batter, Imam ul Haq, on that occasion, and here is Abdul Salam to remove Asad Shah, the captain, who goes for well-made 34, 50 for 3. Right then, Salam once again amongst wickets, taking his first wicket, and 3 wickets are down our Clifton Capulars, and now they have got a big job to do. Rest of the batters, in the absence of somebody like Fahad Miachennu and Asad Shah, who were in supremest of the forms, and both of them are gone now. So it's going to be a very tough ask for these players. Tahir Pindi has joined Kamran with a lot of work to do. Tahir Pindi got out very early in the first innings. He was trying to chase outside the off-stump delivery, fuller ball. And then I think Salam was the man who picked him up. And now once again he's got the opportunity, much bigger opportunity to finish the game for his side. And he has the opportunity to take his revenge from the bowler as well. Same bowler, Salam. Well, I guess Salam once again will try to bowl outside the off-stump Yorker, very full. And he will test Tahir Pindi again. Pulled away. He has got the timing right. Yes. He's found the fence. One bounce into the boundary. He is off the mark with 4. Yeah, very good pickup shot by Tahir Pindi to get himself going here. Nicely picked. And it was a 1 bounce boundary. It's more of a pickup shot from Tahir Pindi. Beautifully controlled. Now it's time to go downstairs to Hina. Thank you so much. Well, right now I have been joined by 2 owners of 2 interesting teams. Basically, they have some interesting position in this league. Danish Khan is on my left, who is owner of DHA Dabanggs. They have been amazing in this league and they have qualified for the semi-final. But on my right is Muzammil Athar, who is owner of Johar Jawans. Unfortunately, they are out of this league. But still, हम start करेंगे Muzammil Athar से, because हारना जीतना is part of game. But what are the future plans for the season 4?
देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है कि आप अपनी हार को खुले दिल से तस्लीम करें। और पहली बात यह है कि मैंने कल भी ये कहा था कि हमारी एक टीम है जिसके तहत हम KTPL के अंदर हम शामिल हैं, लेकिन एक्चुअली हम KTPL के साथ हैं क्योंकि ये जो लीग हो रही है ये इस वक्त दुनिया की टेप बॉल की सबसे बड़ी लीग है, जो पहली दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर 34 कंट्रीज़ के अंदर और 84 चैनल्स के ऊपर दिखाई जा रही है और लाखों करोड़ों लोग इसको इस वक्त देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ताल्लुक KTPL के साथ है। डेफिनेटली जौहर जवान जो है वो सक्सेसफुल नहीं रह सकी इस सीज़न में, लेकिन नेक्स्ट सीज़न के अंदर आप देखेंगे इसको फ्रॉम द डे वन आप इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। Definitely, Muzammil Athar looks very energetic for the future plans. But we have Danish as well. Danish, माशाल्लाह आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, सेमीफाइनल खेलना है, कैसी फीलिंग्स है फर्स्ट डे को लेकर और आज आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है? मेरा फर्स्ट डे से बस एक ही ओपिनियन होता है कि जो टीम बेस्ट खेलती है उसके रिजल्ट बेस्ट होते हैं, ऑन ग्राउंड उन लोगों को मिलते हैं ना। मैं पहली लीग से जो वेरी फर्स्ट एडिशन हमारा KPTL सीजन 1 का हुआ था तब से लेके अब तक, क्योंकि पहला सीजन हम लोग हारे थे, ठीक है, जब हम लोग पहला सीजन हारे थे तो बहुत कुछ सीखा था। नेक्स्ट सीजन के अंदर हमने टीम बड़ी ज़बरदस्त करके कोशिश करके बनाई और टीम ने परफॉर्म किया, टीम जायल होकर खेली और फिनिश अच्छा करती थी जिसकी वजह से उसको परफॉर्मेंस के रिजल्ट एंड ऑफ द डे मिलते थे। देखें, मुजम्मिल भाई ने इतनी खूबसूरत बात की, KPTL इज़ अ फैमिली हमारी ना, हम लोग एज अ फैमिली इसके अंदर काम कर रहे होते हैं और ये लीग के अंदर हम लोगों का सबका एक ओनर्स का एक किरदार है आपस के अंदर कि हम बड़ा एक काम कर रहे होते हैं, बैक हैंड पे हम लोग बड़ा काम कर रहे होते हैं। और मैं मुजम्मिल भाई से अक्सर लड़ता हूँ इस बात पे कि मुजम्मिल भाई आप ड्राफ्टिंग में बैठते क्यों नहीं, आते हैं और किसी को सौंपते और निकल जाते हैं। अब बेसिकली इज अ बिजी मैन क्योंकि इन पर बड़ा लोड है, मलन फ्लिप्स एंड डेल का बड़ा लोड है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने पर्सनली इनको कहा है, जैसे जफर भाई के साथ लग के मैंने एक टीम उसको रंग दिया है मलिर मलंग को, तो मैं इनकी भी टीम के लिए काम करूंगा इंशाल्लाह कि एक टीम बन के कम से कम फाइटिंग करे। हम लोग भी यहाँ पे फाइटिंग मोमेंट पे लड़े हैं, लेकिन हमारे 4 प्लेयर जो कि दुबई खेलने गए हुए थे, कादिर कश्मीरी, जहीर कालियान, सरदार, ये लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह आए। तो आपने 2 परफॉर्मेंस के अंदर देखा होगा हमने बहुत नीचे रन के ऊपर टीम को आउट करने की कोशिश की और फिनिश किया हमने, टीम ने फिनिश करके सेमीफाइनल में आज क्वालिफाई करके अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 1 पे पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह टीम हमारी। डेफिनेटली। वेल मुजम्मिल अथर, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के साथ आपने ये लीग में हिस्सा लिया और ओवरऑल एक्सपीरियंस आज के दिन तक किस तरह आप इस शेयर करेंगे? देखिए, मैं ये KTPL की और बदर एक्सपो की बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि इस वक्त डेल जो दुनिया की सबसे बड़ी PC बनाने वाली कंपनी है कंप्यूटिंग की, और मुलर एंड फिप्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है तमाम सेगमेंट्स के अंदर, चाहे आप कंज्यूमर ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, टेलीकॉम ले लीजिए, IT उसके अंदर सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इन 2 का शामिल होना इस लीग के साथ, बोथ आर एक्चुअली US बेस्ड कंपनीज, इन दोनों का शामिल होना मैं समझती हूँ कि ये इस लीग की कामयाबी की बहुत बड़ी दलील है। और जिस तरीके से इस लीग को बदर एक्सपो और ज़ोहैर नसीर साहब लेकर चले हैं फ्रॉम द डे वन, KTPL सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3, तो हर आइंदा आने वाला सीज़न हमें ये लगता है कि शायद ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचेगा और ना सिर्फ ये पहुँचेगा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अपनी जगह बनाने में ये कामयाब हो चुका है। डेफिनेटली। वेल, माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दानिश इज़ कि दानिश, आपकी टीम डिफेंडिंग चैंपियंस है और इसमें भी काफ़ी रेस में आगे आ चुकी है, तो ऐसी क्या स्ट्रेंथ्स आप मेंशन करना चाहते हैं कि आपकी टीम की रही है जिसकी वजह से वो इस बार भी कामयाबी के बहुत करीब है? नंबर 1 अली जफर सॉन्ग इज अली जफर एंड यूनुस भाई का बॉडी लैंग्वेज सबको पता है, जैसे क्रिकेट के अंदर उनका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या है। उनकी एक कल तक का जो मैसेज था वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनकी एक जुमला के यार तुम लोग बहुत ज़बरदस्त खेल लो, इसी स्पिरिट के साथ फिनिश करना, इसी स्पिरिट के साथ मैच खेलना, और तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ा सा बस ध्यान दें बॉलिंग पे, चीज़ों पे, फील्डिंग पे, बैटिंग पे, इंशाल्लाह यू आर अ विन, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है। मैं फिर अगेन यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों के अंदर एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस कहलाती है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। चले जी, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल चैटिंग विद बोथ ऑफ यू एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम्बॉक्स। Thank you very much, Hina Didar. Is CP now 30 runs away from the victory. 14 balls to go. Still, it could be anybody's game. Samad Kulfi into second over. Down the leg side, no real connection. Just one, they will take it. Well, he's been a touch expensive, is Ahmed Kulfi, the bowler, for my liking, because normally he's a very good bowler. He's got some pace and he's intelligent as well, and he knows how to work out different batters, certain batters. But at the moment, he's not finding it right. Let's see when he makes comeback.
because his team would definitely ask him to make that comeback right now. He got advice from our lefty. This is Chota Don. Dr. Don is having fun. Continues to enjoy this UBL in KTPL Season 3. Come on, make a selfie. Hand on the head, Ahmed Kulfi. Ball down the leg side, and no, it's a valuable 2 runs conceded, and ball has to be reloaded. Very tiny fellow that, known as Chota Don, comes all the way from Gujranwala. Has become an icon here in KTPL Season 3. Outside the off stump, should be a wide. So both the bowlers have got a long run up, and if they bowl a couple of wides in the over, obviously combined jointly they take extra time, and maybe they kill the time of 1 extra over. It's a very good point you made, because already I was assessing that Salam, his partner, when he was bowling, he was taking a lot of time on his bowling mark. And when somebody like Ahmed Kulfi comes with a longer run-up, bowls few wides, it's already, we are going to have to bowl an extra over. That is not going to help the timing cause. Outside the off stump, in the air, flat, 1 bounce, 2 bounces into the fence for 4. Beautifully played by Tahir Pindi. And nicely played through cover point on that occasion. Tahir Pindi was the batter, sliced it and got it over the top of the fielders in the circle. Couple of bounces into the boundary for 4. He didn't get the desired placement, but certainly result was in his favor. He was trying to clear extra cover drive, extra cover fielder, but a thickish outside edge, that ball traveled to the boundary. Try to smash it, beat him the pace, so it's a good comeback by Ahmed Kulfi. Back within the stumps. Still 21 runs behind. 20 now with that single. And with an over to come, it looks anybody's game, doesn't it? Absolutely, it could go either way, and the bowlers have extra job to do if they have to be disciplined. They can't afford to concede wides and no balls, or can't offer free hit to any batsman, because they can take plenty of advantage of that. Lots of discussion is going on. Now as a left-hander, Kamran has got the strike back, 9 of 6 to his name. He too can hit the ball a long ways, the left-hander, if he gets the ball in his arc. Cashed it as a cry, he wasn't in control, fell short, and they're coming back for 2. Rana Mohsin is not quick enough. And will they come back for 3? Yes. Poor fielding. 1 extra run gifted here. Yeah, that is the last thing they needed. Lyari legends. That was not required one bit by them. End of the over, 5 done. It's 79 for 3. $79 for 3. 5 overs have been bowled, and Clifton Popular, they need 17 of 6 deliveries. They are in a hurdle already. Lyari legends, they have to win here. And Clifton Populars play Kamran and Tahir Pindi. They are certainly capable. They have built a good partnership, and they have to finish a job. They just have to get 17 runs to take this side home.
still, certainly, it could be anybody's game. Well, yet again, it jogs my memory and reminds me of the World Cup 2016, the T20 World Cup, when 19 runs were needed and Carlos Brathwaite, the big man from West Indies, had a big bat in his hands, and the victim was the bowler Ben Stokes from England. And the World Cup was absolutely snatched by Carlos Brathwaite from the England. Yes, in that particular match, the length was a problem for Ben Stokes. He bowled length to Carlos Brathwaite, and he smashed all over the park. Even when the score was level, the one was required, still he went for the big shot. Can these two, or one of these two, do the same here? Kamran, the left-hander, and Tahir, who comes all the way from Pindi, the all-round cricketer. They have a chance to become a hero. So has this guy. He doesn't have anything lesser than them. Salam, he's been bowling brilliantly up till this point, and now he needs to prove a point that he's a good bowler in certain conditions as well. Well, he considered 14 in this first over, so anything around 14 or 13 will be wonderful for Lyari Legends. His captain will be over the moon. So right and left in combination has to do a job, has to deliver a win for Clifton Popular here. Some adjustment in the side screen. A lot happening there, taking all the time. Right then, 17 needed of the last over. Here we go. The fielders have taken their time. Now Salam will take his time. 3 to 4 seconds before he takes off. It's over 4 seconds now. He goes for it. Full shot along the carpet. Has he found the gap? Cut it off. Fumble. They are coming back for 2. Well, it's a good stop, but pressure mounting on everybody. It's a nerves game. 15 required now of 5 deliveries, 5 legitimate deliveries. Have a look at that again for an effort. It was a fumble, but he's done well to keep the ball in play. Otherwise, it was traveling very fast. Ahmed Kulfi was the fieldsman down there. Well, every tiny mistake in the outfield will allow the couple to go for the next run. And certainly, there was a pressure on the fielder. And that is why both batsmen were absolutely alert to go back for 2. So 15 of 5 now. Right then, even Hassan Penda is having a word with the bowler. Everybody trying to chip in with a piece of advice. There you see, tension everywhere. The dugout was there of Clifton Populars. Salam is ready to take all the time he takes usually. Went for it. Much higher, much longer. 6 more. Wonderful from Kamran. It was short, it was flat, it was out of the screws. Middle of the bat, 6 more. Come on, boys, you can do it. It's a crowd catch. What a blow that is. Once again on the shorter side. And he picked the length beautifully. Left-hander Kamran. A full-blooded strike. Pressure on the bowler. Pressure on Lyari Legends. 9 of 4. It's shifting. I tell you what, it's shifting towards Clifton Popular's way. But 1 wicket at this point can make it 50-50 right now. 1 wide at this stage can make 70-30 or maybe 80-20. Forgot about the percentage. See the live action. What will he deliver now? He bowled previously wide outside the off-stump Yorker, fuller ball. But in this over, he was on the shorter side. He has to find his right length. Goes for it. Onside. Is this a wicket? Gone! Comfortably taken. Kamran goes. Well, it's all happening. It's a wicket. Salam, the bowler, making a comeback.
Is there a twist in the tail? It's anybody's game, boy. Anybody can do it from here. Wasn't that shot, but beautifully struck, but wasn't good enough. Placement wasn't perfect. Nizar lefty was out there. He was cool as an ice and he picked it up beautifully. No mistake from him. And cameo is over from Kamran lefty. He's walking back. 4 for 87 on the board. Clifton Popular. Well, I tell you what a nail biter we are witnessing here in Karachi. Lyari legends up against Clifton Populars. 9 required of 3 deliveries with a new batter at the crease. Well. Tension's building up. I tell you what, tension's building up everywhere. Have a look at that serious face of Zohair Nasir. He knows the importance of this game. Yes, even the Steven now. 8 runs of the first 2 balls, then a wicket. It's not only a wicket, but it's also a dot ball that has brought a new batsman, Haq Nawaz. He got out early in the first innings as well. Some pressure on him. A new batter. Tahir Pindi is absolutely desperate for luck to get the strike back. Yeah, but even Haq Nawaz has been amongst runs of late. In the last couple of games, he has scored a few runs and a couple of cameos from his bat. Let's see if he can finish the job for his side here. 9 required of 3 deliveries. Equation is 50-50, I can tell you. And I think Salam now will be far more comfortable to bowl to the right-hander. He has bowled really well to the right-handers. He has bowled full outside the off-stump. And now both right-handers are in the middle. Everybody's pumped up. Everybody's super alert now. 9 of 3. He goes for it. Big shot. Is it long enough? He's got plenty of height. It's over the rope for 6. Haq Nawaz, you beauty. Oh, what a time to middle one. It's Haq Nawaz in the building, announcing his arrival at the crease just at the right time for the Populars. That's the maximum. 3 more. Boy, you can do it. Just a yard long. Just a yard long. Wasn't a perfectly timed shot, but well enough to clear the man. Pitched up length was a problem. Salam didn't bowl outside the off-stump as he normally does to keep the batsman quiet. And Haq Nawaz was absolutely ready to belt it away. What a blow that is. A wicket at this ball can bring it back. Yeah. All eyes on Salam. Can he be the hero for the legends? Can he be a legendary performer at this stage? It's a big stage. Even if he misses the ball, they will go for the run, for a bye or leg bye, because they have a wicket in hand. Tahir Pindi is out there, but Haq Nawaz has already began his innings in an absolute brilliant fashion. 6 of the first ball. Oh, what a game we have had in our hands, Farooq. I tell you what, it just can't get better than this. It just can't get closer than this. Absolute cliffhanger here in DHS Sports Club. Moin Khan Academy, Karachi. Number of one-sided games. We have seen quite a few close games, but not like this. It's going all the way down to the wire. He considered 14 in his first over. He has considered now, but 2 to go. He has to drive the runs big time. 6 wicket, 6. It's time for a wicket. What happens? Let's see. We can have a super over if they level the score. Here comes. Salam is absolutely ready. Haq Nawaz on a strike. Goes for a run. Could be run out here. Oh, he misses. Will they come back for 2? Scores are level now. Scores are level. Pressure on Lyari Legends. Going back for 3. Gone this time. Well, they've got the wicket eventually, but Salam, boy, what have you done? What a time to miss the target. Oh, he had a shy at the stumps and missed the stumps. It's drama all the way down to the wire. Have a look at that again. This was the moment. Had he hit that, they were in this game big time, but he's missed it. Nobody was in the frame, but the batsman was way out. But in the end, after a couple of runs, the run out took place.
but they have wickets in hand. Obviously, he missed a vital opportunity. The bowler, nobody was there to back up, so Haipindi has got the strike back. Scores are level. It's the red light, the confirmation, official confirmation of the run out. Now then, scores are level. And a wicket can bring in a super over, which you were waiting for, Farouk. They can just tap the ball and pick up one. They don't need to play a glamorous shot. They don't need to show any heroics. Just runs are always on. I hope they're hearing you. But will they change the field? Will they bring the fielders inside the circle? If they bring the fielders inside the circle, the Haipindi can play over the top to pick up one golden run. Reminds me of the ICC T20 World Cup. Misbarul Haq on strike. Joginder Sharma was the bowler. And he tried a scoop. And he was a goner. And Pakistan, that one cost Pakistan cop. That scoop by Misbah. And also the 99 semi-final, South Africa versus Australia. But wicket is not a problem. In that semi-final, Lars Klusner was the batter. And Alan Doland was at the non-striker's end. A run out. Couple of boundaries by Lance Klusner. And they were on the back foot, the Aussies. Damien Fleming was the bowler. Plenty of advice from Zoe Nasir behind their stumps. The fielders are absolutely close. Short mid off. Qari Hamid and also they have a short mid wicket. Short backward point. Everybody is ready to stop a single here. One important one. Look at Have that. a look at those butterflies around the bat. Looking to stop one run. Here we go. Easily done. Victory goes to Clifton Popular. It goes for the boundary. Haipindi finishes the job, and look at that celebration. Everybody, every supporter of Clifton Popular, they are in the ground. What a match. Yeah, back foot punch, a proper cricketing stroke by Tahir Pindi. Kept his calm, kept his cool, and saw his team to the victory. What a game of cricket we have had. Absolutely. Wonderful nail biter. Clifton Popular just beat Lyari Legends, and certainly the best game of the competition so far. Sad faces of Lyari Legends players. They played really well, but certainly they could not stop the flow of runs, and Clifton Popular in the end got 17 in the last over and achieved a very good win here. Well, I tell you what, in the end, one had to lose, one had to win, but Lyari Legends shouldn't feel ashamed by this performance, because if you lose a game, then this is the way to lose. Gone all the way down to the wire, but unfortunately just couldn't finish it. Spot on Falak, they played beautifully too. And, almost in every facet of the game, in every department, they were quite wonderful. Just the last over made the difference. 17 runs were required, and Clifton Popular, they held their nerves, they showed a calmness, and a couple of sixes picked up. Clifton Popular, one by Kamran lefty. That's a wicket. Highlights, in fact. That is how the chase began. Yeah, he got himself off to a rollicking start, but then he was caught. Was Fahad Miachanu Asad. Then lost it long, hit a boundary. And a 6 over mid wicket. That was a huge one. And that was miles in the air. This time he just creamed that through the covers. Full toss was there. Hit that miles in the air. Quite a few sixes from the batter Fasad. That was a boundary down to fine leg. And this was a chip shot. Timing was exquisite, but not good enough. Was caught by Mohsin. This was another full toss, which was belted down the ground for the maximum. Left-hander hit one over mid-off for a majestic 6. And this was carved away through extra cover for 4. And it was Kamran, the left-hander, who hit one in the stands. And he was caught at the deep mid-wicket boundary when he was trying another. Another one was in the air.
and a comedy of errors when a run out occurred just at the last minute. And this is how Tahir Pindi finished things off in style. A back foot punch. And the celebrations began soon after that. What a contest we have witnessed. That's a scorecard of the last innings. Fahad got 4, 34 to Asad of just 13, 1 to Umar. Kamran got 20, useful 20, 8 to Tahir Pindi. A match-winning cameo. Haq goes for 8 and Arbaz remain not out. That's the bowling card we have. 1 apiece for Rana and Sohail. Ahmed remained wicketless and 2 for 34 for Salam. Lyari Legends got 92 for 4, Clifton Popper 92 for 6, even Steven after the halfway stage. Lyari Legends got 95 for 4 in their second knock, and Clifton Popular in the end won by 5 wickets, and they got a victory in the very last ball. Now it's time for a break. After the break, we'll come back with the presentations.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 के मैच नंबर 27 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट अकेडमी से। और अब ये टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और आज मैच नंबर 27 की जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, अगर आप हमारा मास्टर शॉट देखें तो हमारी एक बड़ी ह्यूज प्रेजेंटेशन पार्टी हमारे साथ आज मौजूद है लियारी लेजेंड और क्लिफ्टन पॉपुलर के इस मैच के हवाले से। और इससे पहले कि मैं मैच के हवाले से आपको समरी पेश करूं, आज इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे ऑनरेबल गेस्ट होंगे ब्रिगेडियर नैयर अब्बास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सिंध, खुश आमदीद कहते हैं आपको। शमीम अहमद जमनाना साहब, ओसाका क्रिको टेप जो कि इस टूर्नामेंट में आप देख रहे हैं बॉल्स पर लगाया जा रहा है। ईशान और सुभान बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुनैदुर रहमान साहब सीईओ आर्टिस्टिक, अब्दुल कयूम साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट लाइफ को। राबिया उमर हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टनर स्पेंसर वेस्ट। इमरान अली रोशन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लिफ्टन पॉपुलर को और शिराज उमर लियारी लेजेंड्स को। इससे पहले कि हम अपने इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी का बाकायदा आगाज़ करें, आज लियारी लेजेंड्स ने पहले बैटिंग की, 92 रन्स किए, 4 आउट हुए उनके। जवाब में क्लिफ्टन पॉपुलर ने भी 92 किए, 6 आउट हुए उनके। और उसके बाद 95 किए सेकेंड इनिंग में लियारी लेजेंड्स ने 4 आउट हुए और 96 का उन्होंने टारगेट दिया जो 5 विकेट पर हासिल किया क्लिफ्टन पॉपुलर ने। और यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 में अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। भरपूर तालियां क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। और भरपूर तालियां तो हैं ही क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। और यहाँ क्लिफ्टन पॉपुलर के 4 खिलाड़ियों के लिए 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया गया है। और ये इनाम लेने के लिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद फिर अपनी पिक्चर बनाने के बाद चले जाएं। इरफान नोना साहब, हक नवाज, फरहाद अब्दाली और असद शाह कप्तान क्लिफ्टन पॉपुलर। जी इमरान अली रोशन साहब, अब्दाली आप भी आ जाएं, असद शाह भी आ जाएं और हक नवाज। अच्छा जी, 25,000 मिलेंगे इनको, देख लीजिए। और ओके ठीक है, इमरान अली रोशन साहब ने बहुत खुश हैं आज अपनी इस टीम की जीत के हवाले से। और आज के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए हम परफॉर्मेंसेस पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लियारी लेजेंड के कप्तान है अशरफ पठान, उन्होंने 9 गेंदों पर 23 रन किए। फिर निज़ार लेफ्टी ने 19 बॉल पर 41 रन स्कोर किए। फिर उसके बाद 2 आउट किए अहमद ने, अब्दुल सलाम ने 2 आउट किए। लेकिन हमारी जो ज्यूरी है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 की, उन्होंने जिस खिलाड़ी को आज के प्लेयर ऑफ द मैच के लिए मुंतखब किया है, उसने क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए पहले 15 गेंदों पर 39 किए, फिर सेकेंड इनिंग में 13 गेंदों पर 34 किए। और ये है कोई और नहीं, क्लिफ्टन पॉपुलर के कप्तान असद शाह। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ब्रिगेडियर नैयर अब्बास कि वो इनको शील्ड पेश करें मैन ऑफ द मैच की। ब्रिगेडियर नैयर अब्बास साहब। राबिया उमर और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, हमारे दोस्त अवैस मीर साहब। आप 5,000 का चेक प्रेजेंट करेंगे आज के प्लेयर ऑफ द मैच असद शाह को। राबिया उमर और अवैस मीर। और असद के लिए तीसरा गिफ्ट हैम्पर है और ये पेश करेंगे जनाब ईशान और सुभान बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल के लिए।
आज मैंने असद से बात क्यों नहीं की है, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ क्यों इनसे बात की नहीं मैंने। और कैच ऑफ द मैच की बारी है और कैच ऑफ द मैच है शोबान के लिए, जिनको ये अवार्ड देंगे शमीम अहमद जमनाना साहब, ओसाका क्रिकेट टेप का शोबान। और हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट ब्रिगेडियर नैयर अब्बास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सिंध को सोवेनियर पेश करेंगे कराची टेबल प्रीमियर लीग के सीईओ अवैस मीर साहब। और अब बारी है कराची टेबल प्रीमियर लीग के डॉन डॉक्टर कदीर की, जिन्होंने अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया। आ जाइए डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब की एंट्री हो रही है अपने बैट के साथ। और आज हमारे जो फैन ऑफ द मैच हैं हाजिक, माहद और अब्दुल हादी, आइए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इमरान अली रोशन, क्लिफ्टन पॉपुलर और शिराज उमर लियारी लेजेंड्स, वो ये बैट पेश करेंगे। इन बच्चों का बैट किधर है? रोशन और शिराज, ये बैट भी आप पेश करेंगे। यूबीएल अमीन कराची टेबल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 के मैच नंबर 27 में, जो कि लियारी लेजेंड्स और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान खेला गया। फील्ड अंपायर थे सिप्तान रजा, दानिश सिद्दीकी, नजीर बट टीवी अंपायर थे, राव वसीम फोर्थ अंपायर थे, नईम अहमद मैच रेफरी थे, अब्दुल रहमान और बिलाल नजीर इस मैच के ऑफिशियल स्कोरर थे। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज की लूजिंग टीम लियारी लेजेंड्स के कैप्टन अशरफ पठान को कि वो आए और कुछ बात करें। आपकी भरपूर तालियों में अशरफ पठान। अशरफ, 2 दिन पहले मैं आपको विनिंग कैप्टन के तौर पे बुला रहा था, आज आप हार गए। मुकाबला अच्छा किया आपकी टीम ने, मुझे तो लगा था कि 90 प्लस हो गए, बनेंगे नहीं है। नहीं, हमने रन अच्छे किए थे और हमारे अगेंस्ट जो टीम थी हमें पता था कि बड़ी टीम है, और हमने पहले मैच में जिस तरह पहली इनिंग में रन डाले, फिर दूसरे इनिंग में लीड ख़त्म की और फिर 95 रन किए, तो बहुत ज़्यादा थे उनके बॉलिंग के हिसाब से। और हम एक टाइम पे मैच में थे, 7 बॉल या 8 बॉल पे 27-28 रन चाहिए। कहाँ गलती हुई? बस क्या कह सकते हैं, अब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है, 9 बॉल हो या वाइड हो, वो डबल काउंट किया जाता है, तो हमसे वहाँ एक्स्ट्राज हुए। फिर ओवर थ्रोज पे बंदा बैकअप पे नहीं आया, तो लियारी लेजेंड के लिए मैं कह सकता हूँ कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और खुद को भी मरने का शौक था। नहीं, कोशिश करेंगे, अभी भी हम टूर्नामेंट में हैं, ठीक है, मैच हारने के बाद भी, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना आखिरी मैच अच्छा फिनिश करें तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। और किसी को इल्ज़ाम तो नहीं दिया आपने कि यार तुम्हारी वजह से आ रहे हैं? नहीं, सब ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ी साइड थी हमारे अगेंस्ट, तो बहुत अच्छा खेले हैं सब, और इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि जीते। ज़ुहैर भाई क्या बोले? ज़ुहैर भाई थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट है, हो जाता है। बहुत शुक्रिया अशरफ पठान, यही स्पिरिट चाहिए अगर आपको इस टूर्नामेंट में रहना है। और अब आपकी भरपूर तालियों में क्लिफ्टन पॉपुलर के कैप्टन और आज के प्लेयर ऑफ द मैच असद शाह। असद, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और एक हाई स्कोरिंग मैच, और आपकी टीम आज जीती है। और इनाम पर इनाम, फिर रोशन अली साहब ने 25,000 रुपये 4 खिलाड़ियों को भी दिए हैं, तो टीम का हौसला तो बड़ा बढ़ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, जो हमारा पहला मकसद है सेवन का सेमीफाइनल खेलना, उसके लिए हमने क्वालिफाई किया। बाकी नो डाउट आज जो हमें मसले हो रहे थे सेवन में, नीचे के प्लेयर्स स्कोर नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने साबित किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैच जीते। आज सिर्फ आपने रन्स नहीं किया, आपने विकेटें भी हासिल की हैं। अगर मैं देखूं तो आपके लिए अच्छी बॉलिंग की है, आपके बॉलर्स ने विकेटें भी ली हैं,
तो एक टीम कॉम्बिनेशन के तौर पर आप लोग उभरे आज। जी बिल्कुल, आज माशाल्लाह से जिस तरीके से हमारे नीचे के प्लेयर्स थे वो थोड़े क्लैप्स कर रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला। बॉलिंग माशाल्लाह से हमारी इस इवेंट में ज़बरदस्त जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल। ये बताएं अब आगे क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि अब तो नॉकआउट मरहला है। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल मैच है, कोशिश करेंगे जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे इसी तरीके से खेलें इंशाल्लाह और जी। बेस्ट ऑफ लक असद शाह, आज की विनिंग टीम क्लिफ्टन पॉपुलर के कैप्टन। यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 के मैच नंबर 27 की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी से आपसे इजाजत चाहेंगे। ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से खुशामदीद कहेंगे, जहां से आप देख सकेंगे मैच नंबर 28।
Once again, welcome you all from DHA Sports Club Ground, Moin Khan Cricket Academy. And we are ready for the toss of the last round match of this UBL Karachi Tape Ball Premier League. And this match is between Lyari Legends and Karachi Knight. Both teams' captain Ashraf Pathan and Haris Ali Khan is ready with toss with match referee Naeem Ahmed. Ashraf Pathan will flip the coin. KTPL. अशरफ पठान, आप टॉस जीतने में कामयाब हुए। आपकी टीम के लिए अब भी ये बड़ा क्रूशल मैच है। पिछला मैच आप बहुत ही तगड़े मुकाबले के बाद हार गए। वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ दिस UBL कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। क्या इरादा है, क्या कर रहे हैं? सर टीम बहुत अच्छा खेली है हमारे पिछले मैच में, बस वो हार बस बैड लक था हमारा, क्योंकि हम जीता हुआ मैच हारे हैं। आपने देखा मैच, तो कोशिश करेंगे कि उसी एफर्ट के साथ दोबारा जाए और इस मैच में 15-20 रन से कामयाबी हासिल करें, तो हमारे आगे जाने के चांसेस हैं। अशरफ, टॉस आपने जीता, क्या कर रहे हैं? फर्स्ट बैटिंग करेंगे। तो क्या जहन में रखा है, क्या टारगेट? क्योंकि आपने पिछले दोनों इनिंग में तकरीबन 100 रन स्कोर किए, उसके बावजूद आपकी बॉलिंग बनवा गई। तो कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा भी टारगेट वही है कि 90+ रन करें। बॉलिंग तगड़ी है हमारी, बस हो जाती है, तो कोशिश करेंगे दोबारा 100 रन बनाने की। कोई चेंज आपकी टीम में? नहीं, सेम टीम के साथ जा रहे हैं। चलो, विश यू वेरी गुड लक अशरफ पठान एंड गुड लक हारिस। टॉस जीतते तो क्या करते आप? मैं बॉलिंग करता। अच्छा, बॉलिंग का ही प्लान था। तो अब ये टीम पिछले मैच में जो इससे पहले मैच खेला है, दोनों इनिंग में तकरीबन 100 रन बना के आ रही है। क्या इरादा है आपका, कहां तक रिस्ट्रिक्ट करना है? नसीम भाई, 2-3 अच्छी टीमों को हमने कम रन पे स्टिक किया है, कोशिश करेंगे इस टीम को भी कम रन पे स्टिक करें। अरे आपकी टीम एक मैच जरूर जीतने में कामयाब हुई, बहुत कुछ लर्न किया होगा, कुछ चेंजेस आपकी टीम में? बेंच पे 3 लड़के थे, 2 बॉलर 1 बैट्समैन, आज उनको चांस दिया। कोई बेंच पे बचा तो नहीं? नहीं, आज पूरे हो गए। हारिस अली खान, विश यू वेरी गुड। थैंक यू सर। DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के सेंटर से रिपोर्ट यह है कि लियारी लेजेंड्स के कैप्टन अशरफ पठान ने टॉस जीता और इस आखिरी राउंड मैच में पहले बैटिंग का फैसला किया। और एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लाइव एक्शन।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से। केटीपीएल सीज़न 3 कराची नाइट्स वर्सेस लियारी लेजेंड्स, जहां पर मुकाबला है और लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। ये दोनों अंपायर्स हैं जो इस मुकाबले को ऑफिशिएट करेंगे और ओवरऑल अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा थ्रू आउट द केटीपीएल सीज़न 3 हुआ है। मेरे साथ हमारे सीनियर साथी जाया हुसैनी भाई मौजूद हैं। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया राना अशफाक। और ये इस केटीपीएल लीग सीज़न 3 का आखिरी लीग मैच है, जिसके बाद टूर्नामेंट अपने नॉकआउट मरहले में दाखिल हो जाएगा। कल 2 सेमीफाइनल और उसके बाद ग्रैंड फिनाले फाइनल की शक्ल में होगा। बिल्कुल, और ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले एक वुमेन का नुमाइशी मुकाबला खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर कल जो है सेमीफाइनल और परसों भी 2 मैचेस शेड्यूल्ड हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज पहला दिन था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले मैच का 346 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। और ये लियारी लेजेंड्स के दोनों सलामी बल्लेबाज और वार्म अप होते हुए मैदान में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये मैच ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ज़िंदगी मौत इस टूर्नामेंट में रहने के लिए उनके लिए है होगी, क्योंकि अगर उनको इस टूर्नामेंट में रहना है तो ये मैच जीतना है। क्योंकि अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि लियारी लेजेंड्स के कप्तान जो हैं वो अगले दिन यहाँ पर टॉस करने के लिए आएँ, तो ये आज के मैच की प्लेइंग लाइन है। जी हाँ, ये दोनों टीमें हैं। हारिस कप्तानी कर रहे हैं कराची नाइट्स की। इसके अलावा वसीम अप्पू हैं, उस्मान जान हैं, उबाद लेफ्टी हैं। साथ साथ जो है वो नीचे हम देख सकते हैं इमरान काजी हैं, अली शेर और हामिद। जबकि लियारी लेजेंड्स के लिए अशरफ पठान टीम के कैप्टन हैं, कारी हमीदुल्लाह हैं, राना मोहसिन बड़े अच्छे उनके बॉलर हैं। इसके अलावा निज़ार अली हैं जिन्होंने एक हाफ सेंचुरी स्कोर कर रखी है। शौबान सातो अच्छे खिलाड़ी हैं, अब्दुल सलाम हैं, दाऊद सुलेमान और ज़ुहैर नसीर। तो राना साहब, ज़िंदगी में आपने खाने के अलावा और किस चीज़ में शौक़ रखा है? फिल्में देखने का आपका शौक़ है? असल तो बात यह है कि कारी हमीदुल्लाह जो है बैटिंग पे आए हुए हैं। असल वो एक शेर था कि हो गया अगर इसमें भी नाकाम तो क्या करूँगा मैं, मुझे तो मोहब्बत के सिवा कोई काम भी नहीं आता। कमेंट्री के अलावा मुझे कुछ खास आता नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछना माजरत चाहता हूँ, तो मोहब्बत एक बार की आपने या कई बार की? ये कमेंट्री से बस जारी है। जब कोई नई सीरीज आती है, जब कोई नया मैच होता है, हर रोज़ होती है। निज़ार अली लेफ्टी, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अली शेर बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं। इस टूर्नामेंट के एक अच्छे फास्ट बॉलर की हैसियत से इन्होंने अपना तारुफ कराया है। सो हियर वी गो। और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लियारी लेजेंड्स एक इंतहाई अहम मैच खेलने के लिए तैयार। पहले बल्लेबाजी करेंगे वो कराची नाइट्स के मुकाबले पर। उनके दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं। कारी उबैदुल्लाह पहली गेंद का सामना करेंगे अली शेर की। जी हाँ, बड़े अहम मुकाबले में इससे पहले उन्हें शिकस्त हुई है क्लिफ हैंगर पे, जब पॉपुलर आखिर में जीत गए। और इस मैच की शुरुआत ही छक्के के साथ की है कारी हमीद उल्ला ने। बड़ा ज़बरदस्त आगाज़, और ये वो आगाज़ है जो चाहते थे, उनकी मैनेजमेंट चाहती थी, उनके कप्तान चाहते थे। पहली गेंद रेडार में और ज़ोरदार छक्का। राना साहब, इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे छक्के भी थे जिस पर अगर मेरा बस चलता। और ये अल्लाह की रहे इस बार कारी हमीदुल्लाह, क्योंकि गालिबन गेंद उनके जिस्म के किसी हिस्से से टकराई है। लेकिन यहाँ पर अंपायर ने जो है वो वाइट बॉल का इशारा दिया है कि कुछ ऐसे शॉट थे यहाँ पर जो छक्के के लिए मैदान से बाहर गए, लेकिन दिल चाहता है कि रन्स उनके ऊपर 6 से ज़्यादा हों। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़े बड़े छक्के, कुछ छक्के जो हैं वो टॉप टेयर पे जाके छतों पे गिरे हैं। ज़ुहैर नसीर KTPL के रूह रवा, और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है। मिडल हुई गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। बिल्कुल स्वीट साउंड ऑफ द बैट, स्वीट पार्ट से गेंद लगी और जिस वक्त बल्ले से टकराई उसी वक्त मोहर लगी थी इस गेंद पे छक्के की।
और अली शेर, नाम तो अली शेर है और इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदें की हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो बैटिंग टीम की तरफ से खेल रहे हैं या फील्डिंग टीम की तरफ से। और कारी हमीदुल्लाह बाकायदा वॉक करके, शफल करके बड़ी दलेरी से बैटिंग कर रहे हैं, इरादे खतरनाक हैं उनके। एक मरतबा फिर अली शेर आए और एक बार फिर गेंद को उठा दिया है और ये फलक बोस, तीसरा छक्का इस मैच का हैट्रिक। कारी हमीदुल्लाह बड़े खतरनाक मूड में हैं। ये स्ट्रोक भी बड़ा जानदार था क्योंकि गेंद एक दो टिप्पे खा गई बाउंड्री से अंदर, लेकिन रन्स बाउंड्री बहरहाल मिल रही हैं और बाउंड्री आफ्टर बाउंड्री। इन टूर्नामेंट के छक्कों को देखने के बाद आपको कुछ ये एहसास पैदा हुआ कि कुछ इतनी रफ्तार के साथ, और इस बार गेंद को सही तौर पर कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार मामला स्ट्राइक रेट चेंज होने की सूरत में सामने आएगा। पहला सिंगल इस ओवर में कि जितनी रफ्तार के साथ यहाँ पर रन बनते हैं तो उतनी रफ्तार के साथ बसें भी चलें। कुंदरी से कराची के लिए आपका एक पाँव कुंदरी में, एक पाँव कराची में, कभी एक पाँव सक्खर में, दूसरा पाँव हैदराबाद में, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पाँवों की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो सबसे बेहतर ये है कि मैं कोई करोला वगैरह ले लूं। नहीं ले लूं क्या मतलब, माशाल्लाह आपकी ज़मीन है कुंदरी में, आप तो प्राडो वराडो वाले लगते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। और इस बार गेंद को उठा दिया है, फील्डर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक रन बना, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज वापस मुड़े और जब तक फील्डर गेंद को पकड़ते, थ्रो करते, दोनों बैट्समैनों ने तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल किया। अली शेर मुझे कुछ स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बार बार वार्म अप कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। या तो इनको कोई थकावट है या कोई इंजरी है। या हो सकता है बिल्कुल ऐसा, क्योंकि काफ़ी लगातार मैचेस हुए हैं और काफ़ी दिनों से क्रिकेट जारी है यहाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर आगे हैं तो फील्डर गेंद के भागेंगे ज़रूर, लेकिन वो गेंद को उठाने के लिए तो अली शेर का एक बहुत ही महंगा ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, जहां उन्होंने 25 रन दिए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका। तो एक बड़ा ही अच्छा स्टार्ट लियारी लेजेंड्स का। बिल्कुल एक ऐसा आगाज़ जो वो चाहते थे, क्योंकि उनको ये मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी है। 25 रन पहले ओवर में बने हैं, 5 ओवर्स अभी बाकी हैं, एक बड़े स्कोर की जानिब कदम बढ़ा दिए हैं हमने। क्या बात है। और ये पॉइंट्स टेबल है कराची टेबल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 का। 10 पॉइंट्स दबंग्स के हैं, 10 पॉइंट्स क्लिफ्टन के, 10 पॉइंट जो मलीर के हैं। अब गुलशन और नॉर्थ में से जो ये मुकाबला जीतेगा वो 10 पॉइंट लेकर जो है वो चौथी पोजीशन पे आ जाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा नॉक आउट में। तो दोनों ही टीमों के लिए ये करो मरो की सिचुएशन है, डू और डाई है। तो कारी हमीदुल्लाह यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है और कराची नाइट्स ये सोचने पर मजबूर है कि आज ये ओढ़ के जो खुद को झुकाया मैंने, आज ये ओढ़ के जो खुद को झुकाया मैंने, लोग कमजोर थे इतने कि खुदा होने लगे। वाह वाह, ये मैं आपके स्कोर कमेंट्री प्रोग्राम्स तो और पढ़ता भी रहा हूँ आपको बहुत देर से। इसी दौरान शफीक आए और शफीक की पहली गेंद को पुल कर दिया है और कोई फील्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट, ऐसे चौकों की मजीद ज़रूरत है लियारी लेजेंड्स को। वो चाहते हैं कि ये मुकाबला जीतें, वरना 8 पॉइंट्स पे स्टे कर जाएंगे। जीतने की सूरत में 10 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, आपकी शख्सियत का ये पहलू आश्कारा नहीं था मुझ पर, ये तो एक राज में रहे, आप इतनी देर हमसे छुपे रहे। 29 7 गेंदों पर कारी हमीदुल्लाह इस वक्त मैन ऑफ द मूवमेंट है। 6 गेंदों पर 21 रन हासिल कर चुके हैं। शफीक आए और इस बार यॉर्कर जिसको दबाते हुए खेले और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन उन्होंने हासिल किया। ये कराची शहर भी अजीब शहर है, अजीब शहर की ज़िंदगी, न सफ़र रहा न क़याम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज की शाम है। फिर तो यही है कि अच्छा है कि इसी सूरत हालात में रहना, दिन शहर में और रात मुज़ाफ़ात में रहना। ये शहर समंदर के किनारों पे है, वाकई इस शहर में रहना तो अपनी औकात में रहना। और इस बार गेंद को पुल कर दिया है नज़ीर लेफ्टी ने। वो थोड़े से आज खामोश स्टार्ट यहाँ पर लेते हुए
लेकिन कारी हमीदुल्लाह ने रन बनाने की रफ्तार जो है अपने कंधों के ऊपर उठा रखी है और बड़े शानदार तरीके से आज जो शुरुआत की है लियारी लेजेंड्स ने टॉस जीतकर उसको दुरुस्त साबित किया है कारी हमीदुल्लाह ने। 6 गेंदों पर 22 रन हासिल कर चुके हैं, तैयार हुए शफीक को खेलने के लिए। निस्बतन बेहतर ओवर है शफीक का जिसमें उन्होंने बल्लेबाजों को आज़ादाना अंदाज में शॉट खेलने का मौका फराहम नहीं किया और उसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने 4 गेंदें की हैं, महज 7 रन उन्होंने दिए हैं। अली शेर का पहला ओवर खासा महंगा ओवर था जहां उन्होंने 25 रन दिए थे, तो अच्छी रिकवरी की है यहां पर शफीक ने। बिल्कुल, अगर अगली 2 गेंदें अच्छी करने में कामयाब हों तो बहुत अच्छे नोट पे ओवर फिनिश कर सकते हैं। पहली गेंद पर चौका, लेकिन अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन तक बात महदूद रही है। ये नजर लेफ्टी, गालिबन कुछ प्रॉब्लम है, गालिबन लाइट्स का कोई शायद मेरा ख्याल है इनको कोई मसला था जिसकी जानिब उन्होंने निशानदही की। अब मसाइल हल हो गए हैं, बड़े खुश नसीब हैं कि इनके मसाइल जल्दी हल हो गए। जी हाँ, अमूमन मसाइल जो हैं वो होता ही है, जब मसले पैदा हों तो फिर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कि लेकिन ये भी देख लें आप बढ़ रहे हैं और ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टूर्नामेंट के जारी है कि कहीं ना कहीं हर रोज़ कोई किसी बैट्समैन की तरफ जो है वो कोई लेज़र कोई लाइट जो है वो थ्रो की जाती है। अब तक वो मिस्चीवियस आदमी का पता नहीं चला ये कौन है जो ऐसा करता है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोस की बात है और बैट्समैन उसकी निशानदही करें तो अच्छी बात है, ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं फील्डर, क्या गेंद तक पहुंचेंगे? बिल्कुल महफूज हाथों में ये गेंद महफूज हो गई और नज़ीर लेफ्टी की इनिंग अपने अख्ताम को पहुंची। और खेल में जब भी रुकावट आती है, कोई ब्रेक आता है, तो हम देखते हैं कि टेम्पो टूटता है, बैट्समैनों का कंसंट्रेशन लूज़ होती है। ये हुआ है निज़ार लेफ्टी के साथ, थोड़ी देर के लिए खेल रुका रहा और फिर उन्होंने ये कैच थमाया और अब वापस लौट रहे हैं और लियारी लेजेंड्स का 32 पे एक खिलाड़ी आउट हो गया है। उबैद ने कैच किया, शफीक बॉलर थे। 4 गेंदों पर 7 रन बनाने के बाद निज़ार लेफ्टी का डिपार्चर, 32 1 विकेट के नुकसान पर। तो जितना अच्छा फ्रूटफुल ओवर रहा था रन्स बनाने के एतबार से लियारी लेजेंड्स के लिए, दूसरा ओवर उतना ही जां फिशानी के साथ, मेहनत के साथ, एक्यूरेसी के साथ किया है शफीक ने और ना सिर्फ उन्होंने 7 रन दिए हैं 5 गेंदों पर, बल्कि 1 विकेट हासिल करने में भी कामयाब रहे हैं। इसी दौरान हसन वार्म अप होकर निज़ार लेफ्टी की जगह लेते हुए मैदान में दाखिल हो रहे हैं। लियारी लेजेंड्स के एक और जहां दीदा बल्लेबाज। जी हाँ, जहाँ दीदा आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हसन पेंडा इनका नाम है और पेंडा इनका पेंडू से बिगड़ कर हो गया है, यानी इनके दोस्त इनको कहते थे आप गांव के हो, पेंडू हो, देहाती हो, तो अब उनको पेंडा कर दिया। और जहाँ दीदा वाकई हैं, किसी गांव से आकर इन्होंने बहुत सारे शहर देख लिए हैं। अपने इस ओवर में आखिरी मरतबा शफीक आए और इस गेंद को जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे। 1 रन हासिल किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और मिस फील्डिंग हुई यहां पर। दूसरा रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, लेकिन बावजूद उसके एक बहुत अच्छा ओवर शफीक का जिसमें उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए और बिगड़ते हुए हालात को काबू किया। 1 मैन आर्मी का किरदार अदा किया। 2 के बाद 34 1 विकेट के नुकसान पर लियारी लेजेंड्स। ये जो फाइनल से पहले 16 तारीख को खेला जाएगा वुमेन का मुकाबला, उसमें KTPL पावर गर्ल्स एंड KTPL क्वींस के नाम से 2 टीमें बनाई गई हैं और जावेरिया राउफ कप्तानी करेंगी पावर्स की, जबकि रमीम शमीम कप्तान होंगी KTPL क्वींस की। और रमीम शमीम की क़यादत में हाल ही में पाकिस्तान ए टीम ने जो है वो न सिर्फ वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त दी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और थाईलैंड की जो ट्राई सीरीज़ थी उसमें चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। तो बड़ी प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं रामीन शमीम और अनलकी रही कि वो पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड नहीं जा सकी। तो अब हम उनकी टेप बॉल में सलाहियतों को, अहलियत को विटनेस करेंगे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वुमेन क्रिकेटर्स के लिए एक ज़बरदस्त मौका होगा। साथ साथ यकीनन टेप बॉल क्रिकेट की जो शौकीन गर्ल्स हैं, जो अपकमिंग हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा।
और इसमें हम कायनात को भी क्रेडिट देंगे जिन्होंने इस मैच को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। इमरान काजी यहाँ पर बॉल डालने के लिए आए हैं। और काजी की पहली गेंद को डिस्पैच कर दिया है छक्के के लिए। अंपायर और बैट्समैन हो राजी तो फिर क्या करेगा काजी। बिल्कुल, और काजी को ये भी कहा है उन्होंने, कारी हमीदुल्लाह ने कहा आप अगर काजी हैं तो मैं भी कारी हूं। एक मरतबा फिर इमरान, और ये दूसरा लगातार छक्का। 3 बार तो काजी करवाते हैं। हाँ, इन्होंने 2 करवा दिए। वाह, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, कोई शक नहीं इसमें कि इस वक्त कारी हमीदुल्लाह बड़े जारहाना मूड में इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए। और आइए अब नीचे चलते हैं हमारी साथी हिना के पास, देखते हैं कि उनके साथ इस वक्त कौन है। थैंक यू सो मच। वेल, साइड लाइन्स पर इस वक्त मेरे साथ कुछ क्रिकेट फैंस मौजूद हैं एंड हर नेम इज़ हिरा हबीबुर रहमान एंड शी इज़ representing बेसिकली ASF फाउंडेशन। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइड लाइन्स। एंजॉय कर रही हैं मैच को? अच्छा, माइक पे बोली ताकि व्यूअर सुन सके। आपका और क्रिकेट का कैसा लिंक है? एंजॉय करती हैं, खेलती हैं? यस, मैं खेलती भी रही हूँ बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी है। और क्या रोल रहा है आपका? बैटिंग करती थी, बॉलिंग करती थी? प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है या शौक में? नो, क्रिकेट नहीं, बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल प्लेयर है लेकिन फैन क्रिकेट की हैं, राइट? यस। ओके, सो KTPL में आकर कैसा लग रहा है? किस तरह का टैलेंट नजर आ रहा है? मैचेस किस तरह हो रहे हैं? अभी लास्ट मैच आपने देखा कितना सेंसेशनल एंड हुआ था। जी, बहुत अच्छा रहा। अभी मतलब इतना कुछ खास नहीं है, एंजॉय मतलब सही है। हाँ। इतना कुछ वो नहीं है। अच्छा, नॉर्मल चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे फैन नॉर्मल भी है है जिनको नॉर्मल भी लगता है। सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी किसी स्पेसिफिक टीम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं? नो। ओके, टेप बॉल क्रिकेटर्स का नाम सुना है वैसे? किनका? टेप बॉल क्रिकेटर्स का नाम सुना है? किसी फेमस टेप बॉल क्रिकेटर्स को जानती हैं? नहीं। अच्छा, हार्ड बॉल में कौन से क्रिकेट की फैन है? हार्ड बॉल में? हाँ, मैं मतलब पाकिस्तान में से तो नहीं बोलूँगी, इंडिया के। अच्छा, शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, हाँ, उनकी बॉलिंग के फैन हैं आप? ओके, चले जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि वो यहाँ आए और एंजॉय करें मैच को लाइव? बिल्कुल, सब मतलब यहाँ आए, कराची के लोग जितने भी हैं आ सकते हैं यहाँ। बहुत मतलब मज़ा है, एंजॉय कर सकते हैं और सही है। ओके, थैंक यू सो मच हिरा फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइड लाइन्स। नाउ लेट्स गो बैक टू कॉम बॉक्स। बहुत मुश्किल में थी यहाँ पर है ना। उन्होंने कहा कि कोई हार्ड बॉल क्रिकेट में आपका फेवरेट क्रिकेटर? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से नहीं, इंडिया से। उन्होंने कहा नाम बताना पसंद करेंगे, उन्होंने कहा शुएब अख्तर। तो मुझे नहीं पता कि शुएब अख्तर इंडिया से कब खेले। बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि 46 टेस्ट पाकिस्तान से खेले हैं शुएब अख्तर, और कलकत्ता में टेंडुलकर और द्रविड़ को क्लीन बोल्ड भी कर चुके हैं। तो काजी साहब यहाँ पर बहुत मुश्किल में हैं और अब तक 4 छक्के वो इस ओवर में कंसीड कर चुके हैं। जी हाँ, कारी हमीदुल्लाह का एग्रेशन, उनका ख़तरनाक अंदाज बैटिंग करने का जारी और सारी है। यहाँ पर शफल करके, वॉक करके गेंद की लाइन में आकर बाकायदा दिलेरी के साथ बैटिंग कर रहे हैं और 47 रन 11 गेंदों पे बना लिए। जितनी दिलेरी के साथ कारी हमीदुल्लाह साहब इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई काम आपने जिंदगी में दिलेरी से किया? इसके बाद और एक और जोरदार शॉट, 6 रन से कम बात बनेगी नहीं, लेकिन यहां पर फील्डर ने इसको कैच में तब्दील कर दिया है। जहाँ हाफ सेंचुरी करना चाहते थे छक्के के साथ, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिलेरी जो है वो इस तरह का नतीजा भी लेके आती है। नहीं, वो कहते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह होना, यानी आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। लेकिन कारी हमीदुल्लाह ने बिल्कुल ठीक खेला था, लेकिन ये स्ट्रोक इतना ज़्यादा कुव्वत वाला नहीं था और जुल्म ये हुआ कि फील्डर जो थे बिल्कुल गेंद के नीचे आ गए। 47 रन बनाकर 12 गेंदों पे ये आउट हुए और 60 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। बिल्कुल वैसा ही हुआ इनके साथ जैसे आपका पाँव कभी ज़मीन पे गिरे हुए छिलके पे, केले के या अंडे के ऊपर पड़ जाए तो। ज़बरदस्त। वैसे हमारे पास वक्त कम है, वरना मैं आपको एक बात बता, रेडियो तो आपने सुना होगा, बहुत कमेंट्री भी की है रेडियो पे। जमूर की आवाज़ रेडियो मुल्तान से एक प्रोग्राम आता था, 55 मिनट प्रोग्राम चला, कोई पहलवान उसके मेहमान थे, तो उन्होंने कहा उन्होंने पहलवान साहब ने कहा मैं कभी ज़िंदगी में नहीं हारा।
उन्होंने कहा भाई कैसे? बोला हमारे ज़माने में मक्खन होते थे, ये दाऊद आए बैटिंग करने के लिए, साग होते थे, ये खुराकें थी। पर उन्होंने कहा असल वजह क्या है कि आप नहीं आ रहे जब 50 मिनट प्रोग्राम चल गया? ये मैं सही बात बता रहा हूँ। तो पहलवान साहब ने कहा इसकी असल वजह है कि मैं कभी लड़ाई नहीं तो हारूंगा कहाँ से? जनाना साहब बाकी आप कुंदरी से आए। थैंक यू याया भाई। तो 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 24 रन बनाने की औसत। इससे बेहतर आगाज हो नहीं सकता और विकेट लेने के बावजूद कारी इमरान जो है उनकी प्यास नहीं बुझी और उन्होंने दूसरी विकेट भी ले ली। जी और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने डिस्क्राइब भी किया इसे। इस गेंद को भी हिट करने गए थे बैट्समैन, फील्डर मौजूद थे, उन्होंने बाउंड्री पे अपने आप को प्लेस करके कैच किया। इस तरह आउट हुए, बिना कोई रन बनाए दाऊद सुलेमान। 60 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स मुकम्मल। इससे पहले कि चौथे ओवर का खेल शुरू हो, अब आपको ज्वाइन करेंगी कायनात इम्तियाज और उनके साथ हैं जिशान खालिद। Very well then, so it's 60 for 3. Lyari Legends playing their back-to-back games. Shoban Sheto has come out to bat at number 5 for the batting side. It's a very good batting performance so far. Yes, they have lost 3 wickets, but look at the run rate. They are still going at 20 runs an over. Even if they go at 15 runs an over, from here on, they are going to be reaching near 100. Imtiaz Imti, the new bowler in, bowling the 4th over now of the innings. It starts off with a wide, way wide down the leg side. I would like to welcome Kainat Imtiaz alongside me in the commentary box. Kainat, what do you reckon of this score? Thank you, Zishan. My name is Kainat Imtiaz. And it's good to see Lyari Legends scoring good right now. And they should take all the advantage right now as they have 62 in 3 overs. It was short, it was wide. He absolutely nailed that on the offside, Hassan. He had to wait for the umpire's signal. In fact, the arms are aloft. What a hit that was. It was so much away from his body. Still, he got so much bat onto it. He waited for that ball to come to him and then just gave it a direction towards extra cover boundary. Again, it was a wider ball, wide off stump. A good pick by Hassan. Yeah, he's got the reputation of hitting the long ball, Hassan Penda. Full toss. Gets the treatment it deserves. It's up in the end, it's over the boundary ropes as well. Just look at the jerk he gives to the bat when he's hitting the ball. That is where he's getting all the power from. That jerk and that power he gets from extending the arms. Then a low full toss delivery, almost a full toss delivery, and put it outside off. Well, I was hoping Lyari Legend must have been exhausted because of the game that they played previously. It's over extra cover. He has once again not timed it well enough, but the ball is going to land in front of Ali Sher. He's going to come back for a couple. A mistime shot, but landed in no man's zone. They'll just settle for 2 runs. Have a look at that net run rate now. They are scoring at 23 runs and over, Lyari Legends. They just played a game half an hour ago against Clifton Popular, which went down to the wire. They were at the receiving end. He goes once again. Wow, just hear the sound of the bat. Wow, that was some hit from Hassan. Hassan is in the mood to hit massive runs for Lyari Legends, and that's what Lyari Legend needs.
to have maximum runs on the scoreboard before going in the next innings. And again, extended full arms and went towards the long on boundary. Another full toss, hitting it straight back past the bowler. The result is going to be the same. Not good bowling this from Imtiaz Imti. It's their fourth maximum of the over. We might be looking at the highest score of the innings, maybe, the way Lyari Legends are batting right now. And again, extending full arms towards the safest boundary, the straight one. He's going to be eyeing another one. 28 of the over already from Imtiaz with the ball remaining. Hassan Penda, where has he been? He goes for it. He absolutely slaps it, and all the fielders are just going to watch it sail over the fielders' head. Fifth maximum of the over. Extraordinary batting this from Hassan. Well, even the mistimed shot is a six by Hassan. Excellent piece of batting shown. Some character shown by Hassan here. This is scintillating stuff from Hassan Penda. He has been the latest inclusion in this Lyari Legends squad. There is a women exhibition match which is supposed to be played just before the finals on 16th. Two teams are going to be participating, KTPL Power Girls against KTPL Queens. And if we can read out the squad, Javeri Arab will be captaining Power Girls, Yusra Amir, Subhana Tariq, Maria Javed, Laiba Fatima, Bisma Amjad, Iqra Naeem, Masuma Jafri, Mehak Amin, Faiza Alvi, Ramsha Amir, Misha Kareem, Laiba Kareem. KTPL Queens have Ramin Shamim, Shabnam Hayat, Isha Sheikh, Ikra Gulzar, Kinza Wahab, Maham Tariq, Aroof Shah Savera, Arija Hasif, Sundar Siddiqui, Tuba Khan, Arwa Sayyed, Yusra Ihtisham. Some of the best players of Pakistan, Pakistan A and the domestic. So it's going to be a very interesting game. I would like all the viewers to definitely join us on 16th at 6 o'clock to watch this amazing game of women exhibition. Yeah, not only the viewers are going to be glued on their TV sets, but they are definitely going to be heading into this DHA Sports Club Moin Khan Academy to witness this historic, I would say, a women's exhibition game just before the finals of Karachi Table Premier League Season 3. And I think it's a very good initiative to promote table cricket amongst women. Definitely a great initiative to bring the talent that we have in almost all the houses and all the gullies. Of course, the girls plays with the boys as well, with brothers and colleagues. Definitely should come on this field to show the talent, and this is one way to start before the big league starts of women. Yeah, as Nasir promised, there are going to be a different women's table league as well in coming times in near future. It's 94 for 3 meanwhile, Lyari Legends. And you were just mentioning that they suffered a defeat few hours ago against Clifton Popular, but doesn't look like they are exhausted at all. They look like a very fresh side, and they have come out with a clear intention. They need to win this game. They know that if they win this, they are through to the semi-finals. Gulshan Gohars are going to be eliminated, because right now Gulshan Gohars are at the 4th spot at the points table. Clifton Populars, DHA Dabanggs and Maleen Malangs have already qualified. Are the first 3 teams to have qualified for the semi-finals that are scheduled to be played tomorrow. That is the points table in front of you people. DHA Dabanggs, Clifton Popular and Maleen Malangs are at 1st, 2nd and 3rd position respectively. And the fate of Gulshan Gohar is going to be decided after tonight's game. If Lyari Legends loses this one, Gulshan Gohars go through. If Lyari manages to win this one, even if the last ball, they are going to be the 4th side. And the onslaught, in fact, that has been taken. Wow, that was a good hit. But it went straight to the field at a deep mid-wicket. A wicket of the very first ball of this over to Ali Sher. They will still have to check if the fielder's shoe was touching the boundary or it was a clean catch. It is quite confusing. There might be a chance. It's a 6, not an out.
Yeah, I think its left foot did touch the boundary skirtings. Or did it? Well, the umpires are still confirming. This might give us a better view. He took a step backwards when he completed that catch, but I think he was still a few inches ahead of the boundary ropes. It is very close. And for me, I don't think it touched anything. Well, a tough decision for the TV umpire. It was Imtiaz Imti down there, who gave away plenty of runs in his previous over. There you see, the umpires has given their decision. It's out, it's a clean catch. He wasn't touching the boundary ropes. Shoban Seto walking back without even troubling the scorers. It's a 94 for 4. Well, Karachi Knights, when they lost the toss and were asked to bowl first, they must have been hoping that they can spoil the party of Lyari legends. Rana Mohsin, meanwhile, is the new batter in at number 6. Because Karachi Knights just need to win this. And if they can manage to do that, Lyari legends will be eliminated. But look at the intention, look at the run rate at which they are scoring runs right now, Lyari legends. They still have 11 legitimate deliveries remaining. Slower delivery. Nicely disguised by Ali Sher. There is a throw at the bowler's end, but the ball hit the runner on its way through. The fielders are appealing for obstructing the field. Yes, indeed. I think Haris Ali, the captain, the wicket keeper, is appealing from the leg umpire. Time to go towards Hina Didar, who is out there on the sidelines. Thank you so much, Zishan. I have been joined by a guest who is Brigadier Retired Mr. Nayyar Abbas and Project Director, Green Pakistan Initiative, Sindh. Thank you so much, Mr. Nayyar, for joining us on the sidelines. And welcome to KTPL. How is the experience going? बहुत शुक्रिया. Everything is going wonderful. KTPL is doing amazing, and I'm really enjoying the weather. And the performance of team is marvelous. और जो भी इससे पहले आप लोगों का जो मैच हुआ था, it went to the last ball, so it was a literally a nail-biting experience which we yes, definitely it was. तो ये जो आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया हुआ है KTPL ने और ये बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने इसके अंदर जितनी जान डाली हुई है और जितनी एनर्जी के साथ इसको लेके चल रहे हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू ऑल. और इसमें जो आप लोग इस यंग टैलेंट के लिए जिसको कोई और ऐसा इस तरह का कोई एक्सपोजर नहीं है उन बेचारों का, उनको आप जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए ये तमाम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स इनका जो काम है वो कमेंडेबल है. Definitely. Would you like to share your memories with table cricket? You must have played. जाहिर बात है, everyone has played in Pakistan. क्रिकेट आपको पता है कि ये बच्चे होते हैं जब तो वहाँ से शुरू हो जाती है. और हमने भी बड़ी टेप बॉल क्रिकेट खेली है. आई यूज्ड टू बी अ फास्ट बॉलर, अटैक बॉलर हुआ करते थे किसी ज़माने में. बट इट वाज रियली नाइस. जो इसमें जो मज़ा है मेरे ख्याल में वो हार्ड बॉल में नहीं है. ठीक है ना. तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you very much dear. Thank you so much for joining us on the sidelines. You're welcome. So now it's time to go back to Combox. Thank you so much, Hina. Once again, another big hit attempted, but this time he has just skied it in the air. The fielder is trying to get underneath that, and he makes a mess of it. He did not even look at the ball. There you see, the captain is definitely not happy with that effort. It's not the first time we have seen that. Well, yes, it was not a perfect time shot. It went straight. And he completely missed the line. I don't know where he was looking at. That is not acceptable. You need to be fielding with all the effort. He might have mistaken the moon for the ball. Or one of the lights. Whipped away off the pets. What an effort. Not only he has misfielded that, but he has also kicked the ball way away from himself. And they're going to come back for a couple. So far going good for Lyari Legends. 102 for 4 in 5 overs.
Excellent start this from Lyari Legends. Although they just scored 8 runs in the previous over, still are in a very healthy position at 102 for 4. Still have 6 balls remaining in their innings. And Hassan, who has done all the damage so far, striking at 400 runs per 100 balls. Still pouring the dust in the landing area, Shafiqur Rahman. That means the conditions are pretty slippery out there. The dew has taken its effect. It's not going to be easy for the side bowling for the last time. Hassan Penda, what an innings he has played. On not many occasions we have seen a side losing after scoring more than 100 in the first innings. Shafiqur Rahman, meanwhile, will be starting the last over of the innings, has decided to come around the wicket. Starts off with a good Yorker right into that block hole. Hassan somehow manages to get bat down. He got his bat down, and it's time for us to go downstairs once again with Hina Didar. Thank you, Zishan Khalid. I have got another guest, and who is Mr. Salman Haroon, CEO, Arafat Printing Press, PTV Limited. Thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. Are you a cricket fan? Well, you must be, because you are here at the KTPL. Obviously. क्रिकेट तो पाकिस्तान में किसने नहीं खेली, Definitely. क्योंकि हम बचपन से ही टेप बॉल क्रिकेट खेलते आए हैं और इसी से आगे फिर हार्ड बॉल की तरफ जाते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें यूथ को एक हेल्दी एक्टिविटी मिलती है और एक क्रिएटिविटी आती है। देखें आप, इतने सारे लोगों को काम भी मिलता है, जॉब्स भी आती क्रिएट होती हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। क्योंकि अगर नौजवान हेल्दी इन्वायरमेंट में एंगेज रहेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ना सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स है, बल्कि एक लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। डेफिनेटली। वेल ऑल्सो सर, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की एफर्ट है इस लीग को ऑर्गेनाइज करने में। दे आर द मेन ऑर्गेनाइजर। उनकी एफर्ट्स को लेकर, उनके कॉज को लेकर कि टेप बॉल क्रिकेटर्स जो हैं उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म फराम करना ताकि जो टैलेंट है वो रिकग्नाइज्ड हो सके। देखें, ज़ुहैर का हमेशा से ये रहा है कि वो ऐसे चैलेंजेस लेता है जो कोई और नहीं कर पाता। तो ये बहुत अच्छा चैलेंज था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जावेद मियादाद, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद और बड़े बड़े खिलाड़ियों को साथ मिलाया और एक नौजवानों को अप्रोच किया। ये वो नेगलेक्टेड एरिया था जिसको लोग इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन जितने मुल्कों में अराउंड 84 कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से ये लाइव देखा जा रहा है, तो मैं कहता हूँ बदर एक्सपो को उसका क्रेडिट जाता है और स्पेशली ज़ुहैर को कि उसने ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की यूथ के लिए, और ये यूथ की एम्पावरमेंट भी है। और आप देखें कि आज इतने सारे लोग जब आए हैं तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। Definitely. So thank you so much for sharing your thoughts on the sidelines. Now let's go back to Combox. Thank you so much, Hina. Meanwhile, we have witnessed yet another chance being put down by Ali Sher at extra cover. A live has been given once again to Hassan, who has an opportunity to go past his personal milestone. It was short, it was wide, he was looking to slap it, couldn't time it well enough, and Ali Sher making a mess of it once again. This time he's tried to belt it, and this time it has been taken. Finally, Ubaid Lefty has managed to take one at long on. And that is how Hassan has now been dismissed. Though it's quite late and only one delivery is left in Lyari Legends' inning, he did try his level best to make this ball go out of the park, but again was taken in the end. Hassan Penda, 47, 110 for 5, Lyari Legends. Even when we watched that replay of the catch taken by Ubaid Lefty, it just stuck in his fingertips, as if the ball wanted to come out of his hands. Ahmed is the new batter in, will just have to face one delivery of this innings. But I still believe the job has been done by the batters of Lyari Legend. It's 110 for 5. Karachi Knights have just won one game on this tournament, so they must be very sure in confidence. Ahmed Kulfi at number 7 will be facing the last ball of the innings from Shafiqur Rahman. He bowls it short. He slaps it. Once again, the ball has gone towards Ubaid Lefty at long on. The ball just bouncing in front of him.
They are looking to come back for the second run. And there is a collision between Haris Ali and the runner. So they'll get 2 runs in the last ball of the over. That means Lyari Legends have finished on a very strong score. They are finished on 112 for the loss of 5 wickets. The captain is going to take it. Fumble on the last delivery made them end the score at 112 with 2 runs on the last ball. So it's 112 for 5. Lyari Legends have a very good chance to win this one because 100 plus runs in the first innings. So it's quite nice. An 18.67 run rate. Well, the other team will have to be on their toes to make this target achievable. They were involved in the match previously as well. This time it was Qari Hamidullah and Nizar Ali who came out to open the batting, and Qari Hamidullah went berserk right from the word go. Nizar also struck few boundaries towards the start of the innings, but Qari Hamidullah was smashing the bowlers to all corners of the park. They were almost scoring at more than 20 runs an over from the word go. Qari Hamidullah was simply severe on anything down the leg side. That was a slate hit back over the bowler's head. A full tosses were dealt with as well. Ashraf Pathan, the captain, could not really get into the game today, but Hassan Penda came in, the latest inclusion in this Lyari Legends squad, and he was simply going after Imtiaz Imti in that over where he managed to score 5 maximums, and Imtiaz Imti kept on bowling those juicy full tosses, and Hassan Penda kept on utilizing them. So Bancheto got out to a very first ball, couldn't trouble the scorers. He kept on getting boundaries even in the last over before he was dismissed, just fell short of his half century by 3 runs, but by that time the job had already been done by the batters of Lyari Legends, who have posted a very decent total on the board. Hamidullah scored 47, so did Hassan Penda, both missing out on their half century. Apart from that, none of the batter could enter the doubles figures. And we talk about the bowling squad, bowling lineup. 4 bowlers were used, all were pretty expensive. Shafiq picking up the bowlers, picking up 2 for 19. Imran picking up 2 as well, and a wicket for Ali in his 2 overs. The Karachi Knights, when they will be coming out to bat in the second innings, will be trailing by 112 runs. Remember, Karachi Knights win this one, Lyari Legends are eliminated, and if Lyari Legends manage to win this final league game of Karachi Table Premier League Season 3, they are going to be through, and Gulshan Gohars are going to be heading back home. Time for a change in the commentary box. It's going to be Naseem Rajput alongside Amir Yusuf. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान खालिद। तो पहले बैटिंग करते हुए यकीनी तौर पर एक पहाड़ जैसा हदफ सेट कर लिया है कराची नाइट के लिए। यकीनन कारी हमीदुल्ला ने 47 रन्स की इनिंग खेली और अब देखना होगा कि 112 रन्स बनाने हैं पहली इनिंग में। दोनों ओपनर्स ग्राउंड में नमूदार हो चुके हैं और हमारे साथी कमेंटेटर हमारे साथ नसीम राजपूत। यकीनन इस मैच में फतह हासिल करनी है लियारी लेजेंड्स की टीम को और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, इसलिए एक बड़ा टोटल सेट किया है। आज 112 रन बनाए हैं पहली इनिंग में। It's an Jio Super production in collaboration with NatSat. ज़बरदस्त किस्म की कवरेज पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल की जो टीम है, ज़बरदस्त काम। NatSat की टीम बहुत ही ज़बरदस्त काम, और मिलके ये एक UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग इस वक्त 84 से ज़ायद ममालिक में जा रहा है। यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं जिस तरह ये कवरेज है। तो अब दोनों ओपनर्स आ चुके हैं। 112 रन्स बनाने होंगे पहली इनिंग में उस्मान, और दूसरी जानिब
उस्मान जान ने बड़ी शानदार बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट में और अब यकीनन ये अहम मैच लियारी लेजेंड्स के लिए उबैद लेफ्टी उनका साथ देने के लिए आए हैं कराची नाइट्स की तरफ से। आमिर अहमद कुल्फी ने ज्वाइन किया आज लियारी लेजेंड्स को। ये पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स में शुमार होते हैं। आज उन्होंने पहले मैच में भी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इस दूसरे मैच में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होंगी लियारी लेजेंड्स को इनसे, क्योंकि अब इस मैच में अच्छी फतह दरकार होगी। अगर आपने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए तो क्लोज हैं लियारी लेजेंड्स इस वक्त। जो रन्स भी वो बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। यकीनन जिस तरह की बैटिंग की है बॉलर्स के लिए अब मदद ज़रूर होगी क्योंकि 112 रन्स हैं। बॉलर्स करना चाहेंगे। इस मरतबा उठा दिया है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा और एक आसान सा कैच लेकर यहाँ पहली विकेट हासिल कर ली है उस्मान जान की। उस्मान जान इस फुल टॉस गेंद को प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके। हालांकि बॉलर ने तो अहमद कुल्फी ने तो कुल्फी दे दी थी, लेकिन प्रॉपर तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सके उस्मान जान और विकेट गवा बैठे। ये क्रिकेट के एक फुल टॉस गेंद पर भी विकेट चली जाती है और अच्छी गेंद पर छक्का भी लग जाता है। और यहाँ हम सीधे चलेंगे जहाँ हिना दीदार मौजूद हैं। किसके साथ देखते हैं। थैंक यू सो मच नसीब राजपूत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हसन रियाज हु इज़ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ KTPL। थैंक यू रियाज फॉर जॉइनिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द साइड लाइन्स। So thank you to you for calling me up. Our pleasure. Well, this league has almost come to its end. We have 2 semi-finals to be played tomorrow. How do you feel as a creative director of KTPL? See, you get very excited and you feel very proud when your own baby is being growing, right? And I think so every day we are growing. Yes. And our growth is very important और वो बहुत सबको अच्छा लगता है कि जब उनका कोई भी project grow करता। Definitely. Well, so any like your personal memories regarding tape ball cricket or the vision behind this league, or if you would like to mention the achievements of this league, as you were mentioning earlier. I think so. It's very important to say today कि किसी भी चीज़ का कहीं से आप start लेते हैं। और as a very passionate cricketer in the past when I was young, तो हर बंदा टेप बॉल से एक स्टार्ट लेता है। एंड आई रिमेंबर प्लेइंग टेप बॉल इनसाइड द हाउस एंड ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ स्टफ एंड गेटिंग लॉट ऑफ स्कोल्डिंग फ्रॉम योर मदर्स ओवर इट इज ऑलवेज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और मेरा ख्याल से वो मेमोरीज जो है ना वो आप कभी भूलते नहीं हैं। और वो आपके फैमिली ओरिएंटेड मेमोरी बन जाती हैं। अब्बा बचा रहे होते हैं, अम्मा डांट रही होती हैं और आप टेप बॉल घर के अंदर खेल रहे होते हैं। सो दैट्स योर ग्रास रूट। For any sports, there is a grassroots, and tape ball is one of that. Indeed. Well, जैसे आपने कहा कि आप, as we know that you are creative director of KTPL, but are you rooting for any particular team? Yes. Okay. Lyari Legends, and I hope they win today, and we can qualify for semi-finals. They're very, very close to me because one of our committee members is part and playing, and he's a great, player. वो हमारे CEO हैं, आपको ज़ोहर नसीर, और उन्होंने बहुत commendable efforts किए हैं इसको। By the way, कैच अच्छा करते हैं उन्होंने, मेरे ख्याल से 2 से 3 तो कैच किए हैं, कैच आउट किए हैं। फिर वो देख लें, KTPL का कमाल है। चलें जी, thank you so much. It was lovely chatting with you on the sidelines. Thank you so very much. Let's go back to Combox. Thank you हिना। हसन रियाज डायरेक्टर हैं UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के, और मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि बड़े पैशनेट क्रिकेटर थे ये बचपन में। ये बड़ा मेरे लिए हैरान कुन है। हसन के साथ हमारी बड़ी एक मोहब्बतें हैं। और ये राजा मुख्तियार टीम ऑनर कराची नाइट्स, ये सिंध पुलिस की टीम है। सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट SSU की टीम है कराची नाइट्स, और एक मैच भी जीतने में कामयाब हुए। इस मतवा उठा के खेले हैं, आउट होने का खदशा था लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गेंद हाथ में ना आई फील्डर के। 1 रन यहाँ मिला है। कराची नाइट की टीम इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नज़र आई और गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 1 फतह मिली। क्या समझते हैं आप? डेब्यू है इनका,
पहली मर्तबा टीम बनाई है, मोस्टली प्लेयर्स से शायद इतने ज़्यादा आगाह नहीं होंगे, लेकिन अब पूरे सिस्टम के साथ रहें। पिछले 14-15 दिन तो बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत ताल्लुकात बने होंगे। अब ये पता होगा कि कहाँ से प्लेयर्स लेने। देखिए मोस्टली खिलाड़ी पंजाब से खेल रहे हैं यहाँ पर, जो डोमिनेट कर रहे हैं टेप बॉल प्लेयर्स में। जी हाँ बिल्कुल, जौहर जवान की टीम को कल गुज़िश्ता रोज़ शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। ये एक अच्छी गेंद थी, बीट करने में कामयाब हुए। हल्की सी अपील ज़रूर हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा। और खुशी का इजहार करते हुए एक ओवर यहाँ मुकम्मल भी हुआ है। 6 रन बनाए हैं और 1 विकेट गंवाई है। और अब जबकि ज़बरदस्त आखिरी राउंड मैच जारी है, लेकिन ग्राउंड के साथ मौजूद है ना दीदार, है ना। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच नसीम राजपूत। इस वक्त एक और मेहमान ने हमें साइड लाइन्स पर ज्वाइन किया है, हु इज़ मिस्टर सुलेमान सलीम एंड ही इज़ डायरेक्टर ऑफ ट्रेस पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सुलेमान सलीम, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने कहा आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो एज ए पैशनेट क्रिकेटर KTPL में आकर आपको कैसा लगा? टू बी ऑनेस्ट इट्स माइंड ब्लोइंग। जिस तरह का सेटअप अरेंजमेंट हुआ है माशाल्लाह, मैं लास्ट टाइम भी विजिट किया था और आई थिंक लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो आई थिंक इट्स 10 टाइम्स बेटर। वेन्यू, प्रोडक्शन, management, everything is 10 times better than the last time as well. And how do you see the talent in terms of like tape ball cricketers? Because hard ball तक हर किसी का सफ़र कामयाब नहीं रहता है, तो tape ball cricketers का talent किस तरह देखते हैं आप? We have some big names as well, Taimur Mirza, Khurram Chakwal and others. बिल्कुल, I think over the past 10 years, I think tape ball cricket has got the height, और फिर उसमें KTPL का एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने प्ले किया है इस लेवल तक tape ball cricket को लाने में। और जैसा आपने कहा कि लोगों को इतनी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो आई थिंक दिस KTPL इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू दोज प्लेयर्स हु कैन नॉट गो टू प्ले हार्ड बॉल क्रिकेट, और वो अपना ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं। वो KTPL उनको दे रहा है ये प्लेटफॉर्म। आपका कोई फेवरेट टेप बॉल क्रिकेटर है? जैसा आपने कहा तैमूर मिर्ज़ा, आई थिंक वो कराची पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक स्टार हैं। फिर कराची के असद शाह हैं, आपका हारिस अली खान है, यासिर मुश्ताक हैं। आई थिंक आई फॉलो ऑल ऑफ देम एंड दे आर ऑल माय फेवरेट। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइडलाइंस एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स। थैंक यू हिना। और उबैद का ज़बरदस्त छक्का, इस बार लेग स्टंप पर ही गेंद मिल गया था उन्हें प्रॉपर फुल टॉस गेंद को टाइम किया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। यकीनन लेग स्टंप को वो ज़्यादा पसंद भी करते हैं और इस एरिया में ज़्यादातर रन्स बनाने की महारत रखते हैं उबैदुर रहमान। रन्स बहुत ज़्यादा हैं कराची नाइट्स के पास, तो सरतोड़ कोशिशें करनी होंगी। अब तक 14 रन्स बनाए हैं, 1 विकेट गंवा चुकी है। इस पर दबा गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले हैं उबैदुर रहमान और ये गेंद भी जाएगी 4 रन्स के लिए। तो खूबसूरत अंदाज उबैदुर रहमान का, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पैर निकाल के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक आमिर। बिल्कुल, और ये बड़ी ज़बरदस्त थी कि एक्स्ट्रा कवर को उन्होंने निशाना बनाया। एक और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर चली गई क्योंकि पढ़ने के बाद गेंद बाहर की जानिब जा रही है, जिसकी वजह से 2 रन्स मिलेंगे कराची नाइट की टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ अब 20 हो चुका है। जावेद कदीर पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और इस DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में कोच भी हैं, और ये इस वक्त कराची नाइट्स के मेंटोर हैं। ये एक ख़ास चीज़ थी इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। जब इसका आगाज़ किया तो डग आउट में हर टीम का कैप्टन वो था कि जिसने पाकिस्तान का डग आउट शेयर किया हुआ था, या तो वो टेस्ट क्रिकेटर थे या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे। उनमें जावेद कदीर भी एक टीम के कप्तान थे पहले सीज़न में। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि नौजवान लड़के इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, और जाहिर सी बात है जब कोच के पास इतना एक्सपीरियंस होता है तो नए नौजवान लड़कों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। अब तक 20 रन बनाए हैं 1.2 ओवर के खेल में, 1 विकेट गंवाई है। उबैदुर रहमान अब तक 11 रन बनाए हैं।
ये अच्छी गेंद थी, विकेटों में आती हुई गेंद, कामयाब नहीं हो सके। आमिर, बड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का स्टाइल है इनका। अगर आप देखेंगे तो आप राउंड द विकेट आते हैं और आके जैसे मलिंगा का स्टाइल होता है उस तरीके से गेंद को थ्रो करते हैं। थोड़ा उसी मिलता जुलता अंदाज है, ये लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं, लेकिन राउंड द विकेट आके इस एंगल से जो वो गेंद कर रहे हैं ये इनका एक आर्ट अपना ही है। जी बिल्कुल वही हुआ और नो बॉल करार दी है यहाँ पर अंपायर की जानिब से। आमिर, बहुत ही क्लोज कॉल थी वैसे ये, अगर हम देखते हैं तो एंगल डिफरेंट है, इस डिफरेंट एंगल को हिट करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने बहुत ही कम इस तरीके से बॉलर को देखा है। बहुत क्लोज कॉल थी वैसे ये, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया और अंपायर वहाँ करीब थे, उन्हें नो बॉल करार दी है और खुशकिस्मत रहे यहाँ उबैदुर रहमान, अब फ्री हिट मिलेगी। बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं वो, बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, इसलिए मुश्किलात ज़्यादा नहीं। अगर दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले सुहेल का सामना करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुश्किलात होगी फिर दाएं हाथ से बैटिंग करने वालों को। बड़ा डिफरेंट एंगल है सुहेल का बॉलिंग स्टाइल, अगर देखें तो। फ्री हिट, इसमें दबाव उठा के खेले हैं, फील्डर भी मौजूद है लेकिन ये फ्री हिट है इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा। 2 रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लिए हैं। सिंगल डबल से अब क्या समझते हैं, रन काम बनने वाला नहीं है, यहाँ चौके और छक्के लगाने होंगे कराची नाइट की टीम को। कराची नाइट के ऑनर राजा मुख्तियार तो यही सोच रहे होंगे जो आप कह रहे हैं कि चौके छक्के लगाने होंगे, लेकिन अच्छी बॉलिंग है अब तक लियारी लेजेंड्स के बॉलर्स की। इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद थी जिसे ड्राइव करने की कोशिश की थी उबैद लेफ्टी ने, 1 रन ही हासिल कर पाए। हाँ, जब बॉलर्स के पास इतने ज़्यादा रन हो तो बड़े दिल से फिर बॉलिंग करनी पड़ती है और यहाँ भी लियारी लेजेंड के बॉलर्स अपने कमाल दिखाते हुए सिर्फ अब तक 25 रन तक महदूद रखा है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए सुहेल मौजूद हैं अपने बॉलिंग के मार्ग पर। वसीम अप्पू अब सामना करेंगे। 87 रन मजीद दरकार हैं, मुश्किल ज़रूर है लेकिन अब तक नामुमकिन नहीं। फुल टॉस गेंद थी, इसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर सके बॉलर, खुद कैच लेने के लिए मौजूद और सेकंड अटेम्प्ट में जरूर कोशिश की थी। बॉलर तो कैच नहीं ले सके थे लेकिन साथ खड़े फील्डर ने भी बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया। यकीनन अगर ये कैच मुकम्मल कर लेते तो निहायत ही शानदार कैच हो सकता था। ये देखें, फुल टॉस थी, गेंद खासी देर हवा में रही, मुकम्मल तौर पर गेंद के नीचे आ गए थे सुहेल और ये पीछे फील्डर के बाएं हाथ से लगी और फिर दाएं हाथ से भी कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो यहाँ और मुकम्मल हो चुका, 2 ओवर के खेल में 26 रन बनाए हैं और 1 विकेट गंवाई है। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 जो 84 से जायद ममालिक में नशर हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर, अफारका, XP, MBC, विलो TV, सब सहारा, सहारा और जियो, इन तमाम चैनल्स पर UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का सीजन 3 देखा जा रहा है। तकरीबन 2 बिलियन के करीब आवाम मुख्तलिफ ममालिक में सोशल मीडिया के थ्रू आप इन मुकाबलों को देख रहे हैं और जहां पर पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर कवरेज कर रहा हो तो फिर व्यूवरशिप ऑटोमेटिकली फिर बढ़ती चली जाती है। यकीनन हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में लोग टेप बॉल को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी समय एक और अच्छी गेंद, पीछे पड़ी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन कोई करेक्शन नहीं हो सका गेंद और बल्ले के दरमियान।
ये अच्छी गेंद थी, खाली चली गई है। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। और वेस्ट हाइट की वजह से ये नो बॉल करार दी है। वसीम अप्पू अहमद कुल्फी अब तक 7 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रखी है और रन बनाने के मौके बिल्कुल भी फराहम नहीं कर रहे लियारी लेजेंड्स के बॉलर, और यकीनन अहमद कुल्फी को खेलना इतना आसान नहीं। ये फ्री हिट थी, हिट लगाने चले लेकिन मौका फराहम नहीं किया अहमद कुल्फी ने। बड़ा डिफिकल्ट है अहमद कुल्फी को हिट करना। जो चंद बेहतरीन बॉलर्स हैं पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के, ज़हीर कालिया, कादिर कश्मीरी, सरदार और बहुत सारे बॉलर्स जो हमारे टॉप बॉलर्स हैं, फजल आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, उनमें अहमद कुल्फी का शुमार होता है। यकीनन अब तक बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए फिर, लेकिन ये गेंद लेके सबसे बाहर चली गई है। वाइड का इशारा। बिल्कुल भी परेशान नहीं है क्योंकि रन्स अच्छे खासे बोर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन इतना छोटा फॉर्मेट है ये यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के, इसमें आप बहुत कैजुअल हो नहीं सकते और रिलैक्स नहीं हो सकते। रन्स चाहे बोर्ड पे कितने भी हो, अचानक मैच ऐसा टर्न होता है, हमें देखते रह जाते हैं सब। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ एफर्ट करनी होगी बॉलर्स को भी। इस पर तबाह हिट लगा दी है, गेंद हवा में, देखना पड़ेगा और गेंद चली गई है 6 रन के लिए। खूबसूरत अंदाज था ये, आगे पड़ी हुई गेंद थी और जोरदार अंदाज से खेले थे। यकीनन एक शानदार दिलकश स्ट्रोक वसीम अप्पू की जानिब से। स्कोर अब बढ़ता हुआ 36 हो चुका है। 2.3 ओवर के खेल में 11 रन बना लिए हैं। ये चकमा दिया है अब अहमद कुल्फी ने। आउट स्विंग भी करते हैं, हिंग स्विंग भी करते हैं, दोनों क्वालिटियां मौजूद हैं इनके पास। अगर तेज करते हैं तो अच्छा, और एक प्रॉपर पेस भी है और दोनों तरफ गेंद को टर्न कर लेते हैं, इसीलिए अहमद कुल्फी की खेलना बहुत आसान नहीं होता। दोनों तरफ गेंद को जो ये टर्न करते हैं, ये इनका बड़ा कमाल है। यकीनन इतना आसान नहीं होगा वसीम अप्पू और उबैदुर रहमान के लिए। 2 गेंदें मजीद खेलनी होगी इन दोनों बैट्समैनों को। एक और चकमा देने में कामयाब हुए। ये गेंद भी आउट स्विंग थी। ये जो जर्सियों पे आप BTV लिखा हुआ देख रहे हैं, लियारी लेजेंड्स की, ये बदर एक्सपो सोल्यूशन जो पैटर्न बॉडी है इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की, उनका अपना चैनल है। पाकिस्तान का पहला इवेंट टेलीविज़न है जो इवेंट्स को कवर करता है, क्योंकि बदर एक्सपो सॉल्यूशंस इवेंट्स में अपना कोई सानी नहीं रखते, जो कमाल है उनका। बेशक ये तमाम तर जर्सियों पर उनके मोनोग्राम मौजूद हैं। अब तक 37 रन बना लिए हैं, 1 विकेट गंवाई है। आखिरी गेंद करने के लिए अहमद कुल्फी। इस मरतबा उठा के खेले हैं, देखना पड़ेगा और गेंद जाएगी मिड विकेट की बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। गेंद को ग्राउंड से बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि कहाँ गई है। बड़ा ही जबरदस्त हिट था, थोड़ा लूज बॉल कर गए थे, लेंथ थोड़ी मिस कर गए, पूरा टाइम मिला यहाँ उबैद लेफ्टी को और 6 रन यहाँ पर हासिल किए। तो अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली हो चुकी है और राना अशफाक और आतिफ मकबूल आपको ज्वाइन करेंगे।
बहुत शुक्रिया नसीम भाई और आमिर यूसुफ। 43 रन एक खिलाड़ी आउट, 69 रन अभी भी चाहिए पहली इनिंग्स के स्कोर तक पहुंचने के लिए। 3 ओवर्स का खेल बाकी है। सलाम बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में। पाकिस्तान ए टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। 260 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने के बाद। अपने वक्त के बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर आतिफ मकबूल। आतिफ भाई वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू कैसे हैं? 3 ओवर्स के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वसीम अप्पू 11 और उबैद 20 रन पर नॉट आउट हैं, जबकि सामने हैं वसीम अप्पू सलाम के। सलाम दौड़ते हुए जा रहे हैं और इस गेंद को अच्छे अंदाज में खेल दिया ऑन साइड पे। 1 रन ज़रूर मिलेगा इस 1 रन के साथ। 44 1 विकेट के नुकसान पर। KTPL को अब तक आप कैसा पा रहे हैं और अब तक इन दोनों टीमों के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं? देखें जिस तरह का जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, जिस तरह KTPL की स्टार्टिंग हुई है और जिस तरह टूर्नामेंट में ये टेप बॉल के प्लेयर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म सजाया गया है जोहर नसीर की तरफ से, तो ये प्लेटफॉर्म जो है यंगस्टर जितने भी हैं, जैसे टेप बॉल में फ्यूचर नहीं था किसी भी प्लेयर के लिए, तो अब वो फ्यूचर बन गया है। तो और एक अच्छी चीज़ है, अब यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं और जिस तरह आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे पाकिस्तान में जा रहा है ये सब कुछ, तो ये नज़र आ रही है सारी चीज़ें। इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह आगे जोहर भाई के बहुत बड़े फ्यूचर प्लान्स हैं, तो देखें प्लेयर्स के लिए एक अच्छा बेनिफिट है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले हैं इस गेंद को बैट्समैन उबैद। हमारे प्रोड्यूसर्स फ़र्रुख सलेमान और रेहान भाई ज़बरदस्त अंदाज में ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। बड़ी तादाद में हमारे कैमरा क्रूज़, हमारा टेक्निकल स्टाफ, कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट, हमारी ग्राउंड कंडक्टर्स वहीदा, एवरीबॉडी हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। जिस अंदाज में जियो सुपर की ये प्रोडक्शन, जो कि 84 से ज़्यादा चैनल जो कि सिस्टर चैनल्स कहलाएंगे, वो आगे दिखा रहे हैं दुनिया भर में। और एक ज़बरदस्त मुकाबले KTPL सीज़न 3 के जारी हैं और आतिफ मकबूल जिस तरह मैंने जिक्र किया मेरे साथ मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, ज़ोरदार अंदाज में, खूबसूरत शॉट, छक्का। देखें जिस तरह से ये बॉलिंग हो रही है, थोड़ा सा लेंथ आगे है। अब टेप बॉल क्रिकेट में जो है ये लेंथ बैट्समैन ढूंढता है, तो थोड़ा सा बॉलर को थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेंटली इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा जिस तरह से उसको बॉल करनी है, रन सेफ भी करने, और ये मैच इंपॉर्टेंट भी है सबसे मेन चीज़ लियारी किंग के लिए। तो ये बॉलर्स को थोड़ा सा यहाँ अपना माइंड जो है ओपन करना पड़ेगा और स्विच ऑन रखना पड़ेगा अपने माइंड का। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला जीतना अगर वो टॉप 4 में जाना चाहते हैं लियारी लेजेंड्स, क्योंकि गुलशन गौहर भी 8 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विकेट कीपर के पास गेंद गई। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा इसमें से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछूंगा। कहीं ना कहीं मैं कहीं देख रहा हूँ कि ऑफ स्पिनर्स की कुछ कमी लग रही है। आप ऑफ स्पिनर रहे और आपके दौर में सईद अजमल भी थे, आप वैसे सईद अजमल से कुछ पहले खेल रहे थे, तो अब कुछ कमी लग रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है आतिफ भाई? देखिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट में स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर थोड़ा टेंशन तो चल रही है। इवन के पाकिस्तान टीम में भी जिस तरह भी हमारे स्पिनर्स के लेकर प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी हमारे PCB को। हमारे जो हैं PCB के जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे पास बिग स्पिनर हैं, सकलैन भाई हैं, मुशी भाई हैं, तौसीफ भाई हैं, तो इन लोगों को स्पिनर कैंप लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे लिए स्पिनर्स की कमी है जिसको हम थोड़ा लैक कर रहे हैं। और हमें अभी वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, दोनों में हमें स्पिनर की जो है कमी महसूस हुई है। तो एक जेन्युइन स्पिनर, एक अच्छा स्पिनर जो ऑफ स्पिनर ब्यूटी होती है एक क्रिकेट की, तो वो मिस कर रहे हैं हम। बिल्कुल आपने सही ये राय दी है, क्योंकि देख रहे हैं कि उस तरह का स्पिनर्स ठीक है, मतलब कि हारिस खान हुए, आप इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह नहीं खेल सके, लेकिन फर्स्ट क्लास में आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेस हैं, आपने बड़ा परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ मुझे फर्स्ट क्लास में भी कुछ इस तरह कोई ऐसी बाइट, ऐसी वैनम वाला बॉलर नज़र नहीं आता जो 5-5 विकेटें हासिल करे एक इनिंग्स में, फिर 10 विकेट हॉल भी ले एक मैच में। तो कहीं ना कहीं इस पर काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह आपने मेंशन किया। इस दौरान सलाम थे आने ओवर की आखिरी गेंद लेकर ऑन साइड में गेंद को खेला है, 1 रन मिलेगा। चौथे ओवर्स के बाद 53 पे 1। चार ओवर में 53 रन है और 59 रन इनको ट्रेल अभी इनको नीड है। अब देखें ये क्या होता है कि मेरे हिसाब से जिस तरह मैच की सिचुएशन चल रही है, लियारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मैच जीतना बहुत ज़रूरी है सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए।
तो 2 ओवर में अब जितना कम से कम इनको रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनका थर्ड इनिंग में उतना उनका फ़ायदा है, और फिर फोर्थ इनिंग में उनको टोटल उसी हिसाब से बनेगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए बॉलर्स को कि जितने कम से कम रन पे कोशिश करनी चाहिए कि एक आध बाउंड्री, और लेंथ सबसे मेन चीज़ है जो आपके सामने कि टेप बॉल में बॉलर को सिर्फ एक ही जगह, बैट्समैन को एक ही जगह चाहिए होती है जहां वो ढूंढ रहा होता है कि सिर्फ आपने आगे की तो वो छक्का है। तो जो मैंने रियलाइज़ किया है इस क्रिकेट में, थोड़ा सा बॉडी से हटते हैं तो वो आपको हिट लगती है, जहां बॉडी में आती है, क्योंकि टेप बॉल में थोड़ी सी क्रिकेट ऐसी है कि इसमें आपका फ्लो सिर्फ फ्रंट से ही है, और जहां आपकी बॉडी में बॉल आएगी वहाँ थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। वहाँ मिक्स बॉलिंग भी चलती है, स्लो वन भी कर रहा है बॉलर आपके सामने, देखें जिस तरह ज़हीर कालिया ने जिस तरह शाम में बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है, दो ओवर किए फर्स्ट इनिंग में, उसमें 7 रन दिए। तो इस तरह से कि मिक्स बॉलिंग के साथ ही बॉलर सेफ रह सकता है। बड़ा अच्छा ही आपने पॉइंट रेज किया है कि अगर आप वेरिएशंस करते रहेंगे, अपनी पेस में भी रद्दोबदल करते रहेंगे और बैट्समैन को क्रैम्प करेंगे, उसे स्पेस नहीं देंगे उसकी बॉडी की जानिब, तो यकीनन आपके लिए मौके हैं कि आप सर्वाइव करें। और ज़हीर कालिया ने बिलाशुबा बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। राना मोहसिन ये भी वन ऑफ द गुड बॉलर्स हैं जो अब ये ओवर करने के लिए तैयार हैं फार एंड की जानिब से, और 59 रन अभी भी एडवांटेज है यहाँ पर लियारी लेजेंड्स को। अगर इन 2 ओवर्स में वो 25-30 रन भी कंसीड करते हैं तो स्टिल एक अच्छी खासी लीड हासिल करने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये 4 ओवर में इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है जितने बड़े टोटल के बाद भी, तो ये अच्छी चीज़ है। अभी भी 2 ओवर हैं तो इनको अच्छा फिनिश करना चाहिए और कम से कम रन पे इनको आउट करना चाहिए। शॉर्ट गेंद जो कि विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट बॉल, अच्छी गेंद के साथ ओवर का आगाज मोहसिन का। यही वो चीज़ है जो मैंने अभी आपसे बात की कि जिस तरह इसने स्लो वन किया, मिक्स बॉलिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैट्समैन जो खड़ा हुआ है वो सिर्फ रेडी है कि आप बॉल आगे की और वो छक्का है। तो थोड़ा सा कि जो मैच्योर प्लेयर होता है, जो अच्छा प्लेयर होगा, वो इस चीज़ को मैनेज कर सकता है, वरना मोस्टली टेप बॉल के प्लेयर जो हैं इस पर थोड़ा सा वो होता है प्रॉब्लम उनको। एक और बड़ी अच्छी बॉल, ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा, और ठीक उस वक्त राना मोहसिन अच्छी गेंदें कर रहे हैं जब यही जिक्र कमेंट्री बॉक्स में जो है वो आतिफ मकबूल कर रहे थे। जी बिल्कुल, यही चीज़ है जो वो बैट्समैन को डिस्टर्ब करेगी। अदरवाइज़ वो तो पेस को तो वो लाइक करते हैं कि आप जितना तेज़ पेस होगा उतना वो इजीली और अच्छा मैनेज कर सकेगा बैट्समैन इसको। तो ये स्लो वन मिक्स बॉलिंग करनी पड़ेगी, यॉर्कर्स, और सिर्फ बॉडी पर कोशिश करके बॉल करेंगे तो वो बचेंगे। थोड़ा सा भी अगर आप बैट के पास आते हैं तो हिट के चांसेस हैं। और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब, और बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। देखिए ये बॉल थोड़ा सा तेज किया जिसकी वजह से हिट लगी, क्योंकि तेज जितना भी करेंगे टेप बॉल वालों के लिए इनकी आई इतनी अच्छी होती है कि इनको जितना तेज करेंगे उतना अच्छा हिट करते हैं। तो आप मिक्स बॉलिंग करेंगे तो आप बचेंगे, और थोड़ा सा जो टीम के साथ जितने भी कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, उनको थोड़ा सा ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी अपने प्लेयर्स को कि मिक्स बॉलिंग जो है आपके लिए एडवांटेज है। इस मरतबा भी गेंद को खेलने में कामयाब हुए, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में, मिड विकेट पोजीशन पे। ओ, कोशिश तो बहुत की उन्होंने, अच्छी कोशिश भी थी, लेकिन एट द एंड कैच ड्रॉप हो गया। इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि फील्डर्स से बहुत कैच छूट रहे हैं हर मैच में। 3-4 कैच छूटते हैं। जो कैच जब छूटते हैं तो फिर आपको पता है जिस तरह ये हिट लगा और फिर ये बॉल के नीचे आया और एकदम वो जो है वो कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप हुआ। तो इसी तरह ये चीज़ें हैं, कैच बहुत ड्रॉप हुए हैं इस टूर्नामेंट में। ये बड़ी अच्छी गेंद आउटसाइड थी, ऑफ स्टंप बीट करने में कामयाब हुए। सही कह रहे हैं आप, मेरा ख्याल अगर हम रेशो निकालें तो अगर 10 कैचेस उठे हैं तो उनमें से शायद 3-4 बमुश्किल पकड़े गए हम, ज़्यादातर कैचेस ड्रॉप हुए हैं। जी जी बिल्कुल। अब ये देखें नंबर जो 5वां बॉल इन्होंने किया है वो भी स्लो वन किया है। जो मिक्स बॉलिंग होगी उस पर बैट्समैन डिस्टर्ब होगा, तो ये उनकी सोच अच्छी है कि थोड़ा सा ज़रा मिक्स बॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ तेज़ करेंगे वहाँ हिट लगेगी। अब तो इस कि कल सेमीफाइनल और परसों फाइनल, तो बॉलर्स को अब ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। 8 रन दिए हैं 5 गेंदों पे मोहसिन ने, और बहुत उम्दा बॉलिंग मिक्सअप करते रहे थ्रू आउट दी ओवर, और 8 रन पे ओवर गुजारने में कामयाब रहे। 61 रन, एक खिलाड़ी आउट, 5 ओवर्स मुकम्मल। और अभी भी जो है वो 51 रन जो है इनको रिक्वायर्ड हैं, और मे बी मुझे लगता है कि ये 30 to 35 रन का डिफरेंस होगा, और एक अच्छा टोटल दोबारा जो है वो लियारी किंग्स आप दे सकती है इनको। बिल्कुल, लियारी लेजेंड्स के पास बड़ा अच्छा मौका रहेगा कि एक हेल्दी लीड के साथ अपनी दूसरी इनिंग्स शुरू करे और फिर एक अच्छा स्कोर बनाकर एक बड़ा टफ टारगेट दे
और अपने मैच जीतकर अपने इम्कानात जो है वो बिल्कुल पक्के करे सेमीफाइनल खेलने के। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल की ये टीम है और जिस तरह की इनमें एबिलिटी है वो शो कर रहे हैं अपनी एबिलिटी। जिस तरह पहला मैच वो अनफॉर्चुनेटली हारे हैं, तो इस मैच में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो है वो व्हाट्सएप रीड करने में मसरूफ़ हैं, साथ साथ जो है वो मैच भी देखेंगी जब मौका मिलेगा इनको, और साथ साथ जो गौहर्स होंगे वो यकीनन दुआ कर रहे होंगे कि कराची नाइट्स कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करे और मुकाबला जीत जाए, ताकि हमारी कंटेंशन जो है वो बरकरार रहे और रन रेट पे मामला आए। बहरहाल इस वक्त लियारी लेजेंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उनकी पोजीशन भी मुस्तहकम है। अगर इस मैच का अब तक का जायज़ा लें, ऑन साइड में गेंद को निकाल दिया है वसीम अप्पू ने, गेंद गई ऑन साइड में, 1 रन इस दौरान बनेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने टारगेट दिया है 112 का, और आपको पता है एक 6 ओवर में 112 जो है 112 रन काफ़ी रन होते हैं। इन्होंने कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें आप उनकी आउट भी नहीं है और वो रन भी नहीं इतने बना पा रहे हैं। इट मीन्स कि आप बॉलिंग अच्छी करें, जिस तरह लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया है मोहसिन ने, स्लो वन मिक्स बॉलिंग के साथ 8 रन के साथ ओवर किया, तो ये 8-10 रन नॉट बैड इस T20 क्रिकेट, इस क्रिकेट में टेप बॉल में। बिल्कुल 8-10 रन ऐसे ही हैं कि आप 50 ओवर में 3 रन का ओवर निकालें, और यहाँ 6 ओवर्स में 10-12 रन दे के आप ऐसा ही ओवर मैं समझता हूँ कि आपका समझा जाना चाहिए। इस गेंद को हिट आउट करने में कामयाब हुए हैं, जोरदार और ऊंचा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री से दूर, छक्का। बैट बॉल मैं कहूँगा इसको, देखें कि वो बैट्समैन तो ऑलरेडी वो खड़ा हुआ है इसके लिए कि लास्ट ओवर है। अब लास्ट ओवर है तो उसमें तो अभी जैसे लास्ट ओवर मोहसिन ने किया है सेकंड लास्ट ओवर, तो उसमें मिक्स बॉलिंग की है, तो वो जो बॉलर करके जा रहा है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना नेक्स्ट बॉलर कर रहा है उसको थोड़ा सा माइंड मेकअप करे कि यार थोड़ा स्लो वन या मिक्स बॉलिंग करे, तो वो उसमें थोड़ा सेफ रहेगा। लास्ट ओवर है उसमें बैट्समैन ने हिट करना ही करना है बिलाशुबा, और साथ में उन्हें पता है कि काफ़ी अभी पीछे हैं वो पहली इनिंग्स की बुनियाद पे, तो बैट्समैनों की कोशिश है कि इस ओवर को मैक्सिमाइज़ करें। 35 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स जुबैद ने अब खेल ली है और अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, और मज़ीद अटैक करने की वो कोशिश करेंगे सलाम पर। और इस मरतबा गेंद रुकी, फॉलो थ्रू में पूरी तरह से नहीं है, उनसे लग के ऑन साइड में गई, 1 रन इस दौरान बन गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बॉल था, देखें ब्लॉक होल में बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर था और अच्छा बॉल किया जिससे वो बैट खेल ना पाए, और उसको मजबूरी थी उसको सिंगल लेना या रोकना, और ये लाइन लेंथ चाहिए थोड़ी सी टेप बॉल में अगर बचना भी है, या तो फिर आप मिक्स बॉलिंग करें। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने टीम को लेकर, बॉलर्स को लेकर, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है लियारी लेजेंड के लिए। अच्छा क्राउड मौजूद है, बिल्कुल कम सिन और मासूम बच्चे ग्राउंड में मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अधेड़ उम्र के लोग भी मौजूद हैं, और फिर यंगस्टर्स भी। कुल मिलाकर बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में। और इस गेंद को अप्पू खेलने में कामयाब हुए हैं, जब तक गेंद को रोका जाएगा शॉर्ट फाइन लेग की जानिब 1 रन का इजाफा हुआ। जी बिल्कुल, दूसरा एक और अच्छा बॉल जिस तरह से ब्लॉक हॉल में इन्होंने किया है, यॉर्कर अच्छा बॉल किया है। आप समझ आ रही है कि इनको आगे बॉल नहीं करना है, जो लेंथ जो है वो रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से करना है, और कप्तान का काम होता है थोड़ा सा ज़रा बॉलर से बात करे, उसको इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें बता होनी चाहिए। बॉलर तो आपको पता है बॉल उसने करनी है तो उसकी कोशिश यही होती है कि मैं सेफ हूँ, लेकिन एक आध जो है मिक्स बॉल होगा तो बैट्समैन थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा इससे। 36 रन पे उबैद, 21 पे वसीम, दोनों के दरमियान एक अच्छी शराकत जारी है। इनिंग्स की 2 गेंदें बाकी, 42 रन की अब भी ट्रेल है यहाँ पर कराची नाइट्स को। इस गेंद को ऊंचा खेले फील्डर, बाउंस के बाद गेंद को गैदर करने में कामयाब हुए हैं, ऑफ साइड पे महज 1 रन बना। कुल मिलाकर ये ओवर भी अच्छा हो गया है क्योंकि एक छक्के के अलावा बाकी सिंगल्स ही आए हैं। जी बिल्कुल, पहला ही सिर्फ जो बैट बॉल था जो उन्होंने किया, और उसके बाद जो है उनको समझ आई कि बॉल करनी कैसे, तो उन्होंने तीनों बॉल्स जो आप देखें तीनों ब्लॉक होल में अच्छे यॉर्कर्स किए हैं, तो अच्छी चीज़ है। जितना इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना इनका लियारी लेजेंड का जो है वो फ़ायदा है, उसमें उनको रन अवेल हो जाएंगे ज़्यादा ऐड करने में। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की, अगर वाइड या नो बॉल ना हुई, वसीम अप्पू फेस करने के लिए तैयार। 71 for 1 मौजूदा स्कोर।
और इस गेंद को अप्पू ने उठाकर खेल दिया। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज इनिंग्स को मुकम्मल करने का। अंपायर के हाथ फजा में बुलंद और कमर पे हाथ रख लिए भी सलाम ने, और फिर उन्होंने अप्पू को कहा वेल डन। 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स में बनाए हैं। इस तरह 35 रन की बढ़तरी लियारी लेजेंड्स को पहली इनिंग्स की बुनियाद पे हासिल हुई है। ये हम देख सकते हैं लास्ट स्ट्रोक। जी बिल्कुल, जिस तरह से 5 बॉलें बहुत अच्छी की थी, उसके बाद एक बैट बॉल फुल टॉस। आई मीन टेप बॉल में काफ़ी बॉलें मैंने देखी हैं, बॉलर्स जो है फुल टॉस भी हो रहा है हाथ से। आई मीन थोड़ा सा ड्यू भी है, बॉल थोड़ा गीला हो जाता है। एक आध बॉल आप नया बॉल नहीं यूज़ करते तो फिर वो थोड़ा सा बॉल गीला होता है, जिसकी वजह से मे बी फुल टॉस के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अच्छा वसीम अप्पू ने एंड किया। उबैद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप रही, लेकिन उसको अवेल नहीं कर सके जो इन्होंने टारगेट दिया था। अब 35 रन अभी भी ट्रेल है, तो अब देखते हैं लियारी लेजेंड की क्या इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा टोटल खड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, और जहाँ तक इस इनिंग्स का ताल्लुक है तो उबैद ने 37 रन की अच्छी इनिंग्स खेली और अच्छा साथ दिया उनका वसीम अप्पू ने भी। मगर फिर भी ये इनिंग्स की हाइलाइट्स हैं। 35 रन की बढ़तरी, अच्छी खासी बढ़तरी है, तो बड़े दमखम के साथ लियारी लेजेंड्स अपनी इनिंग्स शुरू करेंगे। फुल टॉसेस जिनका जिक्र कर रहे हैं आतिफ मकबूल, वाक़ईतन बहुत की गई हैं। ये हम देख रहे हैं हाइलाइट्स में भी कि जो ज़्यादातर स्ट्रोक्स लगे हैं वो फुल टॉसेस पर ही लगे हैं या फिर आगे गिरी हुई गेंदों पर। तो ये सूरत हाल है यहाँ। वसीम अप्पू ने चंद बड़े जारहाना स्ट्रोक्स खेले। उबैद लेफ्टी का एक ज़बरदस्त छक्का। अप्पू अगेन इन एक्शन, लेफ्टी अगेन स्मैकिंग वन अवे। दोनों बैट्समैन नॉट आउट रहे और यही दोनों नुमायां हैं क्योंकि उस्मान कोई रन नहीं बना सके थे। 37 उबैद के हैं, 27 हैं वसीम के। एक विकेट मिली अहमद को, बकिया तीनों बॉलर्स विकेट लेने में नाकाम रहे, लेकिन राना ने अच्छा ओवर किया, महज 8 रन दिए थे। इस वक्त हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको लाइव एक्शन के साथ ज्वाइन करेंगे।
Welcome back and good evening once again as we are up here for yet another innings, the third innings of this last and third match of the night. There you see two of the umpires are making their way to the center. As usual, showing that white cherry with the tape on it. It's been used quite a bit, this white cherry. Farooq, what do you make of it? Well, it looks beautiful. The white tape wrapped on the tennis ball, and that's the beauty of this form of cricket. And they are in dozens of numbers because the balls get lost somewhere over the boundary and out of the stadium. And wrapping tape always makes it fascinating, and that's the trademark of Pakistan table cricket. Two openers away. Lyari Legend, they're playing second game of the day, consecutive games, and Lyari Legends are 35 runs ahead, and certainly their batsmen are making their appearance with an absolute advantage. Now they're back again with Hamidullah in the opening department. In one of the innings, they shuffled the openers, and that ploy didn't work. Now they're back to normal because Nizar and Hamidullah throughout the course of this event have been opening the innings and have been very successful in patches. They've been their main players and they have been providing them with very good start. And this is what they will be expecting. They just need a win to cement their spot in the semi-final, and both the semi-finals to be played tomorrow, Friday. So tomorrow will be the second last day of Jubilee KTPL Season 3. Qari Hamidullah will take the strike, and if they win, that means Gulshan Johar will be eliminated. It's a tough competition, I can tell you. And they will have to win by a good margin as well. Nizar Ali, left-hander. What will depend on him? He's one of their key players. They have a lead, and they need to strengthen their lead in this innings by adding some substantial runs. That's quite right. Ali Sher has got the ball in his position. And as far as Karachi Knight is concerned, they are certainly out of the competition. But they have to play, they have to win for a pride. Just to give themselves a bit of confidence before they finish this tour. Here we go. And there you go. On the legs. Hit me delivery and hit me is the answer by Hamidullah. First boundary. Fine shot. He shuffled across. He exposed his leg stump and it's beautifully flicked away. Pure timing. Not many batsmen we see who just expose their stumps, but he deliberately exposes his stumps to position himself perfectly. Beautifully timed. Lifted. One bounce out of the fence. Oh, a little bit of heli in that stroke. Down the leg side. He could have got this one as well, but this time he shuffled across a little too much. Still, umpire says that the bowler has to re-bowl that because it was pitched outside the leg stump. Once again, leg stump was exposed. This could have been dangerous for Qari Hamidullah. He has to be careful. Ali is the bowler who was maybe targeting that leg stump, but he lost the radar by a long way. Knows the importance of this innings, does Hamidullah, and he's in good form, wants to make use of his form. That's why trying to do some different things, trying to just dent the focus of the bowler earlier on, which is always important. Down the leg side, the bowler is erring in line. I don't know what he's trying to achieve with that line in particular. Is Ali the bowler? Before the release of the ball, Qari Hamidullah is shuffling across. I think that is confusing Ali Sher. It's better to bowl somewhere outside the off stump, fourth or fifth stump. That will be far more benefited for Ali Sher. Well, he's toying with the bowler and it's paying for him at the moment. He's launched it and he's launched it in the hands at the moment. Well, he's been gone up. He's been gone out on that occasion. Long on grabs the catch, and it's Ali who has the last laugh. He can't believe it, Qari Hamidullah. He lofted it, and just for a second I thought that would travel all the way. But it's got plenty of height, but not enough length. Fine catch, just inside the boundary. Ubaid lefty. Made no mistake here, and Qari Hamidullah goes for 4, 1 for 8. It's time to go downstairs. Let's see what Hina's doing there.
so much. Well, on the sidelines, I have with me Mr. Ali Shahan, who is CEO of Dynamic International Resources. Mr. Ali, thank you so much for joining us on the sidelines. How do you feel being here at the KTPL Season 3? Well, first of all, I would like to congratulate Mr. Zuhair for organizing such an amazing tournament, you know. It's very rare to see, especially table, tournament, cricket tournaments like that on this level. So I feel this is a good effort done by Mr. Zuhair, and I'm encouraged and thrilled to see a lot of young players, you know, having this kind of platform, which is, acknowledging their efforts in table cricket. Definitely. Well, any particular team you are rooting for? Well, any player? You know, I just got down to Karachi, and Okay. it came out as a surprise for me, watching this kind of tournament, which is very well organized. So I'm not cheering for any team, but for all the teams actually. So your personal interest in cricket, do you play cricket? I love cricket. Okay. I love cricket. I've played Bowling, first. batting, what do you Well, prefer? I was a mediocre all-rounder. Okay, wonderful. Well, also we would like to take your comments regarding Badar Expo Solutions efforts behind this Premier League. What do you think? इस तरह की जो platform है वो talent को मज़ीद आगे लाने में कितना role play करते हैं? And I of course believe their efforts. Talent को acknowledge करने के लिए we need these kind of platforms. और हमारे especially Pakistan में we need these kind of platforms. So it's this really well organized efforts by Mr. Zuhair, I would say, Badar Expo. He is the man behind this Badar Expo, right? So yeah, I'm happy to see that there are platforms coming up to encourage young talents, and you know, yeah, I'm happy to be here. All right, thank you so much. It was great chatting with you on the sidelines. Likewise, thank you. And now time to go back to Combox. Thank you so much, Hina. We saw a boundary of the outside edge. This is a proper connection. This is Hassan Painda, and it's his first 6 of this innings. It's a fine shot, picked it up from outside the off stump, beautifully struck. No half measures on that occasion. Look at that. He cleared his front leg and gave us everything. Full-blooded strike, and it's a magnificent shot. Yeah, he's really given it a go and got it out of the screws for the maximum. Short of length this time. Couldn't pull that as he would have liked. Oh, my word. Obviously, he's not happy with himself. It was a half-tracker asking to be hit. He thought he has missed the opportunity. 1 gone, 19 for 1. दानिश भाई विकेट देखें, ठीक है? दानिश भाई विकेट सही है? 19 for 1 on the board. Hassan on 11. Zahar has to get off the mark. Now it's time to go to downstairs once again to Hina. Thank you so much, Farooq. Right now I have with me Mr. Abdul Sabi, who is economics lecturer. Well, we are having some fans who have different background. It's interesting, sir. Thank you so much for joining us on the sidelines. Thank you. So, being lecturer, how much passionate are you for cricket? Well, I'm very much passionate about every game. I usually play badminton in my local club. और यहाँ पर मैं सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आया हुआ हूँ लियारी लेजेंड को. यहाँ पे मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त खेल रहे हैं ज़ुहैर साहब, और मैं उनके लिए बड़ा दुआ गो हूँ कि वो आज सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएं. यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा. लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट हमारा शायद नॉर्थ नाज़िमाबाद में था, वहाँ पर भी बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल था, और यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ एक नेक्स्ट लेवल तक KTPL हमारा पहुँच चुका है. और जिस तरह इंटरनेशनल कवरेज की जा रही है और एप्लीकेशन के बारे में मुझे पता लगा कि जो लॉन्च हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे पैमाने पर इस लेवल पे क्रिकेट हो रही है. और मैं ख़ुद कॉलेज का पार्ट हूँ, स्कूल का पार्ट हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है वो उसमें हमारे पास जो है वो हमारे स्कूल के लेवल पे इंटर रीजनल टूर्नामेंट्स होते हैं. मगर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पर आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको प्रमोशन मिले एक इंटरनेशनल लेवल पे. तो आई सपोज इंशाल्लाह कि कुछ इस किस्म की चीज़ें होंगी जो हमारे ग्रास रूट लेवल से लोग या बच्चे यहाँ पर आएंगे और इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे.
एंड ऑल्सो आप जैसे पिछले सीज़न का भी रेफरेंस दे रहे थे कि पिछले सीज़न से आप सीज़न तक मज़ीद बेहतरी आ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, और टैलेंट को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, ये लीग कितनी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है मुख्तलिफ ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को रिकग्नाइज़ करवाने में? मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि ये अब से हम कहते हैं कि एक्ट लोकल और उसी लोकेलिटी में हम समझते हैं कि इतना अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि यहाँ जो भी एक लड़का यहाँ पर खेल रहा है तो वो अपने साथ अपनी फैमिलीज़ में और उसी के सराउंडिंग में जितने लोग हैं वो भी प्रमोट होते हैं, और ये एक बहुत मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का फैक्टर है कि मोटिवेशन बच्चों की होनी चाहिए, उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो इनकरेज हों कि वो अपने आप की जो अपनी एफर्ट्स हैं वो एक पॉजिटिव डायमेंशन की तरफ लगा सकें. Okay, thank you so much for joining us on the sidelines. Now we go back to the comm box. Thank you so much, Hina. And meanwhile, we see Hassan Painter is taking Shafiq to the cleaners, and he's been unstoppable. He's hitting some lusty blows. My word, he can hit the cricket ball. This tape ball. Goes through the offside. That one hit like a train through the covers. Eventually, it will get to the fence. Well, this is Hassan's territory. He was on fire, Hassan Penda. And before that, we saw a gigantic six to the onside, and now the boundary along the carpet is smashed away. Wit was offered. The outfield was slightly on the heavier side, otherwise it was struck so hard by Hassan. Leaves that safely alone, will be a wide. Well, Shafiq has been already under the pump, and I can tell you, have a look at that lead. It is extended to 76, and we are only into the second over. Looks as if somebody like Painter continues for another couple of overs the way he's batting right now, it's going to be a gigantic ask for somebody, Karachi Knights. Inside edge, nearly got his man there, Shafiq. He was in business. But he gets away with it, does Painter, the batter. They could have been gone. It was so close to hit the stumps, almost through his legs, and Hassan Painter was just a touch lucky on that occasion. Tell you what, he's a brutally built fellow, he's Painter. Even if he doesn't connect out of the middle of the bat, gets off balance a little. There you see, tries to give, he just tries to have a massive more at that one. 2 overs done, it's 41 for 1. And with that, we have to go to the sidelines. And let's see who is with Hina this time. Mr. Farhan Arif, who is head of IT Medics Lab. Thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. By the way, KTPL किस तरह enjoy कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के ज़ुहैर को और बाकी इन पूरी KTPL टीम को हम इस चीज़ के ऊपर बहुत अप्रिशिएट करेंगे. जिस तरह का इन्होंने मेला सजाया हुआ है, जिस तरह इन्होंने पूरे कराची को इंगेज किया है. इनफैक्ट नॉट ओनली कराची, पाकिस्तान और पूरी दुनिया अब जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है और बहुत मज़ा आता है जब भी हम इस चीज़ के इवेंट में आते हैं. ये 3rd सीज़न है और हम कंटिन्यूस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अब इसको देख के हमें अपनी बचपन की जो यादें हैं हमारी ताज़ा हो जाती हैं कि हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे और टेप बॉल जब हम ग्राउंड में खेलते हैं तो इसका एक और ही मज़ा होता है कि पहले हम मोहल्ले में खेलते थे तो बॉल खो जाती थी तो खेल ख़त्म हो जाता था. अब इस ग्राउंड में खेलते हैं तो बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है और बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं. वैसे टेप बॉल नॉर्मली आप फॉलो करते हैं और यहाँ पर किस टीम की परफॉर्मेंस या कौन से प्लेयर की परफॉर्मेंस से आप इम्प्रेस हैं? अभी तक हम लोगों ने जो फील किया है कि मलीर मलंग और जो लियारी लेजेंड्स हैं इनकी टीम बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं. स्पेशली इनके काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके जो है ना टीम को आगे चला रहे हैं. तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो प्रमोट हुए हैं, सीज़न 1 से इनके साथ इंटैक्ट हैं और बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा है कि उन्होंने जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने छक्के चौके मार के अपनी टीम को जो है ना सपोर्ट किया है. तो अभी हम इस चीज़ को मैं विश करता हूँ कि लियारी लेजेंड्स और मलीर मलंग जो है ना वो फाइनल में आए और मज़ा आएगा उन लोगों को मैच देखने में. So well, we have 2 semi-finals tomorrow, so we are expecting कि आप आएंगे और semi-final मैच देखेंगे. Definitely, मैं इसको हम जो है फाइनल तक इसको आएंगे और फाइनल के आके हम जो सपोर्ट करेंगे. Okay, thank you so much for being with us on the sidelines. Now let's go back to Combox. Thank you, Hina. That ball was clipped away off the hip by Hassan that you see in the replay. Using the pace of the bowler to get the connection and help himself to another boundary.
clean of connections, but nevertheless he got a boundary. This time he's given it a go, and it's a little bit of helicopter, reminding me of Mahendra Singh Dhoni with that stroke. Another 6 for Hassan, and that brings up the 50. What a way to bring up half century of the side. Fabulous shot indeed. Helicopter shot comes into play and deliberately done by Hassan Penda. And he got enough height to beat the fielder. Terrific cricket. He goes again. He's having some hellies here. And it's one bounce down to straightish long on for a single. Tell you what, Nizar, his partner, the left-hander, came as an opener and he faced his first delivery in the 3rd over. Would you believe? Not very often you see this sort of stuff. Now we'll try to keep the strike as much as possible. Already plenty of damage has been done. They are 88 ahead at the moment, and quite a few balls are left to be bowled. Oh, big swing. We'll have to re-bowl that. Big wide too by Ali, the bowler. Big swing of the bat from Nizar. He chased the ball, but the ball was going away from the tram line. It was a little close. That surprised Ali Shah a little bit. He was moving further away after pitching. This is a wet ball because the ground is a little wet. There's a lot of dew in the field. Short of length, altering his pace. It was a slow delivery, well disguised. Nicely bowled. Good comeback. A change of pace did the trick, and that's exactly what happens when you stay away from the strike for quite longer period, and that is why it takes time for you to get some sort of connection. Now he's got a piece of advice from his colleague Hassan, who has been so devastating. Nizar is also very capable. This time he's waited for it and waited for it for this, because he sends him over square leg for yet another maximum. It's a bad line, nicely put away. The pick-up shot from Nizar lefty, and that is why he got that advice. He waited for it, and wasn't a quick delivery, and beautifully picked up. Plenty of bat on that, nicely timed, good result. First maximum for the left-hander, 61 for 1 after 3. Meanwhile, Farooq wants to have a cup of tea, and it's the one and only Rana Ishfaq who has joined me. Hello, Rana. Thank you very much, and hello, Falak. 61 for 1 in 3 overs. Add 35, what they have in terms of lead. 96 in 3 overs. What are they looking at? Something around 150, maybe the biggest total of this competition so far. They're eyeing at that, but you never know. Things do change in split seconds in cricket. That's the beauty of the game. Yes, cricket changes fairly quickly, but at the moment they have the stranglehold on the game. Hassan has done a terrific job by scoring 42 of just 13 balls. Nizar hasn't done bad in this tournament. Yeah, in this innings, he's been off strike for the major part of the innings so far. Hassan has had the bulk of the strike. He has driven that away, straight down the ground for a single. Yes, out of 18 deliveries, Nizar has only faced 3 deliveries. So most of the time he's been on the non-striking end. Yeah, and mind you, he came to open the innings. Lost his partner, and then Hassan Penda joined in, and he had most of the strike. And rightly so, because Penda was looking very good and looking berserk as well. He was just thrashing them. Yes, he's going all guns blazing at the moment, the Panda. Very good ball. It has been played away onto the offside at the end for a single. Well, one thing I get the feeling at times when I see these full tosses and at times juicy deliveries, the length balls even,
missed by these batters. I get the feeling somewhat, most of these batters, I'm not talking about everyone, not reading the bowlers off the hand. No. I got to be agreed with you. Although, and that's gone for 4. That's gone for 4. I thought it would have been stopped somewhere in the outfield, but it couldn't. Well, he's a muscular fellow. He's Hassan Painter, and he has thrown all the kitchen sinks at that one. Got the boundary inside half of the bat, but the power of the man taking the ball all the way. And he raced up to 47 almost in no time. Just 15 deliveries he has faced. Just 3 short of what would be a tremendous half century. Everyone got beaten. And it's going to go all the way behind the wicket keeper. Let's see the signal of the umpire and 4 byes. Well, I tell you what, that's not fair. These figures, this boundary is not going to dent the bowler's figures too, because it will be considered as extras. But still, I would say it's a moral victory for the batting side. I think wicketkeeper should have stopped that one, or either from the third man and fine leg area. 2 fielders were there as well. And he has spread that away and played that away beautifully. And here comes his half century with a grand 6. What a way to bring it up. There won't be a better way to bring up your half century than this. Hassan Painter, it was pitched up. And how well he picked that up. He was off balance. I tell you what, most of the shots. He goes again, bigger and better, and it's dropped right in front of us. Oh, thank God. We are behind the glass. Otherwise, it would have struck us. Wow, wow, don't hit us, Mr. Panda. Oh my word, Painter, what are you doing? Come on, son, don't hit our way. We were in danger. The commentary box was definitely in danger. He's hitting them some. That was a big hit. 83 for 1. 4 overs have been bowled. Yep, he struck that one very hard. And that one dropped just in front of our eyes. Wow. Tell you what, it bounced on the concrete and hit that glass in front of our eyes. Oh my word, I had goosebumps on me. Panda is in aggressive mood. That was a thunderous hit. Shafiq has gone for 40 in his 2 overs. Has been very expensive. Now they're leading by 118 runs with 2 overs to be bowled. And Hamid is the one who's going to start the over number 5. Lyari Legends lost the match though against Clifton. This one is pulled away and fielder made almost mess with that one. Let's wait and see for the signal of the umpire. I think it didn't hit the boundary. Or has it hit the boundary? I reckon it has. It's gone all the way for 4. And I tell you what, that is not acceptable even at school level. Very poor fielding, no doubt about that. Absolutely sloppy and lazy piece of work by the fielder. They are asking for the more trouble. And Nizar lefty this time around whacked that away beautifully for a 6. Well, that was a beautiful off drive. Only this time it's lofted in the air and maximum is the result. Beauty of a stroke. Didn't move an inch while executing that shot. Left-hander. Width was there and he showed great flexibilities of the arms. And he has blasted that away onto the onside. It's gone country mile again. 6 more. Well, the left-hander showing us what he can do to different line and different lengths. This time it was short and he has pulled that away over square leg
for a gigantic 6. Oh, he was trying to hit that one away through the offside, wide goal, because it was too far away from his range. They have gone past the 100 mark, 101 for 1, and they're leading by 136 runs. And have a look at that, over 3 balls to go, and he's gone for 18 already, under the pump. Hamid, he's the youngster, hasn't been bowling a lot in this competition. He's looking for shelter here almost. He's giving the runs away with great generosity, and batsman is making minced meat of the bowling at the moment. Way down the leg side, way down the leg side. This over is going bad to worse now. And you can assess from the body language of Hamid the bowler, he's definitely feeling the heat. At this stage, when you're feeling that amount of pressure, what should you do as a bowler? I only can pray that batsman can miss few, but he's not in a mood to miss any of them. But this time he hesitated in the air, fielder almost came under the ball, couldn't quite catch that one. It dropped on the land, and couple of more runs. Well, this is the last thing you need as a bowler when you're already under a lot of stress. That was miscued by the batter, and the fielder just couldn't quite get to that ball. Could have been a wicket for this bowler. We've got a feel for him. There you see it again. That was in the air for a long, long while, almost for the eternity. Oh my God. Swings this away, down towards the deep backward square leg. Single is taken. But I think bowlers still can survive by mixing their pace up, by doing some variations. And if you keep bowling like this, the Hamid is bowling at the moment, then you straight away asking for the punishment, and it is as simple as that. Yeah, you're right. And this is what Atif Makbul was suggesting to these bowlers. He was doing commentary with you earlier, former first-class cricketer. Absolutely. And there we go again. Hassan Panda is in a tremendous form. He is really taking the fight or taking the battle to the opposition. That's a beautiful 6. Well, bowling a full toss on Hassan's legs, asking for punishment. Easy pickings for a man like Hassan. 5 done, 1-1-2 for 1. Effectively, 147. Both batters are going crazy. Nisar didn't have much of the strike earlier, but now he's got 27 of 9 balls. He struck 3 sixes in the previous over. Hassan 65 of 19 balls. He's playing almost at his will. Well, the way Hassan is batting, I get the feeling he's toying with these bowlers. Imran Qazi is the new one. And he started off with a big wide down the leg side. Yeah, he almost toying, I think. Not almost, but he's certainly toying with the bowling attack. Definitely. And the result is he's on 65 of 19 deliveries. Strike rate well above 300. Nizar has got that away and got that away terrifically. 6 more into the offside. Oh, what a stroke that is. I tell you what, over extra cover, not an easy shot to execute. Reminds me of son of Yasir hitting Shane Bond. What a great player he was.
Quick single. Wicketkeeper didn't throw at the end. He refrained himself from throwing. Jayasuriya scored 340 once against India in a test match. Mahanama got 225 in the same match. Arvinda got 126. And Sri Lanka scored 952, the highest test cricket score ever. And that was the highest test cricket's partnership at that point, 576 between Mahanama and Jayasuriya, which was broken later by Sangakkara and Jayawardene. Yeah. Mahanama then became the match referee as well. Ranjan Madugale, also the Sri Lankan representative when it comes to the ICC referees. Panda struck that away onto the onside. They take one, turn back for the second, and they're well home. They wanted a third one as well, but at the end decided against it. Well, you're talking about that 951 runs in a test innings was the highest runs in test cricket by Sri Lanka. There was a time when they hold that record in all the formats. In T20s, they had 260 runs. Hey, Hassan, you little beauty. What a good shot. Oh, they can't really stop him because he's really taking them to the cleaners. They are all on his mercy now. Not only is taking them to the cleaner, but I think he's slaughtering them. Absolutely slaughtering them. And goes again. In the air. Going. And gone. Wow. What a batting. Ball is visiting outside the mid-wicket boundaries regularly. And with that six, Hassan becomes the highest run getter in this tournament, surpassing Taimur Mirza's 75. And he goes again and adds 6 more. He's not stopping tonight. What a way to end the proceedings. Hassan, you beauty. 85 of 23 balls. Wow. What an innings. A monumental effort. A memorable effort. And he's individually now the high scorer of this tournament. The best innings of the tournament. 176 runs will be the biggest target to achieve for Karachi Knights. It will be very tough. These are the highlights. Hassan then played some marvelous strokes. He hit some lusty blows in all parts of the ground. Then Nizar lefty came to the party. Oh, that was some hit. They continued their merry way. Hassan and Nizar lefty. And hit sixes almost at the wills. .85 scored by Hassan in just 23 balls, and Nizar scored 34 of just 11 balls. There have been 18 extras as well. Only Ali chipped in with a wicket. All the others were wicketless and got ponked
as well. Karachi Knights openers are making their way out to the center to go for a big and massive target. And Farooq Riaz has made his way in as well. Farooq, welcome. Thank you, Rana Ashwaq. Karachi Knights have to make history tonight if they want to win. And they are playing for the pride. They are already out of the competition. That's the equation. 177 runs are required to win this contest. They really have to climb Mount Everest twice, I reckon. Absolutely. Even something higher than the Mount Everest. 177 in 6 overs. My word. I'm feeling some difficulties to calculate the required run rate. 177 in 6 overs. 20 per over will get them 120. 30, 29.6. 29.60. It means they got to hit 5 sixes in every over. They got to hit 30 sixes in 36 balls. Oh. Who's your money on? Straight away on Lyari Legends? Who knows? Technically, they are in the game. So they should try. They should go after the bowlers right from the word go. And they have to be relaxed. They have to play with a free mind and just try to go after the bowler, play the ball on the merit, and wait for the ball as well, because some of the bowlers are trying to change the pace. Haris Ali, the skipper, the captain, he has been joined by Ubaid Lefty. Ubaid Lefty is on your screen. Yes, as they say in cricket, one should stick his neck out. Shouldn't stick his neck out, but I want to stick my neck out. Ahmed Kulfi will start the proceedings. I think they're not going to win this match. Although I'm taking a bit of risk, but I can stick my neck out. Specifically this time around. So Haris will face the first delivery, the final innings of the Robin round match, and tomorrow 2 semi-finals to be played. The final innings is about to commence here. Yes, Ahmed Kulfi is absolutely ready. He has got the new ball in his position. Inside edge. Is he gone? Umpire is unmoved. That is quite interesting. We heard something. Maybe the bat hit the ground. Nothing happened. Oh, yeah. I think it pitched outside the off stump. There we watch it again. Yeah, bat did hit the turf. This is where the sound came. 177 in 35 balls now. He's got a long run up, Ahmed Kulfi. He has been impressive. Big full toss, loopy delivery, no ball given straight away. He missed it. And the no ball for a waist height. So super hit, free hit in fact, to be awarded. Yeah, batsman now has the license to go after the bowler. Kulfi is taking long run up to the wicket, trying to crank it up, trying to generate some extra pace. And that's what made him to bowl a no ball as well. Now he's going to in with the free hit. Karachi Knights faces are a bit gloomy here. He didn't able to take any toll off that free hit. They missed it, and Karachi Knights stayed second last of the bottom. They beat Johar Jawans yesterday, and they got 2 points, but they have plenty of things to improve. They have to work on their strategy. They have to work on their fielding as well. They have to find top batters who can be really devastating up the order. Missed it. Change of pace, reduce pace, completely Fox Haris. Dot ball again from Ahmed Kulfi. Impressive beginning.
33 balls are left, 175 to be made. Lyari legends can smell the semi-final already. What will be the asking rate now at the moment? Big shot, nice and clean, absolutely brilliant. What a connection there is. That has sailed over straight as an arrow from Haris. Top class stuff. That was a fabulous shot. He produced the beauty from nowhere. Pitched outside the off stump and really tonked that with all the authority and all the power he could generate behind that. Absolutely smashed it on the rise and played it absolutely straight. Change of pace, reduce pace. Fox, Haris again. He can't believe it. It's a good comeback by Ahmed Kulfi. He decided not to offer any pace to Haris, especially the kind of shot he played just a few moments ago. Run rate, I think, moved up about 33 per over. Oh my. Well, I will update you after the end of this over. Reduce pace again. Slower one. Just managed to get one. Was in control. Going back for two. Could be tight. Throw is not good enough. Couple of runs to Haris. These runs won't help their cause at all. I think they should forget win or lose. They should be playing entertaining cricket in next 31 balls. They should be playing for the crowd. Oh, what happened there? What happened there? He overran on that one, then recovered it. Ten for an after one. So Rana Shwak is 33.4 is the asking rate for Karachi Knights. You're quite right. They have to play aggressive cricket. They should enjoy themselves. Forget about the equation. Forget about the result. Very aggressive, very animated wicket keeper. So he left, he will deliver now. Round the wicket to the left-hander. That is quite interesting. Not very often we see the left armer operating from round the wicket to the left-hander. Missed it, missed it. And could be a boundary behind the stumps, missed by the keeper as well. Nobody got there. We have to wait for the umpire signal. Yes, leg by given. Whatever, they will take it. 4 valuable runs for them. All the batsmen thought he did get his bat onto that one. But umpire wasn't agreed with him and declared 4 leg byes. Oh, goodness me, what was it doing? It's wide given. So close to hit the leg stump. He pulled off in the very last second. That is something unusual and extremely interesting. Outside edge, straight to the keeper. Dot ball again. Way outside the off stump. He really had to reach for that. Slingy action, operating around the wicket, nagging angle, creating some problem for Rubaid lefty. 2 semi-finals coming in your way tomorrow. Big shot over mid-off. Has he cleared the boundary? Not quite. 1 bounce, 2 bounces into the fence. So finally, a good decent contact from Rubaid lefty. Very good shot. Width was there. And he extended his arms, hit that one up and over the infield and picked up a boundary. Oh, missed it again. Bad lefty was too early onto the shot. It's turning out to be a very good over from the left armer.
Where are you rating these top 4 teams? Let's include Lyari Legends as well in the top 3. Turned away to the onside. I think all the 4 sides are deserving side to make it to the semi-final, and I personally believe both semi-final will be an absolute cracker, and they will come up with the best 11. 2 gone here. Like 1 to go. Yeah, Malang started the campaign well, then they slided down a bit, but then again they made a good comeback. To me, Popular is the side which looks a bit different than the others. Pulled away by Haris. He's found the gap and he's found the boundary as well. So boundary to end the over. Pulling it front of mid-wicket for a boundary. And then this side, Lyari Legends, because it didn't start well, but then they picked up well. And now they are going to play this semi-final. They could be very dangerous side as well. Especially after the inclusion of Hassan Penda. The way he played, the kind of skills he has and the kind of devastator he is. And as far as other sides are concerned, in DH Dabanggs we see Chota Vicky, Horam Shahzad and Arsalan. That's the sponsor we have. Fast Cables, Yubil Amin, the prime sponsor. Kainat Munir, Dell Technologies. Plenty of support from the sponsors throughout this campaign. Osaka Kriko, Polo in Basic. Alpha Let's Go together, and TK Events. Whereas Clifton Popular is concerned, they have Asad Shah, Fahad Mia Chunnu, Tahir Pindi, and Mali Malang. They have TK, Mimran as well. So it's very easy. It's not easy to pick a particular one side. Top 3 are extremely dangerous in all these teams. So that should be a cracker tomorrow. Both the semi-final. Full toss. Yeah, every side have 3 or 4 good cricketers. Khurram Chakwal, Chota Vicky, as you mentioned, and the way Hassan Panda played tonight is very impressive. And then Fahad Mia Channu, Asad Shah, they all are dangerous campaigners. Then of course Mimran and the others, they can be very dangerous as well. Oh, missed it again. He's completely out of sorts, Ubaid lefty. That's quite right. Personally, I believe the bowling will play an important part. As Zahir Ahmed is back in DH Dabanggs side, he missed earlier games. But the kind of pace he has, the kind of wicket-taking ability he has, he can be an X-factor. So all these 4 sides are packed with top batters, but whoever will come up with better bowling performances, far better catching performances, they will certainly surprise any side. Yes, fielding will matter a lot as well. Quite right. And so will be the bowling. Oh, full toss, weighted beautifully, spanked away down the ground. Good, decent connection on this occasion from Ubaid lefty. Half a dozen to his name. Yeah, that was a rank pad full toss. Asking for the punishment. Yeah. Not only it was a full toss, also well away from the batsman body. So it gave batsman enough time or room to free his arms. Smashed away, hard and flat. Straight to the fielder. And also, Rana, what I believe, the fielding positions are also very important. On quite a few occasions, they missed the run-out chances because there was no fielder to collect the ball, to dislodge the pace. And in the street cricket, we see the fielders are positioned very close to the bowler to stop singles. And similar kind of things these teams should do, because they need to convert half chances and by keeping top fielders near the pitch can certainly help them. Absolutely right. This is the way coaching should come into play. The players should be told certain minor and little things, but these things are very important. Well bowled again. Just tapped it with soft hands.
we saw quite a few runouts in UB11 KTPL Season 3, but also on quite a few occasions the fielders missed the target, and sometimes we saw the overthrows from the fielders that gave away unnecessary runs. So all these factors missed it altogether. So all these factors are so important, and these factors should be addressed, especially in the knockout game. The chances will be minimum to bounce back in knockout game. 3 gone, 33 for none. And the com box have been joined by Falakshir. Thank you so much. And there you see, these are the ways you can watch us through 84 different channels across the globe. Of course, it's Geo Super's production, and it's going throughout the globe. In Africa, Willow TV, Sub-Sahara, Sahara. Right then, have a look at that scorecard. 3-3 everywhere except the wickets column. Ahmed Kulfi bowled brilliantly, went for just 18 runs off his 2 overs that he's bowled. Sohail, the left-armer, will continue. Very good chance the Lyari Legends have today. And certainly they have a bright chance to not only win it and win it comprehensively, and their net run rate will be push up dramatically. And they can also give chance to their part-timers as well. Swiveled away, will get a boundary. Harris is the man who's got that boundary. Umpire is just having a check. It's gone all the way. Just bounced before that skirtings. Should be a 4. That's the confirmation. Yeah, at times it's pretty good feelings, you know. If you are Lyari Legends, then you have luxury of this sort of situation where you can have your part-timers down the leg side, another wide. So it's pretty important, you know, with the addition of somebody like Ahmed Kulfi and Hassan Painda with the bat. You have seen they already have their influence. So it will be quite useful for them. That's down the ground, and that's massive. That's a 6. A very good hit by Harris. He's been in good form. It's a clean strike. He loves to strike straight down the ground. Pitched up on this occasion. Good full swing of the bat. Beautifully connected. Missing his line there. He's not under pressure. I don't know what he's trying to achieve. Maybe he's trying to bowl fast. If you try to do that, then you miss your lines, your lengths. The accuracy somewhat decreases, and that is not helpful for a bowling perspective. Very important that he gets it right. Down the leg side again. That's poor line. You can't afford to do this, especially when you are on the driver's seat. And it's time to go downstairs and see who is with Hina. With me on the sidelines is Mr. Raja Mukhtiar Ahmed, team owner of Karachi Knights. Thank you, Mr. Raja. आपने join किया हमें sidelines पर. Well, technically तो सफ़र ख़त्म हो गया है इस लीग में. क्या कहेंगे अब तक के तजुर्बे को लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि सफ़र अभी तो शुरू हुआ है हमारा, और हमारी माशाल्लाह पहला हमारा ये टूर्नामेंट था, तो इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोटिवेशनल और लर्निंग पीरियड था हमारे लिए. बहुत सारे ज़बरदस्त लड़के निकले हैं, और पहले तो इसी टीम ने एक भी मैच नहीं जीता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैच तो हम जीत के ही जा रहे हैं. और अगले साल इंशाल्लाह बहुत अच्छी टीम बनाएंगे, और बहुत अच्छे लड़के हैं. आप देख रही हो कि आप जितनी भी टीमों में जितने लड़के हैं पूरे पाकिस्तान से उठाए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं.
तो बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारा, और यही कहूँगा कि अगले साल के लिए तैयारी है। बहुत ही अच्छे लड़के हैं हमारे सिंध पुलिस के SSU के जो लड़के हैं, 4-5 हमारे बहुत अच्छे लड़के निकल आए हैं, और बाहर के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन कहीं कहीं पे बैड लक था, कहीं कहीं पे मतलब वो हाथ साथ नहीं दे रहे थे, कोई लड़के हमारे कैच नहीं पकड़ पा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा अधूरा रह गए, नहीं तो सेमीफाइनल तक तो पहुंचना था, ये मेरी विश थी। अच्छा जी, वेल आपने अगले साल की तैयारी की बात की है, तो किन एरियाज़ को आपने अभी से ही वर्क करने के लिए आपने फाइंड आउट किया है, कहाँ ज़रूरत है काम करने की? फील्डिंग, बॉलिंग, बस ये 2 साइडें हमारी वीक थी, इस वजह से हम आगे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप देख रही तो कराची नाइट्स 100 प्लस करती आई है, तो 100 प्लस बहुत अच्छा स्कोर होता है। अगर हमारी बॉलिंग अच्छी होती, हमारी फील्डिंग अच्छी होती, हमारे कैच मिस ना होते, तो शायद हम इस पोजीशन में नहीं होते। वेल डेफिनेटली, लेकिन अब सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे कल, किस हाँ। टीम को सपोर्ट करेंगे आप? जाहिर सी बात है, एक दोस्त है मेरा जोहर नसीर, इस जो टीम के साथ जिसके साथ आज मैच है, तो इसी को हम सपोर्ट करेंगे। आज भी इसी को लग रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग यही समझ रहे होंगे कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लड़के मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, स्कोर बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया मिस्टर राजा मुख्तियार, टीम ओनर कराची नाइट्स, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू कॉमबॉक्स। Thank you so much, Hina. It's always good to see. Earlier we saw the owner of Johar Jawans and now the owner of Karachi Knights having a lot of confidence and accepting this defeat and pretty much confident for the next year. The preparations and all the things they're saying that we had the deficiencies in this event, in this edition will be sorted out next year. It is always good. Good to see bright smile on their faces. Rana Mohsen will do the bowling. That's good to see the owners are quite happy and they're packing up the players because they know the players are learning every day and they can step up. They need confidence, they need platform. Plenty of improvement has to be done. Improvement needs to be done with the line of Rana Mohsen as well. He's been one of the leading wicket takers in this competition, has been very successful. Rana Mohsen. But he's bowled in patches. He's been a little off target at times. This time it's a proper connection. And yes, result is also in the favor of the batter. He has hit that Ubaid lefty. Ubaid lefty didn't miss his target. He dropped the ball short and he got the way to work with. Beautifully struck. Just for a second I thought the fielder had a chance, but it was way over his head. He goes again. That's even a better connection. And it eventually goes over the line. I said better connection because that was the longest part of the ground. That's beautifully struck, but it played it just well enough to clear the boundary. I thought it would carry all the way. The man had a chance. He just could not do exactly what was required. He tried to push the ball, lost his balance, lost his eye. In the end, the six conceded. So certainly it won't hurt, but they have to learn. Good effort though. Yeah, if they keep on hitting sixes, the maximum they will get 72, but they need 120 before the start of this over. So it's not going to happen for them. They're out of it. Another wide by Rana. Rana needs to take care of his line. Now it's time to go to Hina. Thank you so much. So, well, this time I have with me Mr. Haris Ali Mithani, who is team owner, Lyari Legends. Thank you, sir, for joining us. Thank you. अभी बात कर रहे थे आप, कुछ चंद ही बॉल्स हैं, कितनी उम्मीद बाकी है आज के मैच को जीतने के लिए, पॉजिटिव हैं आज के मैच को लेकर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार इस सीज़न 3 में लियारी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि इस वक्त तक इस इवेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो लियारी के बैट्समैन रहे हैं, 177, और ऑलमोस्ट हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा सीज़न में मैं समझता हूं कि लियारी की परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें बड़ी क्लोज रही है और आई एम हैप्पी वेरी मच।
या डेफिनेटली वेल आपको कंग्रेचुलेशंस कहेंगे, Thank you. सेमीफाइनलिस्ट बन गए आपकी टीम जो है, बट अब सेमीफाइनल की तैयारी कैसी है आपकी टीम की और किन स्ट्रेंथ के साथ अपोजिशन का सामना करेगी आपकी देखिए टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है और टीम स्पिरिट के साथ खेल रही है। हो सकता है हम सिर्फ एक आध चेंज करें टीम में, अदरवाइज यही टीम पूरी सेमीफाइनल में कल परफॉर्म करेगी और आई होप कि इंशाल्लाह कल भी बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और मैं इस मौके पे मैं चाहूँगा कि KTPL कराची टेबल क्रिकेट लीग की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये सीज़न 3 किया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। और उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए सारी टीमों के बहुत अच्छे यहाँ पर देखने को मिले मुकाबले, और इस तरह के टैलेंट हंट इवेंट है ये। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद पूरे पाकिस्तान से, जैसे हमारे पास एक बैट्समैन है जो कि अटक से आए हुए थे और निज़ार लेफ्टी, और उन्होंने जो परफॉर्म किया है कि बहुत सारे यहाँ के हमारे बॉलर्स थे जिनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें आउट करें। तो देखिए इस तरह के प्लेयर्स इसी तरह के इवेंट्स में ऊपर आते हैं और हमारी नेशनल टीम तक जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं बल्कि KTPL और KTPL की फेडरेशन जो है वो मैं समझता हूँ कि नेशन को भी सर्व कर रही है। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इसी अंदाज से होने चाहिए जैसे कि कराची में हो रहे हैं, और वाकई ये है इवेंट कराची का। Yes, definitely. Well, thank you so much. And on this note, Thank you. we'll go back to the comm box. Thank you, Hina. Very confident and happy looking, the owner of Lyari Legends. And why not? Because the team has almost done it. It's only a matter of time now, and they will be through to the semi-finals, which is always a very good news. Outside edge, one carry to that fielder at short slip or whatever you call it, short third. 76 for 1 after 5. The owner of Lyari Legend was absolutely pleased, and he mentioned that they might make 1 or 2 changes because overall the combination is quite perfect, especially after the inclusion of Hassan Penda. He is the one who will lead their team in the semi-final, especially the way he batted. He got a real practice today. He really hammered in different corners of the ground, so it was so good to watch him in full flow. His helicopter shots, his pull shot, his attack on over-pitch deliveries, he was quite brilliant. Yeah, one of the most destructive batters in Pakistan when it comes to tape ball. Salam is the new bowler who starts off with a good delivery, targeting the body of the batter. Usman Jan doesn't want to take a single, wants to be there at the striking end. There you see, with the owners of Lyari Legends and Karachi Knights is Nasim Rajput, our media director of UBL Amin KTPL Season 3. Way off target. Salinga getting it wrong. When Salingas get wrong, mostly they get it horribly wrong. This is what I have seen. Plenty of extras considered by Lyari Legends. They missed the target. They know they are comfortably placed. He's bowling with shorter run-up. This time it's Usman Jan who's got hold of that, and it's gone all the way. First 6 of this innings for Usman Jan, and he's got the connection all right on that occasion. Short outside the off stump, picked it up from way outside the off stump, smashed it well, and just managed to clear the boundary. Just a yard ahead. It's only a matter of time now. 4 deliveries left. And that's even bigger. That's a good hit. Usman Jan with his second 6. He's having fun out there. Usman Jan, length ball, beautifully struck, heaved away to the onside. That will make him feel better. Lovely shot. Now it's a few moments are left to conclude this match. He's been in very good form, Usman Jan, ever since he's joined the team. Goes again. This time it's a Skyer.
And eventually the ball came down, but in no man's land. Couple of runs added to the total. Nobody went for it. Kahir had a chance, and that was the opportunity to do some sort of catching practice for semi-final. These drop catches will really cost them in the elimination round, and that will be a knockout. So you have to be super alert in these kind of catches. Yeah, you're right. It's end of the group stage, and you got to do some practice for the eliminators coming up. This time pulled away, not off the middle of the bat, so only one run will be added. Well, in semi-final, we will also witness some individual contest between batsmen and particular bowler. For example, Zaid Ahmed will be up against Hassan Penda, or Mimran will be up against any other bowler. So there will be some individual brilliance as well from the batsman or bowler. Some personal contest and some overall team contest as well. So I personally believe everyone will step up. Last ball. It won't be a lost ball because it's down the leg side. Well, Farooq, one thing is for sure, with the addition of the players who were in Dubai have joined the teams, it's been very competitive sort of event just towards the eliminate stages, you know. Oh, what a way to finish things off. Salam gets his man. It's the timber. It's a wicket of the last ball. Harris, who was castled. Wonderful ball to finish the match. So victory goes to Lyari Legends, a comprehensive one. They won it by 81 runs. Harris was batting quite well, missed it all together. Johar on leg stump. Celebration has begun, and their spot in the semi-final has been cemented. Top-class all-round show from Lyari Legends. They played 2 games on a trot. They lost one, but this one, they won it quite comprehensively. Congratulations to them. Yeah, they've outsmarted the opposition in every department, almost every department. I say almost every department because they were just neck to neck slightly in the fielding department, but prior to that, they have really outsmarted the opposition and have put up a phenomenal show. So I was talking about the addition of the players. It's going to be a very competitive semi-finals we are going to witness. Group stages have been finished today, and from tomorrow and day after tomorrow, we will have the knockouts, semi-finals and finals, and of course, the match of the women. That is also going to be an entertaining stuff. So KTPL is just coming to a close, and coming to a close with a lot of action. This is what it was expected by the spectators who love tape ball, who love KTPL. And KTPL has definitely provided some entertainment. And have a look at some of the highlights of the 4th innings. Karachi Knights' batting effort, which wasn't good enough to get them past that humongous target which was set. It was a mammoth target which was set of 176 runs by Lyari Legends. They were not going to get that because they needed almost a boundary every delivery if they had to chase down that target. And it wasn't the case for them. Good catching in between. There was a chip in the air and it fell in no man's land. Usman Jan hit a couple of sixes towards the end of the innings. Good striking by him. He's been in good form. Has hit a half century as well. And this was the last delivery when Salam knocked over Harris. So that's the batting effort of Karachi Knights. Wasn't good enough. 3 of the batters getting double figures. And Wasim just didn't get to the pitch. 95 they managed in 6 overs. The bowling has been generally good. Wicketless were the top bowlers, Ahmed and Sohail. Rana and Salam, a wicket apiece for them. And that's the mini card for today's last match. Lyari Legends managing 112 runs. In reply, Karachi Knights getting 77. Lyari Legends in their second innings, 141, 85, the best innings of the tournament so far by Hassan. And Karachi Knights were left for 81 runs. 81 runs defeat, big defeat for them. So it's going to be a short break. When we will come back, you can watch the presentation ceremony.
अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 28 एंड लास्ट राउंड मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, वो तमाम 84 मुल्क के जहां हमारी नशरियात जारी है, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। और जितने लोग भी इतनी रात को इस सर्दी में यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता है। आज इस आखिरी राउंड मैच के बाद सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 की, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो नहीं सकती किसी भी लीग की कि आखिरी मैच तक चौथी टीम का फैसला नहीं हो सका था कि कौन सी चौथी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। तो यहाँ मुबारक हो लियारी लेजेंड्स को कि जिन्होंने आज 81 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी कराची नाइट्स को और सेमीफाइनल में जगह बना रही बेहतर रन रेट की सूरत में। वेरी वेल प्लेड। आखिरी क्रूशल मैच में लियारी लेजेंड्स का ज़बरदस्त गेम, लेकिन आपने सेकंड लास्ट मैच भी देखा होगा कि जहां पर आखिरी बॉल पर फैसला हुआ था और लियारी लेजेंड्स की टीम वो मैच हार गई थी। ओवरऑल तमाम टीम्स, तमाम जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर सेमीफाइनल लाइनअप के मुताबिक कल शाम को 6 बजे जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, वहाँ डिफेंडिंग चैंपियन DHA दबंग्स की टीम मलीर मलंग्स का सामना करेगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में क्लिफ्टन पॉपुलर सामना कर रही है लियारी लेजेंड्स का। वेरी वेल प्लेड ऑल द टीम्स, तमाम 8 टीमों को ये इस सीज़न बहुत मुबारक, और जो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं आपको बहुत बहुत मुबारक। क्लिफ्टन पॉपुलर जो सेकंड सेमीफाइनल खेलेगी, पॉपुलर ग्रुप की टीम है जो इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के बेवरेज पार्टनर भी हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर बदर एक्सपो सोल्यूशन मिस्टर जुल्करनैन नसीर, जो आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन भाई। उनके साथ बहुत काम किया जिन्होंने इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर एहतशाम बारी। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ लियारी लेजेंड्स मिस्टर हारिस अली मिठानी। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, आज तो बहुत खुश हैं हारिस भाई। एंड उनके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत, इनका भी डेब्यू था कराची नाइट, सिंध पुलिस के SSU डिपार्टमेंट की टीम है, लेकिन ज़बरदस्त खेली ये टीम भी, बहुत क्लोज मार्जिन से मैचेस हारी, लेकिन बहुत कुछ लर्न करके जा रहे होंगे इनके टीम ऑनर मिस्टर राजा मुख्तार अहमद। राजा भाई ज़बरदस्त आपकी टीम खेली और ज़बरदस्त जेस्चर सिंध पुलिस का। उनके साथ मिस्टर कामरान मोहम्मद यूनुस जो हमारे साथ हमेशा साथ साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ मिस्टर ताहिर मेमन फ्रॉम डेल्फा। थैंक यू वेरी मच ऑल द प्रेजेंटेशन पार्टी। सबसे पहले मैं आज की लूजिंग टीम के कैप्टन को मदऊ करूंगा हारिस अली खान। हारिस तशरीफ लाइएगा। हारिस ज़बरदस्त आपकी टीम खेली, इसमें कोई शुबा नहीं है, मैच में हार जीत होती है, क्लोज मार्जिन से जाके आप मैचेस हारे, लेकिन फिनिश की कमी दिखाई दी आपकी टीम में। जी बिल्कुल नसीम भाई, ऐसी है। पहले इनिंग अच्छा खेल रहे थे लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हमारे सारे मैचेस के ये हुए हैं। लेकिन ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस है नेक्स्ट सीजन के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और कोशिश करेंगे अगली बार और स्ट्रॉन्ग आए, और जितनी गलतियां इस बार की हैं कोशिश करेंगे ना करें नेक्स्ट टाइम। तो फिर हम अगली दफ़ा कराची नाइट्स को देख रहे हैं कि वो आ रही है डिफरेंट अंदाज से। इंशाल्लाह पहले से स्ट्रॉन्ग आएंगे। चलें, विश यू वेरी गुड लक हारिस अली खान, वेरी वेल प्लेड कराची नाइट्स। और आज की विनिंग टीम के कप्तान अशरफ पठान। अशरफ, ज़बरदस्त खेली आपकी टीम, बहुत मुबारक हो, आज सेमीफाइनल में पहुंची। बैक टू बैक मैचेस थे आज आपके, आखिरी दोनों राउंड मैचेस थे। पहला मैच आप लास्ट बॉल पे जाके हारे, जिसका प्रेशर ज़रूर डेवलप हुआ होगा आखिरी मैच में। बिल्कुल, जब मैच हारता है बंदा तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हमें पता था कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन मोराल ऊपर था कि हम इस टीम को जो आखिरी मैच था हमारा, इसको लीड के साथ मार के क्वालिफाई करेंगे, और वो हमने किया। कितना कॉन्फिडेंस है? आज आपने बड़ा चैलेंजिंग टारगेट दिया हुआ था, 170 प्लस रन्स का, 141 भी आपने स्कोर किया हसन पैंदा के आने के बाद और अहमद कुल्फी के आने के बाद। बड़ी एक चमक दिखाई दी आपकी टीम में, ये दोनों खिलाड़ी आप बहुत मिस कर रहे थे।
जी जी, ये दोनों शारजा का टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे, तो राब्ते में था मैं, और मुझे उम्मीद थी कि ये आएंगे तो टीम और बैलेंस होगी। और आज हसन पेंडा आया और उसने करके दिखाया, और साथ में अहमद कुल्फी ने बड़ी ज़बरदस्त स्पेल की जिसका हमें फ़ायदा हुआ। और इंशाल्लाह आगे भी मैं देख रहा हूँ कि टीम एफर्ट करेगी और मतलब हम फाइनल में जाने की कोशिश करेंगे। कल क्लिफ्टन पॉपुलर के साथ आपका मुकाबला है, फाद मियां चुन्नू, असद शाह। पता है आज भी मैच उन्हीं से था और आपने देखा कि हमने अच्छी फाइट की, तो कल भी हम तैयार हैं इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, विश यू अ वेरी गुड लक अशरफ पठान। बहुत सारी तालियां लियारी लेजेंड्स के कैप्टन अशरफ पठान के लिए कि आज इनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई। इस मैच की मैं बात कर लेता हूं तो कई जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी देखने को मिली। कारी हमीदुल्लाह 47 on just 12 balls with 6 sixes and 2 fours. Ubaid Lefty 37 on 20 balls with 4 fours, 4 sixes and 1 four. Nizar Ali 34 on 11 balls with 4 6 and 1 4. Shakir Rahman and Imran Qazi 2 wickets each. लेकिन वो बैटर के जो आया और छा गया, उनका बैट ऐसा लगा कि पैंदा बन गया और गेंद बाउंड्री के बाहर गई, कोई और नहीं, हसन पैंदा। हसन, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपकी बैटिंग को सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। खुद आपने कितना एंजॉय किया? बहुत करीब पहुंच गए थे बड़े स्कोर के। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने कोशिश मेरी यही थी कि मेरी इनिंग की वजह से मेरी टीम क्वालिफाई करे और मेरी टीम आगे जीते और आगे सेमीफाइनल में जाए। कैसा रही है टीम को आपने आके ज्वाइन किया? टीम तगड़ी लग रही है, कल सेमीफाइनल होने जा रहा है क्लिफ्टन पॉपुलर से। इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत तगड़ी है और हम इंशाल्लाह चैंपियन बनेंगे। बहुत तगड़ी है और चैंपियन बनेंगे। हसन, बिल्कुल सोच लिया। हसन, कैसा स्टैंडर्ड लगा आप यहाँ आके खेले यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में? अभी कोई बता रहा था कि दुनिया भर में इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं होता, क्या कहते हैं? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, हमें पसंद आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। अभी आप शारजा से खेल के आ रहे हैं, इतने ऐसी ज़बरदस्त अरेंजमेंट थे? जी नहीं, ये अच्छा ही अरेंजमेंट, इन्होंने अच्छा अरेंजमेंट किया उनसे। बिल्कुल ठीक है। हसन पैंदा, विश यू अ वेरी गुड लक। जबरदस्त सेमीफाइनल के जाएं और अच्छा परफॉर्म करें। आइए जुल्करनैन हैदर साहब, आप आगे आएंगे और ट्रॉफी देंगे मैन ऑफ द मैच की हसन पैंदा को। उसके बाद मिस्टर एहतशाम बारी, आप आगे आएंगे और विनिंग चेक देंगे। हसन पैंदा आप रुकिएगा, अभी बहुत सारे इनामात हैं। आप तो शारजा में खेल रहे थे ना, यहाँ आपको नहीं पता बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने आपके लोगों के लिए कितने इनामात रखे हुए। वेल डन। इसके बाद आपके लिए एक और भी इनाम है, गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल। मैं यहाँ पर कामरान यूनुस साहब आप आगे आइएगा और उनके साथ ताहिर मेमन साहब आप भी आगे आइएगा। ये हमारा एक इनाम है जो आप दोनों देंगे आज के मैन ऑफ द मैच हसन पैंदा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के दोनों टीमों के टीम ऑनर्स, मिस्टर राजा मुख्तियार अहमद साहब आप आगे आएंगे, मिस्टर हारिस अली मिठानी साहब आप आगे आएंगे और आप आइए, चलें आज आप देंगी। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? आप भी आए दोनों, आज आप हमारे बच्चे देंगे जनाब, ये फ्यूचर इन्हीं का ही है, KTPL इन्हीं के लिए है। और देने कौन आ रहा है जरा बताना, क्या नाम है? पता है आपको उनका नाम? जो ये अवार्ड देने आते हैं, बैट का अवार्ड कौन देने आता है? डॉन। डॉन, जोर से बोले। डॉन। डॉन। तो फिर आ जाए डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, और ये बैट का अवार्ड देने आते हैं और ये अवार्ड जाएगा अम्मार और अल्तमश। अम्मार और अल्तमश आ जाए जनाब दोनों जल्दी से आ जाए, आगे जाए, आप दोनों देंगे बेटा, आगे जाए, आगे गिफ्ट आप दोनों देंगे। आज जाइए अल्तमश, उधर जाए, बैट लें, आपका बैट मिस हो जाएगा, हाथ लगाएं बैट को जल्दी से, जब ही मिलेगा आपको। यस, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेल डन। एंड थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन साहब, एहतशाम बारी साहब, हारिस मिठानी साहब, राजा भाई आपका बहुत, राजा साईं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू कामरान भाई, थैंक यू
ताहिर साहब, आपका सब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज आपने देखा डबल हेडर नहीं था बल्कि ट्रिपल हेडर था। आज 3 मैचेस खेले गए और यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे चाहता है इजाजत। कल आपसे लाजमी मुलाकात हो रही है सेमीफाइनल में शाम को 6 बजे, जहाँ पहला मुकाबला होगा DHA दबंग डिफेंडिंग चैंपियन वर्सेस मलीर मलंग्स। मिल रहे हैं 6 बजे। टिल देन अल्लाह निगहबान।